This is in Karnataka's Vijaypura district. The BJP workers said that they put up these posters as a retaliatory move over Congress burning Savarkar hoardings in Hubali. Earlier, a few miscreants also pasted photographs of Savarkar on the walls of the Congress office, which were then removed by the police after local leaders alerted them and registered a complaint. The situation is under control. Security, though, has been beefed up as a precautionary measure. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. 60 ವರ್ಷ ಆಳದಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಸುಟ್ಟವರು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರುಗಳು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರು ಸುಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನು ಅಂಟಿಸಿದ್ದೇನು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಲುವು, ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಚಾರದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಯ್ತು, ನಾವು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಓದಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು 5 ಪೇಜಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೊಂದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಲಂಜಲಿ ಹಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಒಯ್ದು ಅಂಟಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು 4 ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ. The Savarkar versus Tipu Sultan poster row has spread to other districts also in Karnataka. Right-wing groups have launched a Savarkar banner campaign, while Karnataka Chief Minister Bommai has called for peace. After Shimoga, Udupi and Tumkuru, the Savarkar versus Tipu Sultan storm is now spreading to other districts of Karnataka. Sri Ram Sene has now launched a new campaign aiming to place Savarkar idol or a photograph along with Ganesha idol during the upcoming Ganesha festival at 250 Ganesha Mantaps across Vijaypura district. ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕುರಿತು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಕುರಿತಂತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದೇವೆ. Chief Minister Bommai has appealed to everyone, including the opposition parties, to maintain peace and order in the state, advising against escalating tensions over Savarkar and Tipu Sultan, referring to Indira Gandhi's praise for Savarkar. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಸಂಗಗಳ ಇವರು ಮಣಿಶಂಕರಯ್ಯರು ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಪರ ವಿರೋಧ ಇದೆ. This comes after face-off over eggs being hurled at Siddaramaiah's convoy in Kodagu district on Thursday, prompting an angry reaction from the Congress leader. I'm a leader of the opposition. I'm a shadow chief minister. You police, you don't know how to give the protection to the leader of the opposition. ತಮಾಷೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು. ನಾನು 26ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ವಿರುದ್ಧ Congress and the BJP traded charges over the main accused Sampath, who hurled eggs at Siddaramaiah's vehicle. While Congress released an image of saffron-clad Sampath and claimed that he is a BJP worker, the Saffron Party has said he belongs to the Congress. Sampath has admitted to hurling eggs, claimed that he was upset over Siddaramaiah's remarks saying Hindus eat beef. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದನ ಮಾಂಸ ತಿಂತಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿ ಅವ್ರದ್ದು ನನಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು With Savarkar's row spreading, will rival political groups heed CM Bommai's advice not to precipitate the matter? With Priyanka Rudrappa, Bureau Report, India Today.
After the Savarkar poster row, the politics of polarization has clearly become the focus ahead of the festive season. Days after the state government gave permission to celebrate Ganesh Chaturthi in educational institutes, the issue has become a big flashpoint. Slamming the government's decision, SDPI has threatened to protest against the move, demanding permission to offer namaz and Christian prayers. SDPI State Chief Abdul Majid said the government cannot ignore other faiths. The Campus Front of India has also expressed their dissent against the alleged saffronization of education. Right-wing group Sri Ram Sena, meanwhile, has launched a campaign to place Savarkar's idol along with Lord Ganesh in the upcoming festival. छत्रपति शिवाजी महाराज की, महाराणा प्रताप की, गुरु गोविंद सिंह. With that, I'm slipping into a short break here on India Today. Coming up on the other side, we're focusing on what's happening in Pakistan, where Imran Khan has been booked for allegedly threatening Islamabad police and magistrate. Armed with facts, she takes the news by its horns. You think the future of these students are not hampered? Fierce, bold and direct, setting the tone for the biggest stories from every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. Did you, as an entrepreneur, did it feel bad for a bit to let go of your baby in a sense? I mean, you continue to be a shareholder, you continue to run the show, but the Tatas have controlling stake. I mean, what did you have to weigh before you took that big decision? So I think it wasn't that hard a decision, to be honest, because the fundamental aspiration, what we really wanted to create, was a healthcare company that is of that significance and scale that it actually makes a huge difference in the ecosystem. And when Tatas came along interested to be a partner in that journey, I felt there could not be a better partner. It's a brand that for the last 150 So this is the spirit of Taiwan. Life goes on. There is no fear as they enjoy a weekend out
on the streets. There is no threat, there is no fear among Taiwanese because they have been living under this threat for a very, very long time. Is there a fear that China may attack Taiwan? It'll be like Russia attacking Ukraine, not really like a full-on bombing, but more like sending troops there to invade. If China was trying to intimidate the people of Taiwan with its military drills and live fire exercises, clearly China has failed. Join me, Gaurav Sawant, as I report live and exclusive from Ground Zero, Taiwan, only on India Today. Former Pakistan Prime Minister Imran Khan has left his residence in a bid to avoid arrest in a terror case in which he's been booked. Imran's lawyers are also filing for anticipatory bail. Large crowds hit the streets in Faisalabad after leaders from Imran's PTI asked party workers to protest against the possible arrest of Imran. He was booked for threatening the additional sessions judge and 2 police officials. They've registered an FIR against him under the Anti-Terror Act. Imran Khan was booked for targeting state institutions at a public rally. Despite being ousted from power earlier this year, the former Pakistan Prime Minister has been trying to rally support with these massive public rallies. We're cutting across to breaking news that's coming in from Pakistan, where a Hindu man faces fake blasphemy charges. A bloodthirsty mob targeted a Hindu man. Fake blasphemy case has been slapped after a personal feud. A large radical mob attacked the Pakistan Hyderabad jail. This is an incident that's been reported from Pakistan. गलत बातें बोली जाएंगी तो क्या हमको खामोशी से पड़ी है। अब यहाँ पर देखें कितना हजूम इकट्ठा है, तमाम लोगों के जो है दिल आजारियाँ हुई हैं इनकी। जो दिल आजारी हुई है इसके ऊपर जो है कि भाड़ियों को सबको जितने यहाँ पर रह रहे हैं सदर के अंदर कब्जा कर रहे हैं या सदर के अंदर आके अपनी जगह खरीद रहे हैं और यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं और यहाँ पर लोगों के साथ कब्जा कर रहे हैं सारी जगहों पर। मुश्किल आ गए अब इन्होंने जो है ये हरकत की है और करके ये यहाँ के पूरे इलाके को जो है इन्होंने टेंशन में डाला हुआ है। अब ये कि इनके से या तो इनसे बदला लिया जाए, इनको मारा कूटा जाए, जहाँ भाड़ियाँ मिल जाए वहाँ उसको कूटो, ताकि ये कि पूरी दुनिया के अंदर इनको पता चले कि इनके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है। An incident that's been reported now in Pakistan of a Hindu man facing fake blasphemy charges. What we're hearing is that this particular case was in fact lodged against this man. He works as a sweeper and a mob in fact came to kill him. They didn't succeed. He's been accused of blasphemy, after which in fact there was chaos that broke out, as you see on the screens there. Let's take this across to Vingas, a Pakistan journalist who's joining us on this broadcast. Vingas, just break down for us the details of this case. What led to those violent incidents and images that have come to light from Pakistan's Hyderabad? Thank you for being on the show. Actually, there are two versions of the story. One story is this: that Ashok Kumar family, they have burned the holy pages of Quran, and then some gurus they accuse the family of blasphemy. But in other stories, say that there was a Muslim girl lady who burned the sacred pages of Holy Quran. So, and now without doing the investigation into the case, suddenly police filed case against Ashok Kumar because
the Tehreek-e-Labbaik was there, and they were holding some kind of pressure and disturbing the situation. That is the reason police got under pressure and they registered the case against Ashok Kumar. Now, the situation is very disturbed, not only in the Hyderabad. Let me add more information. That in Rohri case, yesterday, some group, they opened the fire at Monday because there was another issue regarding the rainwater. So Hindus in Sindh, they are under fear, and they have many threats, and the situation is not under control in Hyderabad. So unfortunately, the way many politicians, they speak on other cases, but in this case, many politicians, and including the same government that is in the Sindh, they are very silent, and this is the situation in Hyderabad. And I spoke to many Hindus, and they avoided commenting on the situation because they were afraid that maybe if we speak, even they speak for the harmony among the Muslims and the Hindus, maybe they will get accused of all right. And for me, as many people here say that why police suddenly registered the case against Ashok Kumar. All right, Vingas, thank you very much for joining us here on India Today. So as we track what's happening there in Pakistan's Hyderabad, the atrocities against minorities continues. In yet another shocking case of forced conversion, BJP MP Manjinder Singh Sirsa tweeted out claiming a Sikh girl has been abducted and forcibly married. Dina Kaur, a teacher by profession, was kidnapped in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa province. It was after her kidnapping that her family was told that her nikah had been forcibly held. The local Pakistan police has refused to register a case and threatened the Sikh community to stay silent. Sirsa extended his support to the protesting Sikh community and urged the central government also to take note. This is another case of atrocity in a span of just 2 days. A 13-year-old Christian girl from Rawalpindi on Sunday was abducted and forcibly converted to Islam. The minor was married off to a 40-year-old Muslim man who abducted her. मैं पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी को अपील करता हूँ कि निकल जाएं, अपने अपने शहरों में, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें। हम उस वक्त तक एहतजाज में रहेंगे जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं करवाई जाती। हम ये टार्चर मंजूर नहीं करेंगे, हम इंतजामिया का ये जुल्म जबर मंजूर नहीं करेंगे। इस बेटी को जबरन अगवा किया गया, एक सिख बच्ची का धर्म बदला गया, उसका नाम बदला गया और उसका जबरन निकाह पढ़ दिया गया। ये पाप बार बार पाकिस्तान में हो रहा है। आज उसके पिता गुरबचन सिंह बाकी लोगों को साथ लेकर सड़कों पे उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारी बेटी हमें वापस दो, हमारी बेटी को अगवा किया है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैं भारत के विदेश मंत्रालय से आग्रह करता हूं, विदेश मंत्री जी से, कृपया इस विषय को जल्दी पाकिस्तान के साथ टेकअप करें ताकि उस बच्ची की जान और आबरू बचाई जा सके। A noted group representing secular Muslims has told Muslim organizations to rethink their position on blasphemy, questioning the silence on the Rushdie attack. The Indian Muslims for Secular Democracy statement, endorsed by 60 eminent citizens, including social activist Medha Patkar, psephologist and politician Yogendra Yadav, and Magsaysay Award winner Sandeep Pandey. Underlining that the attack on Rushdie was designed to create a regime of fear, the IMSD said that none of the prominent Indian Muslim organizations have condemned the barbaric attack on a prominent writer. Mustafa Sheikh is joining us with more details on this. Mustafa, clearly now questions being asked about the selective silence in these kind of cases. Well, yes, the Indian Muslims for Secular Democracy has come out with this statement. They have clearly said that the silence on these issues emboldens the Islamophobes to paint the religion as a creed of violence and terror. Hence, they are urging the eminent Muslim scholars and organizations in India to condemn what has happened to Rushdie and also the issues which are prevailing regards to the writer Taslima Nasreen.
So this group has always argued that the slanderous texts which have been published for Islam should not be taken so seriously, and people should not be, issued such fatwas which, threatens their lives. In the case of Rushdie, something similar has happened. Hence, this group has said that the Indian Muslim organization should condemn the attack which has happened on Rushdie, so that it does not paint Islam in a bad way across the world, and especially in India. Okay, so the details emerging right now of the statement that's been made by this Muslim group, the IMSD, asking Muslim organizations to rethink their position on blasphemy, particularly in context of what's happened to Salman Rushdie. Thanks, Mustafa, for the moment. And that's all we have time for on this broadcast. Thanks very much for tuning in. We'll continue getting you all the latest news and updates. Today is, the launch to the world of a fully operational urban airport. The first time ever in the world that there's an operational piece of infrastructure of this kind. I think you'll see some operations this decade, but I think the 2030s will really be the decade of advanced air mobility, and you'll really start to see this be more ubiquitous from that point on. Amid the escalating tensions between China and Taiwan, China is leaving no stones unturned to show off its military powers, this time with its mighty dragon or Chengdu J-20. It is a twin-jet all-weather stealth that was developed by China's Chengdu Aerospace. J-20 is designed as an air superiority fighter with precision strike capability. More than 50 of these jets are in service since it was developed in 2011. J-20 can carry one pilot as its crew. It has a length of 21.2 meters and wingspan is 13.01 meters. Its height is 4.69 meters, wing area measures 73 per meter square and its weight is 17,000 kilograms. The twin jet can catch the speed of 2 Mach. Its range is 5,500 kilometers and it can combat up to 2,000 kilometers. China is proud of its Chengdu J-20. This aircraft will be showcased in China's new film Born to Fly, made for People Liberation Army. The movie will showcase the modernized aircraft of the PLA. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. So this is the spirit of Taiwan. Life goes on. There is no fear as they enjoy a weekend out on the streets. There is no threat, there is no fear among Taiwanese because they have been living under this threat for a very, very long time.
Is there a fear that China may attack Taiwan? It'll be like Russia attacking Ukraine, not really like a full-on bombing, but more like sending troops there to invade. If China was trying to intimidate the people of Taiwan with its military drills and live fire exercises, clearly China has failed. Join me, Gaurav Sawant, as I report live and exclusive from Ground Zero, Taiwan, only on India Today. You are watching India Today. You're watching India Today. I'm Nabila Jamal. First, the headlines. After the CBI ED heat on Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia, Kejriwal and Sisodia at Modi's turf today, a massive political slugfest between the BJP and the Aam Aadmi Party. BJP drags Telangana Chief Minister into the ragging Delhi liquor policy controversy, claims that KCR's daughter played a big role. TRS cries foul, says ED used against them for political vendetta. And a fresh campus showdown in Karnataka. SDPI opposes Ganesh Utsav in schools, referring to hijab ban in schools and colleges. Plans a mega stir. More Nataka in Karnataka. Infighting in the AAP-BJP peaks. EPS plea against single judge order to be heard by a Madras High Court. OPS also files a caveat. A case to be heard today. An ousted Pakistan Prime Minister Imran Khan booked for allegedly threatening Islamabad police and magistrate. Anti-Terrorism Act slapped against Imran. Massive protests erupt in support of Imran. Sports Ministry tells the Supreme Court that panel of administrators can't run football body and polls needed as per FIFA norms. Traffic snarls return to Delhi as farmers hold a mega stir against rising unemployment. Security was ramped up at the Ghazipur, Tikri and Singhu borders of Delhi. Farmers now arriving at the Jantar Mantar in Delhi following a call by some farmers' unions to protest against unemployment. Farmers' demands include minimum support price legal guarantee. In fact, they've asked to withdraw the proposed electricity law, sacking of the minister as well of State of Home, Ajay Mishra, after his son allegedly attacked some of the farmers in Lakhimpur Kheri, asking for those victims to get justice. Farmers now back at the borders protesting against multiple issues. In fact, the primary issue here asking for unemployment to end, to bring out policies to help farmers to end their dry spell, and moreover asking for minimum support price, a guarantee on the same. Remember, the new farm laws had to be revoked based on the same issues. And now the farmers back at the borders asking for the minimum support price to be guaranteed to them. And more importantly, for the sacking of Minister Ajay Mishra, whose son has allegedly attacked farmers in Lakhimpur Kheri, asking for justice for those farmers. Shreya Chatterjee joining us from the Singhu border. Shreya, over to you. Give us a sense of the protests that are taking place along the border areas and what exactly are those demands made by the farmers there? But Nabila, the major demands by the farmers this time is MSP and also, as you were rightly pointing out, about the sacking of Ajay Mishra trainee. Now, I'll give a brief understanding of what's happening here at Singhu. You can see the kind of security deployment that's been made on the part of Delhi police. There are riot control vehicles that's been stationed and unprecedented security cover here at Singhu. We know what happened at Singhu a year back, and probably that's the reason this is the kind of security Delhi police has arranged. Now, here is the traffic snarl that you can see, because the Delhi police is also carrying out a vehicle check. They are
checking some of the vehicles here at Singhu border is why we see the kind of traffic snarl. Now, I'll also try and rope in the farmers who are on their foot and they are walking right now. They say that their vehicles are on their way. They are stuck in traffic jam. कितने दूर होंगे आपकी जो गाड़ी आ रही है दिल्ली जाने के लिए? अभी जो है 50 मीटर के लगभग है, सभी यहाँ नजदीक लग रही है। कितने लगभग लोग हैं? लोग तो कम से कम 2000 आदमी जी। 2000 आदमी। सब कहाँ से आए? हम जी पानीपत से हैं, अम्बाड़ा से हैं, करनाल से हैं और जो है सोनीपत से हैं, रोहतक से हैं, मतलब पूरे हरियाणा से तकरीबन लोग हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बोला है कि उन्होंने ये प्रोटेस्ट कॉल नहीं दिया है, सिर्फ एक यूनियन से आया है। तो आपका कौन सा यूनियन है? कवाड़ साहब सिंह जी, नौजवान किसान यूनियन कवाड़ साहब जी। So as you know, Nabila, SKM is already distanced from this protest. This is the BKU led by Jagjit Singh Dhaliwal, who's protesting and moving towards Jantar Mantar. This one farmer is on his foot and he says that at least 2,000 people on vehicle are moving 50 meters away. The vehicles are stuck right now because of obviously the traffic snarl that's arisen due to Delhi police checking the vehicles as they move in from the Singhu to the territory of Delhi. You know, let me cut across to Arvind Ojha as well. He's also at one of the border. In fact, he's at Jantar Mantar right now as farmers there, Gherao, Jantar Mantar. They're asking for the same, Arvind Ojha, unemployment, farmers' minimum support price, and more importantly, the sacking of Minister Ajay Mishra Trainee, whose son has been accused of attacking farmers, killing those farmers, some of them in Lakhimpur Kheri. अब बोलिए कि उनका डिमांड्स क्या है वहाँ पर? जी देखिए नबीला, सबसे पहले मैं बताऊं कि अभी जो किसान है वो यहाँ पर आना शुरू हो गए और ये जो दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाई हुई थी उसको जो किसान यहाँ पर आ रहे थे उन्होंने इस बैरिकेटिंग को गिरा दिया और ये जो अब जगह है यहाँ से आने ये शुरू हो गए हैं। ये बैरिकेटिंग चारों तरफ से जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस ने लगाई हुई थी, जिसको जो किसान है उन्होंने यहाँ पर गिरा दिया और उसके बाद यहाँ से अब आने शुरू हो गए। धीरे धीरे करके जो प्रोटेस्टर है वो बड़ी संख्या में, ये देखिए अलग अलग स्टेट से वो आ रहे हैं यहाँ पर। दिल्ली पुलिस ने, हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने कोई परमिशन नहीं दी है, 144 इम्पोज्ड है पूरे नई दिल्ली इलाके में, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें यहाँ पर जंतर मंतर पर तो जो प्रोटेस्टर है, जो किसान प्रोटेस्टर है वो धीरे धीरे यहाँ पर आने शुरू हो गए। लेकिन कुछ देर पहले यहाँ पर एक तरीके से रक्षक का माहौल था, क्योंकि ये देखिए आप चारों तरफ से ये बैरिकेटिंग की गई है और इस बैरिकेटिंग को तोड़कर जो किसान है वो यहाँ पर पहुंचे और अगर भी अभी भी देखिए भारी तादाद में जो किसान प्रोटेस्टर है उनका आना यहाँ पर जारी है। जरा ये तस्वीर यहाँ की मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक एक तरफ से हर बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा टाइट की गई है, बावजूद इसके जो किसान प्रोटेस्टर है अगर आप देखिए तो धीरे धीरे करके वो जंतर मंतर की तरफ शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में जो दिल्ली पुलिस ने एस्टिमेट किया था 4000 से 5000 के लगभग जो किसान प्रोटेस्टर हैं वो यहाँ पर जमा होंगे और इन सब के बीच जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी थी, परमिशन नहीं दी गई थी। 144 इम्पोज्ड है दिल्ली पुलिस का ये कहना और इन सब के बीच लगातार यहाँ पर जो प्रोटेस्टर है वो पहुंच रहे हैं। बैरिकेटिंग को तोड़ भी दिया गया था क्योंकि आने के लिए जंतर मंतर पर इस प्रोटेस्ट साइट पर स्पेस काफी कम था, इसलिए बैरिकेटिंग को तोड़कर उसके बाद किसान यहाँ पर पहुंचे। हालांकि अभी तक पूरी यहाँ पर शांति जो है वो बनी हुई है। नबीला, Arvind, thank you very much for joining us. But we see the visuals there. Farmers back at the borders asking for some of their demands to be met. Let me quickly cut across to Sushant Mehra, who's given us an insight along the Ghazipur border as farmers protest. दिल्ली में आज किसानों की महापंचायत है और ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से तमाम किसान जो कि दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहे थे उनको इजाजत जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है और ऐसे में सुबह के वक्त दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जाम की लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही हैं। इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि गाजीपुर वो बॉर्डर है जहां से लोग दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर जाम की लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है। आप दूर दूर तक अगर नजर डालेंगे तो कई किलोमीटर तक इसी तरीके की स्थिति जो है वो फिलहाल सुबह के वक्त जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। जितने भी किसान यहाँ से जंतर मंतर की तरफ कूच करने जा रहे थे फिलहाल उनके ट्रैक्टर ट्रॉलीज को जो है वो यहाँ पर फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से रोका गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को दिल्ली की तरफ जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। चप्पे चप्पे पर बैरिकेडिंग जो है वो की गई है
आप देख सकते हैं कि काफी तादाद में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। एक एक गाड़ी की बाकायदा चेकिंग की जा रही है। उसके बाद उनको दिल्ली सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल दी जा रही है। किसान आज जंतर मंतर पर महापंचायत की करने जा रहे थे, जिसको फिलहाल पुलिस ने इजाजत नहीं दी गई है। नई दिल्ली इलाके में धारा 144 जो है वो लगाई गई है और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि किस तरीके से ये वो रास्ता है जो मेरठ और इसके अलावा हापुड़ इन तमाम इस इलाके से जो लोग हैं वो दिल्ली की तरफ आते थे। किसान भी यहाँ से आना चाह रहे थे। इसी तरीके की स्थिति दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जो है वो सुबह के वक्त दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन राजा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। Here's some big news coming in on the CBI raids on Manish Sisodia, Delhi's Deputy Chief Minister. We're looking at the Aam Aadmi Party government in Delhi in a political slugfest with the BJP over corruption charges and, of course, the agencies investigating this matter. Union Minister Anurag Thakur has jumped into this controversy here. He says the corruption kingpin has been silent on real issues, indicating Kejriwal and Manish Sisodia have been speaking of everything else except for the excise policy corruption allegations which the CBI is probing into. Anurag Thakur says Kejriwal has given 24 hours to respond. He was in fact given 24 hours to respond, but so far the corruption kingpin has not responded on these allegations. BJP says Kejriwal's silence proves that he's neck deep in corruption. Arvind Kejriwal model decoded. You have all the power to make money through corruption, spend hundreds of crore rupees on your publicity with no accountability, and when you get caught, you have no accountability but you fix liability on someone else. अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे? मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिली, मोहल्ला ठेका में घर घर दारू पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। Cutting across to Kumar Kunal joining us live. Kumar, at this point, we're looking at Anurag Thakur of the BJP saying Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister, was given 24 hours to respond to those corruption allegations with regards to excise policy, which the CBI is probing into. But so far, he's remained silent, speaks of everything else, ignores the real subject here. The CBI probing corruption allegations, which Manish Sisodia has been accused as number one. Exactly, Nabila. And for last 3 days, these allegations and counter allegations are flying everywhere. 1 hour, AAP does a PC press conference, and their senior leaders come and they put allegations against BJP. And the next hour, BJP leaders come and they put allegations. And such a scenario is existing for last 3 days since Manish Sisodia's residence is being raided by CBI, and they have made him accused number one, as you mentioned. So now today, Arvind Kejriwal is there in Gujarat, which is considered as the citadel of Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah. He's going to target BJP from their own turf at Gujarat today, and hence this is a kind of counter narrative, a counter aggression from BJP. None other than the Union Minister Anurag Thakur is attacking Arvind Kejriwal, and he gave him 24 hours time to respond about the corruption allegations which were put against Manish Sisodia. So now they are telling BJP is coming forward, and they are telling that what about the corruption charges? Why every time Aam Aadmi Party is defending Manish Sisodia just by putting their education model? There is lots to say about that. Absolutely. So Kejriwal's silence, of course, has raised a lot of concerns. Of course, this is enough for the BJP to target the Aam Aadmi Party government, saying that Kejriwal himself is a corrupt man but preaches to be absolutely clean.
Now, the CBI heat on Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia is not dying down. ED has now stepped in, is set to probe foreign remittances by event management companies linked to the excise policy. The CBI has also shared some documents to the Enforcement Directorate in connection with this case. A lookout notice has been issued against 8 out of 9 people named in the FIR. The BJP has claimed that accused are associates of Delhi Deputy Chief Minister. BJP has sharpened its attack on the Aam Aadmi Party government. The AAP has alleged that these charges are absolutely fabricated, false, and the numbers floated by the BJP remains unsubstantiated by the CBI. Meanwhile, Kejriwal as well as Sisodia will be in Modi's turf today in Gujarat as the Aam Aadmi Party tries to capture poll ground in the election poll-bound state. मैं भी आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ 2 दिन के लिए गुजरात जा रहा हूं। 2 दिन गुजरात में अलग-अलग जगहों पर रहेंगे और वहां भी लोगों से यही अपील करेंगे कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता के लिए शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर पाई, रोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाई। वहां पे महंगाई से लड़ने में लोगों की कमर टूट गई है, उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दें गुजरात के लोग, तो 5 साल में वो करके दिखाएंगे जो गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन में जितना अच्छा काम नहीं देखा होगा। इसके लिए हम आज गुजरात जा रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहा हूं और जिस तरह से दिल्ली में पिछले 7-8 साल में काम हुए हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे काम किए अरविंद सिसोदिया ने भाजपा के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उनको संदेश आया है बीजेपी की तरफ से कि आम आदमी पार्टी तोड़कर शामिल हो जाइए हमारे साथ और ईडी और सीबीआई के सारे केस बंद हो जाएंगे। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा। सर, सुबह सुबह एक आरोप लगा दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तोड़ करके बीजेपी में आ जाइए, सारे केस बंद। अब ये मनीष सिसोदिया जी सुबह सुबह क्या भांग खाकर उठते हैं, क्या सुबह सुबह अपनी 1+1 की जो स्कीम है शराब की, क्या उसको ये अवेल कर लेते हैं, मैं नहीं समझ पाता। उनको सुबह सुबह उठकर प्राणायाम करना चाहिए, उनको कपालभाति करनी चाहिए, भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, तो उनकी बुद्धि, उनका मन वो शांत रहेगा। मगर सुबह सुबह बेबुनियाद कुछ भी बोल देना, रात को क्या सपना उन्होंने देखा और सुबह वो क्या बोल रहे हैं। एक दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री ऐसी बेतुकी बात अगर करे तो उसका कोई क्या जवाब दे। तो उनको नाम बताना चाहिए कि उनको जो है किस आदमी ने ऑफ़र किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। वो 100 बार भी नाक अपनी रगड़ लेंगे सड़क पर तो भी भारतीय जनता पार्टी उनको नहीं लेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राजपूत हूँ, सिसोदिया वंश का हूँ, अगर मुझे इस तरीके से ऑफ़र दिया जाएगा उसके बावजूद भी मैं नहीं जाऊँगा। और एक तरीके से उन्होंने कार्ड खेलने की कोशिश की और कहा कि मैं ईमानदार हूँ और कट्टर ईमानदार रहूँगा। देखिए, राजपूत जितना मैं मानता हूँ, जो राजपूत होते हैं वो देश के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। उन्होंने देश में कभी 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं किया। उन्होंने हमारी देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया है। मगर अगर ये अपने आप को किसी जाति से बोलता है तो उस अपना जाति के सभा वालों को इससे पूछना चाहिए तुम हमें क्यों बदनाम कर रहे हो। बार बार केजरीवाल बोलता है मैं इस अपना जाति का हूँ, उप मुख्यमंत्री बोलता है मैं इस जाति का हूँ। क्या ये भारत की 21वीं सदी वाला भारत है? क्या हम लोग जहाँ पे सारी युवा पीढ़ी आज कोई सरनेम लगाने के लिए मना करती है और वो ये नहीं बताने को तैयार है कि हम कौन सी जाति धर्म के हैं, वहाँ पर भारत की राजधानी का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बार बार अपनी जाति का सहारा लेते हैं, बार बार अपने शहीदों का सहारा लेते हैं। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया तो उनको खुलेआम आकर सामने जांच एजेंसी का सामना करना चाहिए। वो अपनी जाति का सहारा लेकर, शहीदों का सहारा लेकर, भगवान का सहारा लेकर, हनुमान चालीसा पढ़कर वो क्या बताना चाहते हैं। तो वो जितना मर्जी चोर जो है शोर मचा ले, मगर वो बच नहीं सकते जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ये सब अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। मैं तो यही कहूँगा, बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार और इनका कट्टर भ्रष्टाचार आज दुनिया भर में केजरीवाल का मॉडल दुनिया भर को दिखता है। यही नहीं, जो दवा देने वाले काम करते थे वो आज जेल में है, मोहल्ला क्लिनिक वाले, और जो मोहल्ला दारू देने वाले हैं उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप
आरोपी नंबर 1 पर लगे हैं, लेकिन किंग पिन आज भी चुप है। जनता पूछती है, ना भ्रष्ट दवा मंत्री को हटाया और ना भ्रष्ट दारू मंत्री को। दिल्ली में घटना हो रही है आज, जो केजरीवाल अपने को इतना बड़ा समझते हैं कि देश का प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। 2 स्टेट में सत्ता में हैं वो लोग और दोनों स्टेट मिलकर 20 पार्लियामेंट्री सीट है। अभी पता नहीं एक भी सीट उनके हाथ में है कि नहीं, एक तो रिजाइन कर दिए थे। तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने का स्वप्न देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि इसीलिए उनको टारगेट बनाया जा रहा है। ठीक है, उसका एक सीमा भी होनी चाहिए। जब कंप्लेन आया है तो उसका इंक्वायरी भी हो रही है, कोर्ट में उसका समाधान हो जाएगा। So, Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia continues to be under the CBI scanner after a 14-hour-long raid at Sisodia's residence. Now, a lookout circular has been issued against him. Let's take a quick look at this detailed report. Trouble mounting for Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Days after 14-hour CBI raids, a lookout notice under him is under process and 13 others in alleged liquor scam. A lookout notice prevents an accused from leaving the country. Not only this, CBI has even shared copy of an FIR and relevant documents with the ED prompting the enforcement agency to file money laundering case against Sisodia soon. The Delhi Deputy CM spoke exclusively to India Today and called the notice a drama. तो अब कह रहे हैं लुकआउट नोटिस जारी करो, खोजो इसको कहाँ है। मैं तो यही हूँ अपने घर पे, मुझे ढूंढना है तो स्कूलों में ढूंढ लो, संडे है आज घर पे मिल जाऊंगा, आप बता दो मैं वहाँ आ जाऊंगा। He also rubbished corruption charges made in the CBI FIR and said that the probe agency was working at behest of centre. मुझे देख के खुशी हुई कि इसमें कहीं 144 करोड़ का जिक्र नहीं है। एलजी साहब ने प्रेस रिलीज में कहा था, बीजेपी के लोग कहते हैं 8000 करोड़ का घोटाला कर दिया, कोई कहता है 1100 करोड़ का घोटाला कर दिया, कोई कहता है 140 करोड़ का 144 करोड़ का घोटाला कर दिया। सीबीआई लिखती है हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का कोई 2 दुकानों के बीच लेन देन हुआ है। सब बकवास कर रहे हैं, उल जलूल की बात कर रहे हैं। The BJP and Aam Aadmi Party exchanged barbs over CBI raids and lookout notice. हत्यारों को सीबीआई लुकआउट नोटिस नहीं जारी करती, आतंकवादियों को लुकआउट नोटिस जारी नहीं करती, लाखों करोड़ रुपए के लुटेरों को लुकआउट नोटिस जारी नहीं करती। मोदी जी, आप ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं? ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? पूरा देश देख रहा है आपको। ये लुकआउट नोटिस का मतलब है कि ये जो आरोप लगा है उसमें जो साक्ष्य मिल रहे हैं बहुत संगीन है और इन आरोपियों को देश छोड़कर भाग जाने की शंका सीबीआई को भी है। 14 घंटे तक देश के अंदर 31 ठिकानों के अंदर ढूंढ मची, 900 सीबीआई के अफसर लगाए गए, मिला कुछ नहीं। ये समस्या है मोदी जी की। मनीष सिसोदिया भागने वाली चीज नहीं है, मनीष सिसोदिया डट के मुकाबला करने वाला आदमी है। एक ईमानदार जांच एजेंसी ईडी को इडियट बुलाई है। सीबीआई अपना काम कर रही है कि कुछ भी हो जाए इन कट्टर बेईमानों को भागने नहीं देंगे। कानून प्रक्रिया ये कहती है कि आप इस तरह से लुकआउट नोटिस जारी कर सकते हैं और इसलिए किया गया। ये जो लोग हैं, BJP leader Manjinder Sirsa accused Kejriwal and his deputy of routing liquor-gate kickbacks through their aide Dinesh Arora. ये दो चोर जो भागे हुए हैं दिल्ली छोड़कर, एक का नाम दिनेश है, दूसरे का नाम विजय नायर है। ये दोनों भगौड़े हैं, इनको सीबीआई ढूंढ रही है और ये मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ इनकी फोटो है। अब आजकल इनसे पूछो कहां हैं तो कहते हम तो जानते भी नहीं है। इनकी फोटो डिलीट क्यों की, इसका जवाब दिल्ली और देश के लोग आज आपसे पूछ रहे हैं। Congress too targeted Sisodia, saying that Kejriwal government has made the national capital a capital of liquor.
मनीष सिसोदिया और 12 इनका जो गैंग है ना, जिसने पूरी दिल्ली को शराब की राजधानी बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ी 144 करोड़ का चूना लगाने में, वो सब देश छोड़कर भागने, छुपने की, सबूतों को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, सीबीआई ने थोड़ी देर जरूर की, लेकिन मोर्चा संभाल लिया है। While Sisodia tweeted an old video of Prime Minister Modi slamming CBI witch hunt, BJP hit back with an old video of Kejriwal terming the corrupt as traitors. ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, और कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। मेरा मानना है भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी का ऐलान कर देना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे गद्दारी माना जाएगा। देश के साथ गद्दारी कर। Does Sisodia face arrest now after coming under CBI and ED crosshairs in alleged alcohol scam? Now when Sisodia is barred from travelling abroad and his computer and mobile seized, and CBI roping in Enforcement Directorate, is Manish Sisodia's arrest in the offing? With Munish Pandey, Pankaj Jain and Shreya Chatterjee in Delhi, Bureau Report, India Today. Now, amid the Delhi's Liquorgate war, a furious face-off has emerged on the cyberspace, with BJP and the TMC launching an intense video and meme war. BJP takes on a jibe at Arvind Kejriwal, releasing a video titled Golmaal Hai. The video shows Kejriwal, a lookalike of Kejriwal in fact, distributing freebies to all and sundry to divert attention from its misrule. This is the latest in the series of video war between AAP and BJP. AAP, the Aam Aadmi Party, also releasing a meme which shows Sisodia shielding Delhi's education model by blocking arrows coming in from the central government. Now, this video has tried to project Deputy Chief Minister Manish Sisodia as a fighter pitted against the central government, which is alleged, through this video, is alleging that the government is trying to dismantle the Aam Aadmi Party's good work. The AAP had earlier released a video of Prime Minister Modi slamming CBI misuse while in opposition, and it seems like this meme fest has exploded now. जी सर जी ये देखिए वो आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारा विज्ञापन छा गया। हट देखो आर्टिकल बोलो। सॉरी सर जी। तो भाइयों और बहनों, देखा आपने, आज हमारी सरकारी स्कूल की प्यारी प्यारी बच्चियां आज न्यूयॉर्क के अखबार में चमक रही हैं। वाह। हेलो, क्या मदर मैरी? पक्का लॉक कर दूं? सर ये खबर है, ये जो चमक रही है वो हमारी सरकारी नहीं, मयूर विहार की प्राइवेट स्कूल की बच्ची। आए इसका सही इस्तेमाल करने। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, और कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं। All right, now fresh allegations by the BJP and Delhi's excise policy row. BJP has alleged that TRS has a link in this controversy. BJP's Parvesh Verma has said that members of the KCR family have met with Sisodia in a 5-star hotel. BJP has alleged that TRS helped Sisodia with the formulation of the liquor policy. TRS has countered BJP's charges, has claimed that the central agencies are being guided by BJP leaders. TRS government questions, in fact, they've questioned the BJP if at all there is any evidence of their involvement or any of their individuals within the government, within the TRS government, or
those family members related to KCR have been found involved in this excise policy. If there is proof, then bring it to fore. New allegations have turned into a fresh firestorm as BJP eyes the upcoming assembly polls in Telangana, and it seems like this controversy over excise policy, corruption within the Aam Aadmi Party and now the TRS exploding. सारे पर्याप्त सबूत हैं, एक एक व्यक्ति की पूरी डिटेल है, कॉल की डिटेल है, उनकी लोकेशन की डिटेल है, कौन से होटल में इनका स्वीट सारा बुक रहता था, 6 महीने तक बुक रहता था, वहाँ से तेलंगाना से लोग आते थे, बिजनेसमैन आते थे और उनके साथ में बैठकर ये पॉलिसी बनाई गई। और केसीआर की बेटी जो हैं उनका इसमें रोल है, के कविता का इसमें रोल है और के कविता जो है मीटिंगें करती रही ओबरा इसमें। के कविता जो है शराब के लोगों से, चड्डा परिवार से उन्होंने मीटिंग की, चड्डा परिवार का पैसा लेके उन्होंने फैक्ट्री डीसील करा के दी उनकी, तो ये सारा के कविता का रोल रहा है पैसे लेने देने में बहुत। All right, here's some big news coming in. Manish Sisodia, of course, reacting to all the CBI charges against him, and he now pulls out the Rajput card amid the Liquorgate face-off. Manish Sisodia says, I'm a descendant of Maharana Pratap. I can lose my head, but will not bow down. BJP has offered me ED relief if I quit the Aam Aadmi Party. These are words of Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia, who is currently under the CBI as well as the ED scanner, while allegations mount on him of corruption within the excise policy framework. Manish Sisodia pulls out the Rajput card and says, I'm a descendant of Maharana Pratap. I can lose my head, but will not bow down. BJP has offered me ED relief if I quit Aam Aadmi Party. These are bold words, statements coming from Manish Sisodia, who's right now facing ED and the CBI heat. All right, here's some big development that we are currently tracking at the Supreme Court. A mega Aam Aadmi Party versus government face-off in the Supreme Court. A 5-judge Supreme Court bench to be hearing control of services. The Justice D.Y. Chandrachud heads 5-judge Supreme Court panel. The control of government appointments lies with the centre. Here's the Aam Aadmi Party and the centre facing off at the Supreme Court. We're looking at the Supreme Court, a 5-judge bench. They're currently hearing this matter on government appointments to be completely held by the centre. They're going to be taking care of, or rather complete control of all government appointments. And this has come to a flashpoint in the Supreme Court with the Aam Aadmi Party questioning the same. A 5-judge Supreme Court bench to hear control of services. Justice Chandrachud Singh there heads this 5-judge panel. We're going to continue tracking the story. All right, Aam Aadmi Party, Saurav Bharadwaj speaking on all the liquor policy allegations. Listen in. राज्य में एक मिसाल बनने वाले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की इतनी अच्छी इमेज होने के बावजूद लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, इतनी सहानुभूति रखते हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया जी को क्यों टारगेट बना रही है और क्या कारण है एक के बाद एक एजेंसियों के बारे में पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां देते हैं, उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में लाइव सीबीआई और ईडी के नाम की धमकियां देते हैं, उनको डराया जाता है, फिर सीबीआई केस रजिस्टर करती है, केस रजिस्टर करने के अगले दिन 30 अफसर उनके घर पे छापा मारते हैं, पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक शिक्षा मंत्री के ऊपर इतना दबाव क्यों बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कार्यालय क्या चाहता है? आज मैं आप लोगों को
आप लोगों के माध्यम से देश के लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार क्या चाहती है? केंद्र सरकार चाहती है महंगाई बढ़े, बढ़ती रहे, कोई विपक्ष का आदमी आवाज ना उठाए, बेरोजगार युवा सड़कों पे घूमते रहें, कोई विपक्ष से केजरीवाल उठ के प्रधानमंत्री जी से सवाल ना कर ले। डॉलर की हालत वो हो गई है कि रुपया इतना बुरा कभी इतिहास में नहीं गिरा, मगर दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पलटकर केंद्र सरकार से दिल्ली की और देश की इकोनॉमी के बारे में कोई सवाल ना पूछ लें। मोदी जी के कॉरपोरेट मित्रों को 10 लाख करोड़ के एनपीए की राहत हो जाए मगर इस पे सवाल ना उठे, कॉरपोरेट टैक्स कम हो जाए मगर विपक्ष चुप रहे। तो ये किस मोडस ऑपरेंडी से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मैं आपको कुछ उदाहरण जो है देना चाहता हूं। और उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं शुवेंदु अधिकारी, टीएमसी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैंपेन शारदा चिट स्कैम और शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ था और कई महीने तक ये जो है पूरा का पूरा नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का चला। जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई तो सीबीआई ने उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया, छापेमारी की। 2017 में उनके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के अंदर भी केस रजिस्टर किया गया और ईडी ने छापेमारी की, इंटेरोगेशन हुई, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारी की सारी इंटेरोगेशन, सारे के सारे उनके ऊपर आरोप अब खत्म हो गए। अब शुवेंदु अधिकारी जो उस वक्त बंगाल के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी, मैं नहीं कह रहा, आज वो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन है। एक और उदाहरण देता हूं, हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा अगस्त 2015 में से पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने असम में बाकायदा कैंपेन चलाया कई महीनों तक हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कि इन्होंने वाटर स्कैम के अंदर करोड़ों रुपए हड़प लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा बुकलेट निकाली हेमंत बिस्व शर्मा के नाम पे कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हो सकता, और पूरी कैंपेन हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ थी। और यह मामला यहां तक बढ़ा कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी इस मामले के अंदर केस दर्ज किया और अमेरिका की गवर्नमेंट ने भी यह कहा कि इसके अंदर किसी मंत्री को पैसे दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि वो मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है। और आज हेमंत बिस्व शर्मा असम में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। जिनके खिलाफ कैंपेन चलाया उनको आपने पार्टी ज्वाइन कराई और अब वो आपके यहां मुख्यमंत्री हैं। मुकुल रॉय 2017 में 3 नवंबर 2017 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले मुकुल रॉय बंगाल के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हुआ करते थे। शारदा चिट स्कैम और नड़ादा स्कैम के अंदर सबसे बड़े आरोपी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने इनके खिलाफ कैंपेन चलाया, इनके ऊपर मुकदमे किए गए। इनके और इनके साथ 12 टीएमसी के लोगों का स्टिंग भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया और खूब प्रचारित किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये शामिल हो गए और जब ये शामिल हो गए तो इनके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन, सारी की सारी जो कार्रवाई है वो ठंडे बस्ते में चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने इनका नाम लेना भी बंद कर दिया। इसके बाद मैं उदाहरण दूंगा नारायण राणे, महाराष्ट्र के गद्दावर नेता। नारायण राणे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, कैंपेन चलाया,
मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया। उसके बाद इनके ऊपर एक जमीन घोटाले के अंदर बड़ा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने चलाया और फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए और ये सारे मामले जो है ठंडे बस्ते के अंदर चले गए। इस तरीके के मेरे पास 3 दर्जन मामले हैं। क्या तो वो मुकुल राय हो, क्या वो सुखराम जी के बेटे अनिल शर्मा हो, जिनके खिलाफ फर्स्ट टेलीकॉम स्कैम में भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों तक कैंपेन चलाया, चाहे वो पेमा खुंडू हो, जिनको आज अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, उनके और उनके साथ कई साथियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया कि वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जब सुसाइड किया था तो इनके बारे में कई बातें लिख के वो मरे थे और इनके ऊपर कैंपेन चलाया। फिर ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इनके बारे में कुछ भी कहना बंद कर दिया। इसके अलावा बजयंत पांडा, मनी लॉन्ड्रिंग, वॉयलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर आरोप लगाए। जब ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2019 में शामिल हो गए तो जांच ठंडे बस्ते में चली गई। पुरुषोत्तम सावरिया, इनके ऊपर गुजरात के अंदर इरिगेशन स्कैम में पूरा का पूरा कैंपेन चलाया, मुकदमे किए, दबाव बनाया। 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारी इन्वेस्टिगेशन ठंडे बस्ते में। शुभेंदु अधिकारी आपको बता चुका हूं। और इस तरीके से दर्जनों ऐसे बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्यों में रहे हैं जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने एक कैंपेन चलाया, ईडी और सीबीआई से मुकदमे दर्ज कराए, उनके घर और उनके साथियों पर छापे डलवाए, उनको बदनाम किया और उसके बाद वो जब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो वो दूध से नहाकर भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ सुथरे बाहर निकले। ये आईना भारतीय जनता पार्टी को दिखाना जरूरी है और देश के लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ऑपरेट करती है, अपने खिलाफ बोलने वालों के मुंह बंद कराने के लिए क्या करती है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने यह खुलासा किया कि उनके ऊपर जो सीबीआई की ईडी की धरपकड़ हो रही है उससे संबंधित उनको एक मैसेज आया है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है आप भाजपा में आ जाइए, आपके सारे केस हम सुलट लेंगे। सोचिए भारतीय जनता पार्टी आज किस हद तक गिर चुकी है। और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा, मुझे लगता है जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया के नाम का मजाक उड़ाया, उनके नाम के साथ जुड़े हुए सिसोदिया शब्द का मजाक उड़ाया, उनको भी ये बहुत बड़ा करारा जवाब है। मनीष जी ने बोला जो सिसोदिया लिखा हुआ है ना, ये महाराणा प्रताप के वंश से आया है शब्द। हम वो सिसोदिया हैं जो अपनी गर्दन दे सकते हैं मगर गद्दारी नहीं कर सकते। तुम्हें जितने मुकदमे करने हैं कर लो, फांसी पे लटकाना है लटका देना। हम महाराणा प्रताप के राजपूत वंशज हैं, सर कटा देंगे मगर देश के दुश्मनों के साथ दोस्ती नहीं करेंगे, भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे मनीष सिसोदिया। और आज इस पार्टी को, पूरी दिल्ली को मनीष सिसोदिया के ऊपर गर्व है। मुझे बहुत गर्व है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए कि मनीष सिसोदिया जी को यहां तक कहा गया, बहुत कम लोग होंगे जो इतनी बड़ी चीज को ठुकरा सकें। उनको यह कहा गया कि हमारे पास दिल्ली के अंदर केजरीवाल के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है। हमने कई चेहरे बदले, हर्षवर्धन लाए, मनोज तिवारी लाए, आदेश गुप्ता लाए, एक वो कौन थे वो जो मीटर वाले थे, उपाध्याय जी, सतीश उपाध्याय जी लाए, कई लोग लाए, कोई जम ही नहीं रहा। केजरीवाल के कद का कोई आदमी नहीं मिल रहा।
आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार आपको बनाएंगे। आपकी अच्छी छवि है, लोग पसंद करते हैं, आपका बड़ा करियर है, आप आगे तक जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, अरविंद केजरीवाल मेरे गुरु हैं, मेरे मुख्यमंत्री नहीं है, मेरे गुरु हैं, उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और मनीष सिसोदिया जी का सपना उन्होंने बताया कि मेरा सपना देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं है। दोस्तों, आज देश को ये बताने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी किस हद तक गिर चुकी है, किस हद तक 2014 से अब तक कई दर्जन बड़े बड़े नेताओं को डरा धमकाकर ये चुप कराते हैं या अपनी तरफ लेते हैं। और आज इसका खुलासा हमारी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने किया है। मुझे लगता है कि उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है। आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये ऑफर किसने दिया, आधार क्या है, सब सबूत पेश करें। ऑफर आया बीजेपी, कब आया, किसके बाद, कैसे यकीन दिलाया इस दावे पर? आपके पास तो यकीन करने के लिए बहुत सारे दावे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर मुकुल रॉय से लेकर मुकुल अधिकारी से लेकर पता नहीं इतनी लंबी लिस्ट है। आप पता करिए क्या तरीका है बीजेपी का, वही तरीका है। समय रहते हुए वो भी बताया जाएगा, वो भी फोन आया, किसका मैसेज, वो बताएंगे, मगर तरीका वही है जो बाकी नेताओं के साथ जो तरीका है वो ही सेम मोडस ऑपरेंडी है, वो भी बताएंगे। आज हुआ है, ये मैंने नहीं पूछा कि उनसे कि आज हुआ है कल हुआ है, मगर ये मोडस ऑपरेंडी आज से नहीं चल रही है, 2014 से चल रही है। डायरेक्ट आया है किसी के माध्यम से? भाटी जी आप बहुत पूछ चुके हैं, उन्हें पूछने दीजिए। क्या कोई कॉल आया है? ये मेरी बातचीत नहीं हुई है मनीष जी से, इसके बारे में और जानकारी देंगे, मगर सेम मॉडस ऑपरेंडी से सेम तरीके से इस चीज को बढ़ाया जा रहा है। आपने तो एक आपने हिस्ट्री बता दी कि जी, लेकिन जो दावा मनीष सिसोदिया ने किया है उसके लिए तो कोई कॉल या मैसेज आना जरूरी है। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल इस पूरी चर्चा के अंदर आगे भी आपको बताएंगे। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है दोस्तों, अभी तो कई प्रेस वार्ता करेंगे इसके ऊपर। पूरी जो पोल है भारतीय जनता पार्टी की वो खोली जाएगी। और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से जरूर पूछना मेरे दोस्तों कि ऐसा क्या हो जाता है कि जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कैंपेन चलाती है, और आज तो सारी एजेंसीज भी भारतीय जनता पार्टी के अधीन है, जब वो आदमी भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाता है तो सारे केस ठंडे बस्ते के अंदर चले जाते हैं, सारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है, सारी कैंपेन बंद हो जाती है। कितने विधायकों को साथ लाने का प्रस्ताव? अब ये डिटेल जो है मुझे नहीं है, बट विधायक अगर आपको सरकार बनानी है, ये मेरा सिर्फ अपना आकलन है, 8 तो उनके पास है, 36 के लिए उनको 36-8। क्या सीबीआई रेड के बाद ऐसा प्रस्ताव आया सिसोदिया जी के पास? असल में क्या वो प्लेन में चढ़ गए, तो मेरी इस बारे में पूरी बात नहीं हुई है, वो गुजरात पहुंच रहे हैं, मगर ये मोडस ऑपरेंडी सेम है। नहीं तो अगर इतना बड़ा कोई ऑफर है तो फिर बीजेपी के उस नेता को एक्सपोज करने में कर तो दिया, आज हमने पूरा एक्सपोज कर दिया, सब करेंगे धीरे धीरे, सब करेंगे। हम तो आपको कह रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए आप कि आपने इतनी बड़ी कैंपेन चलाई हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ, क्या हुआ? सारे केस खत्म क्यों हो गए? मुकुल रॉय के पास क्या हुआ? शुभेंदु अधिकारी का क्या हुआ? इन सब का क्यों ऐसा हुआ कि सीबीआई ईडी जो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से काम करती है, जैसे ही कोई भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और सारा का सारा मामला ठंडा हो जाता है। ऑफिशियली क्या ये चीज आम आदमी पार्टी, राइट, आपने कहा कि पॉपुलैरिटी बढ़ रही है आम आदमी पार्टी की, इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या इन सब से एलिगेशन जो सीरियस लगाए गए हैं क्या वो कम हो जाते हैं, कम आ सकते हैं उस चीज को? क्या नहीं, एलिगेशन तो पहले दिन से ही नॉन सीरियस है। एक भी एलिगेशन ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई आपने बताया हो कि साहब ऐसा हो गया। जो भी 2-3 एलिगेशन है सारे के सारे प्रोसेस के अंदर है,
सारी की सारी वो चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी का रेलवे मिनिस्ट्री करती आई है, भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी करती आई है। कोरोना में लॉकडाउन के समय कंसेशन इन्होंने भी दिए, आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी दिए। तो इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया? मतलब आप छोटे मोटे प्रोसेस की रेगुलरिटी को पॉइंट आउट कर सकते हो कहीं पे, मगर आप ये कहो कि इसके अंदर हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, वो तो है नहीं। अगर ये पॉलिसी किसी तरीके से फेल की गई और किसी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया तो वो उस वक्त के एलजी ने किया। उन्होंने पॉलिसी को हाँ करके एन मौके पे उसको पलटा है। भाजपा आम आदमी पार्टी के ऐसे ही सभी लीडर को क्यों टारगेट कर रही है जो पार्टी में 1, 2, 3, 4, 5 का हैसियत रखता है? देखिए, हर जगह उन्होंने ऐसे ही किया है। असम के अंदर उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा को टारगेट किया, जिनको नॉर्थ ईस्ट का अमित शाह माना जाता था, बहुत बड़े नेता थे। टीएमसी के मुकुल रॉय और ये अधिकारी शुभेंदु अधिकारी, ये बहुत बड़े कद के नेता थे। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि ममता बनर्जी कोई ना आ जाएंगे उनकी पार्टी में। नंबर 2, नंबर 3 उसी को टारगेट किया जाता है और उसी के ऊपर पूरा दबाव बना के कोशिश की जाती है कि हमारी पार्टी का खाता तो खुले। ये मोडस ऑपरेंडी है। अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार जो है वो पूर्व एलजी ने है, तो की है आपराधिक की जांच उनके खिलाफ, किनके खिलाफ है? अभी पूर्व एलजी का जिक्र आपने किया, जो आपने कहा कि देखिए, जांच की शुरुआत ही सीबीआई को एलजी साहब के उस फैसले से करनी चाहिए जिसके अंदर पहले उन्होंने कहा कि दिल्ली के 100% एरिया के अंदर इतनी दुकानें खुलेंगी, और बाद में उसमें उन्होंने 40% एरिया हटा दिया और बोला कि बाकी 60 में खुलेंगी। उससे जिन भी ठेकेदारों ने, जिन भी लाइसेंसीज ने अपनी बिड डाली थी, वो लोग हाईकोर्ट गए। करीब आधा दर्जन पिटीशन हाईकोर्ट ने डिसाइड किए। हाईकोर्ट का आदेश हुआ सरकार को कि आप इनके पैसे वापस कीजिए। सरकार को 30% फीस वापस करनी पड़ी और पॉलिसी के अंदर सरकार के रेवेन्यू के अंदर घटना जो है वो शुरू हो गया। ये सब मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट के अंदर ये चीजें डिसाइडेड हैं। और कोई चीज? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बहुत हो गए। There you had it. Saurabh Bharadwaj of the Aam Aadmi Party coming out all guns blazing at the BJP, saying it's quite evident now with CBI, the ED, using its powers to arm twist opposition leaders. Many of them are coaxed to join the BJP with a promise by the BJP that they would end all cases against them. And this is the same allegation he makes with Manish Sisodia, saying that BJP has asked Manish Sisodia to join the BJP, and if he does, then the case against him would end. We're going to continue tracking those details. For now, it's a wrap. I'm going to come back with the top headlines. You are watching India Today. I don't read the news. I read between the lines to tell you the true version of events, the true story of our times. To document grief, the toughest assignment for any journalist to be. From those who matter, Women politicians going to stick up for each other. of those who should matter, I document the truth. I don't distort the truth. I don't glamorize the truth. I don't gloss over the truth. The ghosts of India's contentious medieval history have come knocking again. I hustle for the truth, on the ground, in the newsroom, in the studio. I don't try to grab eyeballs. I inform you to make you see the point. To the Point with Preeti Chaudhary. At these times, only on India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices.
this testing shows us that there is a vast potential in the commercial use of drones, especially in urban area. And this is a further step of creating an economically viable model. Everyone's busy finding what's trending. You're busy finding out why. India Today, for those who research before reacting. Download the India Today app now. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. With every sunrise comes new beginnings, new opportunities and new stories. And that's why we're first up. While you're sleeping, we're hard at work to ensure you get the perfect news shot every morning. Get you all the updates. Our morning mission to get you news that's fresh and packed with flavor. Watch First Up every weekday morning with me, Akshita Nandagopal, right here on India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Everyone's busy finding what's trending. You're busy finding out why. India Today, for those who research before reacting. Download the India Today app now. Everyone's busy finding what's trending. You're busy finding out why. India Today, for those who research before reacting. Download the India Today app now. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. So this is the spirit of Taiwan. Life goes on. There is no fear as they enjoy a weekend out on the streets. There is no threat, there is no fear among Taiwanese because they have been living under this threat for a very, very long time. Is there a fear that China may attack Taiwan? It would be like Russia attacking Ukraine, not really like a full-on bombing, but more like sending troops there to invade. If China was trying to intimidate
the people of Taiwan with its military drills and live fire exercises. Clearly, China has failed. Join me, Gaurav Sawant, as I report live and exclusive from Ground Zero, Taiwan, only on India Today. I don't read the news. I read between the lines to tell you the true version of events, the true story of our times. To document grief, the toughest assignment for any journalist to be. From those who matter, Women politicians going to stick up for each other. of those who should matter, I document the truth. I don't distort the truth. I don't glamorize the truth. I don't gloss over the truth. The ghosts of India's contentious medieval history have come knocking again. I hustle for the truth. On the ground, in the newsroom, in the studio. I don't try to grab eyeballs. I inform you to make you see the point. To the point with Preeti Chaudhary. At these times, only on India Today. Co-powered by RK Marble, Khoobsurat Imandari. In association with JioMart, Har Ghar Ka Mart. Co-powered by The World Comes Together at Sharda University. In association with Brokerage Kyun Dena, nobroker.com hai na. A very good afternoon. You're watching India Today. I'm Nabila Jamal. The first headlines. Return of farmers' protest in the national capital. Traffic snarls at key Delhi borders. Heavy security deployed in Jantar Mantar and Singhu border. And after CBI, ED heat on Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia. Kejriwal and Sisodia now at Modi's turf, Gujarat today. Massive political slugfest between the two parties. BJP drags Telangana Chief Minister into the raging Delhi liquor policy controversy. Claims that KCR's daughter played a big role in formulating the liquor policy for Aam Aadmi Party. TRS cries foul, says ED used against them only for political vendetta. And fresh campus showdown in Karnataka. The SDPI opposing Ganesh Utsav celebrations inside school campuses, referring to hijab ban. Plans to hold a mega stir. More drama coming up in the election-bound state of Karnataka. Infighting in the AAP-BJP peaks. EPS's plea against single-judge order to be heard by the Madras High Court. OPS also files a caveat. A case to be heard today. And ousted Pakistan Prime Minister Imran Khan, booked for allegedly threatening Islamabad police and magistrate. Anti-Terrorism Act slapped against Imran Khan. Massive protests erupt in support of Imran. And Sports Ministry tells the Supreme Court that the panel of administrators can't run football body and that the polls needed, there's a poll that will be needed as FIFA norms suggest the same. PDP in Jammu and Kashmir now stage a protest against the CEO of Jammu and Kashmir's decision to allow non-locals to cast their vote in the Union Territory. PDP now protesting against the new Jammu and Kashmir voting norms. Check. Condemning that non-locals will now be allowed to vote in Jammu and Kashmir. This is a decision taken by the Jammu and Kashmir CEO. Hasn't gone down well with many of the Kashmiri locals and the PDP as a party opposing this move, claiming that this will take away the rights of true locals within the Jammu and Kashmir region. PDP protesting this new Jammu and Kashmir voting norms. In fact, Sunil Ji Bhatt is right there tracking the protests, bringing us more from the spot. Sunil, over to you. We know that the decision to allow non-locals to cast their vote in Jammu and Kashmir hasn't boded well with the PDP, the NC,
Many of them condemning this move of the BJP, accusing the BJP of trying to bring backdoor voters to support their party. Nabila, you can see that the PDP activists have hit the streets here in Jammu against the inclusion of non-locals in the voter list of Jammu and Kashmir. You can see that angry protests are being staged by the PDP activists. They are raising slogans against the Modi government as well as against the Election Commission of India. You can see that they are staging protest march. They have blocked the road here, and you can see that slogans are being raised against the Modi government as well as against the Election Commission of India. आपकी क्या आपत्ति है इसको लेकर? अगर जम्मू कश्मीर का कोई निवासी दूसरे राज्य में रहता है, वो वहाँ पर वोट कर सकता है, तो यहाँ पर भी अगर दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति वो क्यों नहीं वोट कर? देखिए, आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिसके पास एक अपना खसूसी दर्जा था, जिसका एक स्पेशल स्टेटस था, जिसकी एक हिस्ट्री थी, जिसके डोगरा की एक हिस्ट्री है, जिसके कश्मीरी की एक हिस्ट्री है, और ये रियासत कोई आम रियासत बाकी रियासतों की तरह से नहीं है। यहाँ के लोगों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ एश्योरेंसेस दिए गए थे। लेकिन आज 370 तो हट चुका है ना, अब कौन सी एश्योरेंस? 370 इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में हटाया गया। आपको ये चीज, इस चीज को आपको समझना चाहिए। यहाँ के लोग लिया गया है, आपको मंजूर नहीं है जो ये फैसला? किसी को भी, जम्मू कश्मीर के हर बंदे को ये फैसला जो है, हर फर्द को ये फैसला जो मंजूर नहीं है। Clearly, Nabila, you can see that a massive political storm has erupted in Jammu and Kashmir. PDP has hit the streets, and it is saying that the decision to include non-locals in the voter list of Jammu and Kashmir is not acceptable to them. They are going to launch a massive agitation in Jammu and Kashmir. And Nabila, even as we speak, there is an all-party meeting going on in Srinagar. This meeting has been called by the National Conference President, Dr. Farooq Abdullah. And what is surprising is that even the Congress leaders are attending that meeting. The Congress leaders have also, raised objections over this decision that has been taken by the Chief Electoral Officer of Jammu and Kashmir, and massive sloganeering is on. You can see that PDP leaders and activists are raising slogans. You can also see that they are holding banners in their hands, and their demand is the interest of the people of Jammu and Kashmir. So here, knives are out, and now protests are taking place against the Modi government and the election commission. आपकी क्या आपत्ति है इसको? देखिए, हमारी आपत्ति बिल्कुल साफ है कि ये बोगस वोट, इंपोर्टेड वोट और बाहर से लोगों को लाके जम्मू कश्मीर का उनको हक देना चाहते हैं। हम उसके खिलाफ है। ये डोगरा कल्चर को खत्म कर देगा, ये जम्मू की डंडी को छीन लेगा। हम अपनी डंडी की लड़ाई लड़ रहे हैं। So you can see that the PDP activists are saying that the Modi government has compromised with the interests of the people of Jammu and Kashmir, and the decision to include non-locals in the voter list is not acceptable to them. Nabila, back to you. Right, the visuals are quite telling, but is this only the PDP or even the locals there are outraged with this move? Because allegations are that non-locals, at least 25 lakh voters will be added to the list. Nabila, these are only the PDP activists who are staging the protests here. They belong to the People's Democratic Party. You can see that they are holding banners in their hands. They are saying that imported voters unacceptable, stop discrimination. So the PDP has hit the streets here in Jammu, and they are saying that the decision of the Chief Electoral Officer to include non-locals in the voter list of Jammu and Kashmir is not acceptable to them. The PDP is going to launch a massive agitation here in Jammu and Kashmir, and you can even see that there are women activists of the PDP who will speak to them. मुझे बताइए, आपकी क्या आपत्ति है इसको लेकर? अगर जम्मू कश्मीर का निवासी दूसरे राज्य में रहता है, वहाँ का वो वोटर बन जाता है, तो यहाँ पर अगर दूसरे राज्य का व्यक्ति वो क्यों नहीं वोटर बन सकता? नहीं, वो तो देखो एक कानून है उनका, जो वहाँ का डालते हैं, उनके एक बैलेट होते हैं, वो वोट डाल के वहाँ बेचते हैं, जैसे आर्मी वाले हैं। अगर कोई बिहार से है तो यहाँ से वोट जाएगी, बिहार में जाएगी। ये तो बात नहीं है ना। एक मिनट, जम्मू वहाँ से ला के लोगों को यहाँ आप 25 लाख वोटर बनाओगे और उनसे आप वोट दिलवाओगे, तो कल को तो ये करेंगे। ये एक चिंता का विषय जम्मू कश्मीर के लिए, ये हम लोगों के लिए नहीं है। पीडीपी वाले जम्मू कश्मीर के लिए चिंता का विषय है। कल को ये 25 लाख अगर इन्होंने वोटर ला दिए, कल को ये अपना कैंडिडेट ही वहाँ से लाएंगे। Nabila, you can clearly see that PDP is saying that this decision is unacceptable to them, and they are going to continue with their agitation. And even Nabila, while we speak, there is an all-party meeting that is going on in
Srinagar. This meeting has been called by National Conference patron Dr. Farooq Abdullah, and this issue of inclusion of non-locals in the voter list of Jammu and Kashmir is being discussed there, threadbare. There are parties like CPM, Congress, Awami League and other political parties of the Kashmir Valley who are in participation. The BJP is holding a separate meeting in Jammu. Top BJP leaders of the J&K unit are currently in a huddle, and they are devising a counter strategy against the move and the stand that has been taken by Gupkar parties. Nabila, back to you. All right, PDP as well as the NC vehemently opposing this move by the government, proposing for non-locals to vote in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir will go to polls soon now. It's been 4 years without an elected government. This time, it seems like all eyes are on that union territory on how it pans out post the abrogation of Article 370. Thank you, Sunil, for joining us. Meanwhile, protesting farmer groups have started to protest yet again at Delhi's borders. Many of those farmers have now been rounded up by the Delhi police. Farmers are gathering at the Delhi's Jantar Mantar, seeking various SOPs like MSP guarantee for them. In fact, traffic snarls returned to the national capital as farmers staging a huge dharna. Security has been ramped up at Ghazipur, Tikri borders, Singhu borders as well. Farmers arriving at Jantar Mantar in Delhi following a call by some of the farmer unions to protest against unemployment, also one of their grouse. Farmers' demands here to be clear and listing out for you. They're asking for minimum support price guarantee to be given to them, the same contention that they had when the new farm laws were introduced by the BJP government, which has now been revoked. They still pressing for a minimum support price for their produce, a guarantee on the same. They're also asking for a withdrawal of the proposed electricity law and also sacking of Minister of State for Home Ajay Mishra Teni, whose son has been accused of mowing down some of the farmers in Lakhimpur Kheri. Asking for justice for the Lakhimpur Kheri victims. The farmers here protesting, demanding that Ajay Mishra Teni be sacked as the Minister of State for Home. This is the same demand they made when the incident happened as well, months ago. So far, Ajay Mishra Teni remains as the MOS, but nonetheless, his son languishing in prison. ये किसान है जो कि प्रदर्शन के लिए यहाँ पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम किसानों को जो है वो यहाँ पर डिटेन कर लिया है। लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, फिलहाल पुलिस की तरफ से उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। एकाएक जितने भी किसान यहाँ पर पहुंच रहे थे अलग अलग बॉर्डर्स पे, उन पे यहाँ पर कड़ी निगरानी जो है वो दिल्ली पुलिस और उनके आला अधिकारी जो रख रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी एक ही गाड़ियों की चेकिंग जो है वो यहाँ पर करते हुए जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लगातार कोशिश ये है कि किसान नई दिल्ली इलाके की तरफ कूच ना करें, क्योंकि पूरे नई दिल्ली इलाके में धारा 144 जो है वो लगाई गई है और किसानों को महापंचायत की परमिशन जो है वो फिलहाल नहीं दी गई। और ऐसे में तमाम जो किसान यहाँ पर पहुंचे थे उनको फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर डिटेन जो है वो कर लिया गया है। कैमरा पर्सन राजा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। Cutting across to Shreya Chatterjee, joining us live from one of the border areas. Shreya, give us a sense of what's behind you. What are the farmers' demands there? We've listed out some of them. How angry are they at this point when they've come back to the borders months after that huge, farmers' agitation right before the Uttar Pradesh elections took place? It died down briefly. It seems like the farmers now back at the borders asking for the same demands to be met. Well, exactly, Nabila, and leading up to this, prior we had seen that there were several other Mahapanchayats that were organized at a much more local level before this decision was taken. One thing yet to be pointed out, that this is not a call given by the Samyukt Kisan Morcha, who had protested last year as a unified organization. This call has been given by BKU and it's been led by Jagjit Singh Dhaliwal. Now, the farmers, some of them, as you were pointing out, were being detained in the Ghazipur border. The picture, however, is different where I am standing. I'm at the Singhu border. None of a single farmer was stopped at the Singhu border or detained. They were allowed to move forward in the national capital. However, given the fact that there is no permission to protest in Jantar Mantar, there's a possibility that they could be stopped
before they reach the Jantar Mantar area. But deployment at Singhu is something that you can see behind me. There are heavy police personnel deployed. There are barricades in place, riot control vehicles. Vehicle checking is going on. Delhi police is notifying each of the vehicles that have entered Delhi carrying the farmers, but none of them have been stopped here at Singhu at least. Over to you, Nabila. All right, Shreya, thank you very much for joining us with those details. So if you do face traffic snarls across the national capital, we're seeing the farmers back at the borders agitating against some of the demands, including a minimum support price guarantee and sacking of MOS Ajay Mishra Trainee to bring justice to the Lakhimpur Kheri victims. And now the CBI heat on Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia is not settling down. ED is all set to probe foreign remittances by the event management companies, all linked to the excise policy. CBI has shared some documents to the Enforcement Directorate in connection with this case. A lookout notice has been issued against 8 out of 9 people named in this FIR. In fact, the BJP has claimed that accused are associates of Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. BJP has sharpened its attack on Aam Aadmi Party government. AAP has alleged that charges are fabricated and that the numbers floated by the BJP remains unsubstantiated by the CBI. Meanwhile, Kejriwal and Sisodia will be in Modi's turf, Gujarat, today as the Aam Aadmi Party tries to capture ground in that poll-bound state of Gujarat. मैं भी आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ 2 दिन के लिए गुजरात जा रहा हूं। 2 दिन गुजरात में अलग अलग जगहों पर रहेंगे और वहां भी लोगों से यही अपील करेंगे कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता के लिए शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर पाई, रोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाई। वहां पे महंगाई से लड़ने में लोगों की कमर टूट गई है, उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दें गुजरात के लोग तो 5 साल में वो करके दिखाएंगे जो गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन में जितना अच्छा काम नहीं देखा होगा। इसके लिए हम आज गुजरात जा रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहा हूं और जिस तरह से दिल्ली में पिछले 7-8 साल में काम हुए हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे काम किए अरविंद केजरीवाल जी ने, महंगाई से लड़ने में दिल्ली के लोगों की मदद हुई है और जिस तरह से अब पिछले 5 महीने में पंजाब में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं, उसी क्षेत्र में शिक्षा में, स्वास्थ्य में, महंगाई से लड़ने में, रोजगार में, किसानों के लिए, उनसे प्रभावित होकर गुजरात की जनता भी अब केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहती है। अरविंद केजरीवाल मॉडल डिकोडेड। You have all the power to make money through corruption, spend hundreds of crore rupees on your publicity with no accountability, and when you get caught, you have no accountability, but you fix liability on someone else. अरविंद केजरीवाल जी ने किससे पूछकर ठेके खोले, कितने पैसे लिए और आखिरकार इसका जवाब कब देंगे? मोहल्ला क्लिनिक से मोहल्ला ठेका, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है। मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिली, मोहल्ला ठेका में घर घर दारू पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। मैं तो यही कहूँगा, बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार और इनका कट्टर भ्रष्टाचार आज दुनिया भर में केजरीवाल का मॉडल दुनिया भर को दिखता है। यही नहीं, जो दवा देने वाले काम करते थे वो आज जेल में है, मोहल्ला क्लिनिक वाले, और जो मोहल्ला दारू देने वाले हैं उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी नंबर 1 पर लगे हैं, लेकिन किंग पिन आज भी चुप है। जनता पूछती है, ना भ्रष्ट दवा मंत्री को हटाया और ना भ्रष्ट दारू मंत्री को। सुबह सुबह एक आरोप लगा दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तोड़ करके बीजेपी में आ जाइए, सारे केस बंद। अब ये मनीष सिसोदिया जी सुबह सुबह क्या भांग खाकर उठते हैं, क्या सुबह सुबह अपनी 1+1 की जो स्कीम है शराब की, क्या उसको ये अवेल कर लेते हैं? मैं नहीं समझ पाता।
उनको सुबह सुबह उठकर प्राणायाम करना चाहिए, उनको कपालभाति करनी चाहिए, भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, तो उनकी बुद्धि, उनका मन वो शांत रहेगा। मगर सुबह सुबह बेबुनियाद कुछ भी बोल देना, रात को क्या सपना उन्होंने देखा और सुबह वो क्या बोल रहे हैं, एक दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री ऐसी बेतुकी बात अगर करे तो उसका कोई क्या जवाब दे। तो उनको नाम बताना चाहिए कि उनको जो है किस आदमी ने ऑफ़र किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। वो कोई ऐसा मंत्री केजरीवाल साहब ने बनाया जिसको 2 डिपार्टमेंट दिए, एक शिक्षा मंत्री बनाया और एक शराब मंत्री। उन्होंने स्कूलों के पास ठेके खोल दिए, मंदिरों और धार्मिक स्थलों के पास खोल दिए, उन्होंने रिहायशी कॉलोनी में खोल दिए। इस बात का जवाब नहीं है उनके पास। जो आपने शराब माफिया दोस्तों को पैसा दिया है, दिल्ली के खजाने को लुटाकर दिया है, आखिर उसके जिम्मेदार जो है वो सिसोदिया है। और इसीलिए वो इस तरह की बातें करते रहते कि अब ये होगा, अब ये गिरफ्तार होंगे, अब वो गिरफ्तार होंगे। क्योंकि भाई जिसने काले कारनामे कर रखे हैं, जिसके सामने कर रखे, उन्हें पता है कि हमने कब साइन किए थे किस फाइल पर। Now, amid Delhi's Liquorgate war, a furious face-off has emerged on the cyberspace, with BJP and the TMC launching an intense video war, a meme war of sorts. BJP now in that video has taken a jibe against Arvind Kejriwal, releasing a video titled Golmaal Hai. This video shows a Kejriwal lookalike distributing freebies only to divert attention from its misrule. This is the latest in a series of video war between Aam Aadmi Party and the BJP. The AAP has also released a meme which shows Manish Sisodia shielding Delhi's education model by blocking off arrows in the form of central agencies. This video, in fact, Aam Aadmi Party's video that you see on your screens here, tries to project Deputy Chief Minister Manish Sisodia as the fighter pitted against the central government, who's trying desperately to dismantle the Aam Aadmi Party's good work. The AAP had earlier released a video of Prime Minister Modi slamming the CBI's misuse while in opposition. It seems like this meme war now only exploding. ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, और कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए सीबीआई के जो लोग उनके हथियार बन रहे हैं और गुजरात सरकार के हमारे अफसरों को परेशान करने में लगे हैं, हमारे मंत्रियों को जेल में डालने के षड्यंत्र कर रहे हैं, उन सबको मैं चेतावनी देता हूं कि लोकतंत्र की मर्यादाओं में आप उचित कार्यवाही नहीं कर रहे। सत्य को सत्य के रूप में लोगों के सामने लाना चाहिए, झूठ फैला करके। Now, moving on, fresh allegations by the BJP in Delhi's excise policy row. The BJP now alleges that TRS has a link with this excise policy framework in Delhi with regards to the Aam Aadmi Party. BJP's Parvesh Verma has said that members of KCR's family have met with Manish Sisodia at a 5-star hotel. BJP has alleged that TRS helped Sisodia with this formulation of the liquor policy. TRS has countered BJP's charges, saying that these claims are absolutely false and that the BJP is only using central agencies to carry out political vendetta, and that the ED, CBI are all been guided by BJP leaders. TRS has questioned the government that if evidence of involvement of individuals related to the KCR family was really found, how did BJP MP get those names then? The new allegations have turned into a fresh firestorm as BJP eyes the upcoming assembly elections in Telangana. KCR की बेटी जो हैं, उनका इसमें रोल है, के कविता का इसमें रोल है, और के कविता जो है मीटिंगें करती रही ओबराय इसमें। के कविता जो है शराब के लोगों से, चड्डा परिवार से उन्होंने मीटिंग की, चड्डा परिवार का पैसा लेके उन्होंने फैक्ट्री डीसील करा के दी उनकी। तो ये सारा के कविता का रोल रहा है पैसे लेने देने में बहुत बड़ा।
All right, let me quickly cut across to Gaurav Bhatia of the BJP speaking at a press conference. धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जो आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार और कट्टर बेईमानी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से उजागर कर रही है, तो ये स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इनके पास जनता के प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है। और जिस तरह से प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हम लोग उठाते हैं, उसके बाद अलग अलग वक्तव्य सामने आते हैं जिनमें ना ईमानदारी है ना तालमेल है। और ये कहना गलत नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल जी को ये गलतफहमी है कि इन प्रश्नों के उत्तर से बच जाओ। जैसे होगा आप इस पे ना नहीं आप कोई Gaurav Bhatia, BJP spokesperson, who is just about speaking on the excise policy corruption. We're seeing again press conference after press conference. First, the Aam Aadmi Party's Saurabh Bharadwaj came out condemning the BJP, saying that they've invited Manish Sisodia to join the BJP, and if he did, then all the ED probe against him will end. Now, it seems like the BJP responding to that. We're going to track those developments. At this point, Manish Sisodia, who's currently under ED and CBI scanner, we are looking at visuals coming in of the Aam Aadmi. Coming in from outside Arvind Kejriwal's residence. Who are they? These are BJP members in Delhi protesting outside Arvind Kejriwal's residence. Remember, heat mounting on the Aam Aadmi Party in Delhi over the excise policy corruption allegations. CBI probing this matter while BJP gathers outside Arvind Kejriwal's residence in protest and accusing the party of being corrupt. Visuals right outside Arvind Kejriwal's residence that we're currently tracking. These are BJP leaders who've gathered outside Arvind Kejriwal's home protesting against the liquor policy's corruption allegations mounting on the Aam Aadmi Party. In fact, Manish Sisodia, in the eye of the storm, he is the Deputy Chief Minister, also the Excise Minister, who has drawn out and rolled out the excise policy after much criticism, revoked it. And now the CBI investigating corruption allegations after Delhi LG and Chief Secretary informed the CBI that there could be something amiss when it comes to Delhi's liquor policy, saying that kickbacks were given by liquor licensees to obtain licenses and, of course, extend their tenure as well. Crores of rupees swindled is the allegation against Manish Sisodia and the Aam Aadmi Party in the name of the excise policy. Manish Sisodia, of course, has denied these allegations, saying that he is, the BJP, of course, is threatened with the fact that Aam Aadmi Party is the strongest contender to the BJP in states like Gujarat and even nationally. They're fearing the growth of the Aam Aadmi Party, and that's why they're using central agencies to arm twist them. These are responses coming from the Aam Aadmi Party, but of course, a corruption allegation probed by the CBI, handed over to the Enforcement Directorate. ED now filing a money laundering case against those accused.
will probe into layers of this liquor policy formulation, how the policy was rolled out, giving out leeway to several license holders and waiving off, quite some waiver given to many of those, waiver given to liquor lobby itself, worth 143 crores. Manish Sisodia is accused number 1 in the CBI FIR with this case. Right outside Arvind Kejriwal's residence, BJP protesting. Tushar joining us live for more. Tushar, over to you. Go on, Tushar. देखिए आपको तस्वीरें दिखा दूं कि तमाम जो बीजेपी का गुस्सा है वो सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, डिप्टी सीएम उनके यहाँ पर पुतले को आग के हवाले जो है वो किया जा रहा है और ये लगातार विरोध दिल्ली की सड़कों पर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। तस्वीरें कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये पुतले जो है वो सत्येंद्र जैन और डिप्टी सीएम सिसोदिया का यहाँ पर बीजेपी जो है वो नजर आ रही है। मैं कैमरा पर्सन राजा से कहूंगा की तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरीके से बीजेपी अपनी इस पूरे मुद्दे पर घेरती हुई यहाँ पर तमाम जो सरकार है उसको यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए आदेश गुप्ता यहाँ पर मौजूद है, आदेश गुप्ता से बातचीत करेंगे। आदेश जी, पुतलों को आग लगाने का, पुतले आग लगाई है किस? दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार और उसके जो 3 सरगना अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ये तीनों ने मिलकर दिल्ली के अंदर शराब का भ्रष्टाचार किया है और ऐसे शराब माफियाओं के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने वाले मंत्री जब तक बर्खास्त नहीं होते हैं तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली के स्कूलों के पास शराब के ठेके खोलने वाले, मंदिर और विद्यालयों के पास शराब के ठेके खोलने वाले और शराब माफियाओं को करोड़ों रुपए उनके माफ करने वाले, ऐसे शराब माफियाओं को मिलकर दिल्ली के खजाने को लुटाने वाले ऐसे शराब और शिक्षा मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, इसको इस्तीफा देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। दिल्ली सरकार भ्रष्टाचारी, शराब के मामले में माफियाओं का समर्थन करने वाली सरकार है। दिल्ली की जनता की इनको चिंता है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर हमलावर जो है वो बीजेपी नजर आ रही है। यहाँ पर पुतलों को आग के हवाले जो है वो किया जा रहा है। बीजेपी एकाएक सड़कों पर जो है वो प्रदर्शन करती हुई यहाँ पर नजर आएगी। तमाम जो पुतले उनको यहाँ पर आग के हवाले किया गया। लगातार बीजेपी का गुस्सा आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। सब यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए तस्वीरें कि किस तरीके से बैरिकेडिंग पर तमाम जो लोग हैं वहाँ पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने उनको आगे जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल जो है वो नहीं दी और बीजेपी लगातार प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रही है। Party of the BJP speaking at a press conference on the same allegations of excise policy corruption involving AAP. आप सब जानते हैं कि 24 घंटे की मोहलत कल दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो, तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे दीजिए। जनता से आप आंखें नहीं मिला पाएंगे, लेकिन कम से कम प्रश्नों के उत्तर तो दीजिए। 24 घंटे पूरे हो गए, उत्तर में आया एक ट्वीट में फिर वही अनर्गल बातें। तो इसलिए हमने सोचा कि जनता के जो सवाल हैं पुनः आपके समक्ष रखें और ये दिखाएं कि ये छोटे भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ये कीर्तिमान बना रहे हैं भ्रष्टाचार का। आबकारी नीति कैसी हो, इसकी एक कमेटी का गठन हुआ और आज की प्रेस वार्ता में प्रमुख बिंदु यही रहेगा, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया। सिफारिश हो रही है क्या और नीति ला रहे हैं क्या। और चुनौती देके कहता हूं, अगले 24 घंटे में जो प्रश्न उठा रहे हैं हम लोग, जनता को यह जानने का हक है
ये जो आबकारी नीति आप सिफारिशों को अनदेखा करके लाए, लूट खसोट मचाने के लिए आपने ऐसा क्यों किया? तो आबकारी नीति कहती है, सिफारिश जो हुई, इस कमेटी में वरिष्ठ लोग सम्मिलित थे। पहले मैं बताऊंगा कि कमेटी की सिफारिश क्या थी। कमेटी ने कहा जो होलसेल का ठेका होगा L1, ये सरकार अपने पास रखे। और मैं पढ़ रहा हूं 1.1.1 एक वाक्य और अरविंद केजरीवाल का झूठ भी पकड़ा जाएगा और भ्रष्टाचार भी उजागर हो जाएगा। IMFL trade should be revamped by bringing the entire wholesale operations under one government entity. क्यों? जब सरकार की संस्था के तत्वाधान में होगा, पारदर्शिता भी रहेगी, घोटाला भी नहीं होगा, कार्टेल भी नहीं बनेगा, और जो मुनाफा होगा वो मुनाफा राजकीय कोष में आएगा, जनता के लिए लगेगा। लेकिन किया क्या? सिफारिश ये, और जो नीति आई, सरकार में रहते हुए ये पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है जिनको सरकारी संस्थाओं से ही नफरत है। इन्होंने ये जो बड़ा कारोबार था, एक बड़ा घोटाला करने के लिए निजी लोगों को दे दिया। सरकार निजी, सरकार में पैसा जनता के पास, निजी में वापसी होके अरविंद केजरीवाल जी की तिजोरी में। सर्वोच्च न्यायालय का कानून है, एक्साइज एक्ट है, GNCTD एक्ट है। आपने इतना बड़ा उल्लंघन किया। जो सिफारिश थी उसका विपरीत करते हुए कोई टेंडर नहीं, कोई पब्लिक नोटिस नहीं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो संसाधन सरकार के होंगे उसमें सम्मिलित होने का अवसर हर नागरिक को देना होगा। द स्टेट लार्जेस्ट has to be distributed in a manner which is most beneficial for the people of the country. अरविंद केजरीवाल जी, मुझे पता है आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, आप निरुत्तर हैं। जनता ये पूछ रही है आपने क्यों नहीं कोई पब्लिक नोटिस दिया? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? और सबसे बड़ी बात है, जो कमीशन था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया निजी व्यक्ति को। क्यों? यह पॉलिसी का कागज है। मैं समझता हूं यह सिफारिश है, सरकार की संस्था निजी। आपने कोई पब्लिक नोटिस नहीं दिया, टेंडर नहीं निकाला, क्योंकि आप चाहते थे कुछ चुने हुए विशेष व्यक्ति जो कि आपकी तिजोरी भरे उनको ही टेंडर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जब कमीशन 2% थी उसको 12% करा, तो ये जो राजस्व का नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? कट्टर बेईमान सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी, आप ये तो बता दीजिए। इसके बाद यह सिफारिश की गई है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा आता है, एक लाइन पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात रखती है तथ्यों के आधार पे, बड़ी ईमानदारी से, जनता की बुलंद आवाज बन के रखती है,
और जो भ्रष्टाचारी होते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग होते हैं, ये थर-थर कांपते हैं। मैं प्रमाण लेके आया हूं, सिफारिश हुई कि जिन व्यक्ति को रिटेल वेंडिंग का ठेका जाएगा वो लॉटरी सिस्टम से जाएगा। देयर शुड बी अ न्यू लॉटरी, इट इज रिकमेंडेड। और इसकी वजह भी वही है, जब लॉटरी होगी तो भाग लेने वालों की संख्या ज्यादा होगी, ज्यादा राजस्व आएगा। लेकिन किया क्या गया, पूरे दिल्ली क्षेत्र को 32 जोन में बांटा गया, लॉटरी नहीं की गई और 16 ऐसे शराब के कारोबारी जो कि इनके साथ मिली भगत में इनको रुपया देंगे, उनका चयन करके हर किसी को 2 जोन दे दिए गए। अब यह बड़ा चिंताजनक है कि आप अपनी आबकारी नीति जो बनाते हैं उसमें सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका विवेक जरूरी नहीं है। जिनको भ्रष्टाचार करना है वो बता रहे हैं कि आबकारी नीति में ये वाला क्लॉज हमें पसंद नहीं है, 30 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है उसको माफ कर दीजिए, 144 करोड़ रुपए जो देने हैं सरकार को उसको माफ कर दीजिए। ये तभी होता है अरविंद केजरीवाल जी, जिसको जनता ने जिम्मेदारी दी हो ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए, वो खुद बेईमान हो जाए। और तीसरी बड़ी बात, ये बहुत अहम है, ये स्पष्ट था सिफारिशों में कि 10% जो है वो लाइसेंस फीस को बढ़ाया जाएगा रिन्यूअल पे। यहां पे और बड़ी एक लूट हुई, सिफारिश को आबकारी नीति में लाया गया और लिखा गया add 10% to account for year-on-year growth 10% of clause 6 में जो है उन्होंने बताया कैसे रेवेन्यू होगा। और इसके साथ उन्होंने कहा कि 10% बढ़नी चाहिए। लेकिन जब इसको लागू करने की बात आई, दबाव में आते हुए कहीं हमारी ये काली कमाई रुक ना जाए, ये 10% जो है वो लिया ही नहीं गया। इससे अनुमान है ये करीब 900 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व को हुआ है। 900 करोड़ रुपए केवल इस 10% जो बढ़ोतरी होनी थी रिन्यूअल पे फीस में, वो ना लेने से। अब ये सारी बातें कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा, जैसा हमने कल भी कहा था, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं 1 करोड़ का जो नंबर है वो एफआईआर में लिखा है। 1 करोड़ हो या 900 करोड़ हो या 9000 करोड़ हो या इससे भी ज्यादा बढ़कर हो, ये तो विवेचना का विषय है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आएगी। और मनीष सिसोदिया जी आप कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं, अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट देते हैं ये कट्टर ईमानदार हैं। ये बात अलग है कि आजकल जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। और ये भी बात स्पष्ट कर दें, अगर विवेचना पूरी तरह से हुई
सामने आई और आपका भ्रष्टाचार सामने आया तो आप कानून के सामने झुकेंगे भी और आपका भ्रष्टाचार रुकेगा भी। गलतफहमी में मत रहिएगा। कानून और जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, पूरी तत्परता से कर रही हैं। मैं 24 घंटे पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको देता हूं, इस चुनौती के साथ कि अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, जैसा आप अपने आप को प्रमाणित करते हैं, बाहर निकल कर आइए और जो सवाल जनता के हैं उनका उत्तर जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है इन सभी गंभीर आरोपों का उत्तर न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और इश्तिहार का बजट बढ़ाकर टिम्बकटू टाइम्स में भी आप एक इश्तिहार दे के बच जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। सत्य बाहर आएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम जी से कहूंगा कि आगे की कार्रवाई करें। आदरणीय रमेश बिदुड़ी जी से आग्रह है कि आपको संबोधित करें। मैं सभी का All right, that's the BJP now speaking on the allegations of corruption against Manish Sisodia and Arvind Kejriwal. कि जिन तथ्यों के आधार पर वो बार बार चीज को डाइवर्ट करके और विषय से भटकाना चाहते हैं, गलत स्टेटमेंट देकर गलत ट्वीट करने के बाद वो सोचते हैं कि दिल्ली वासियों का, देशवासियों का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। क्या कह रहे होंगे वो लोग 80% जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से 2G स्पेक्ट्रम से लेकर कोयल घोटाले से लेकर देश को बर्बाद किया 10 साल में कांग्रेस ने, उससे त्रस्त होकर लोग इनके ऊपर विश्वास करके इनके साथ लगे थे। उनकी आत्मा रो रही है। उन्होंने सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। Honorable KCR Garu, who is the Chief Minister of Telangana, has been very vocal and has been very sharp in criticizing the policies of Bharatiya Janata Party government. I believe, we believe, and today people of Telangana believe that rattled by the allegations made by Honorable CM, the Bharatiya Janata Party is trying to malign the reputation of our family. I just want to say this to the nation today. We are the family of fighters. We fought for Telangana. We were on the streets. We were with the people. We never go back in a fight. Today, if you just want to put us down by throwing some baseless allegations at us, it is just going to remain baseless. Nothing is going to come out of it. Today you are in power. You want to use agencies. You want to use media. You want to use everything possible to curtail the voice of opposition. I am so sorry. You are messing with the wrong people. We are not the people who are going to calm down. We are not the people who are going to step down. We are fighters. Telangana people are known to put up a fight and make sure the fight ends in a prosperous result. Tomorrow we want the country to prosper as Telangana is prospering today, and we will firmly stand on this. I once again state I have nothing to do with the Delhi liquor investigation that is going on. This is a baseless allegation made on me by Bharatiya Janata Party just to make sure they malign the reputation of our family, and I'm so sorry to tell them it is not going to work. Thank you. Jai Telangana. Jai Telangana. Jai Telangana. Didi. His daughter, they're hitting out at the BJP. New twists and turns coming to fore in the Delhi excise policy, with the BJP now dragging KCR's daughter, claiming that she was the one responsible to formulate the liquor policy for the Aam Aadmi Party. Kavitha says absolutely no links to the liquor policy in Delhi. क्या रिश्तेदारी हो गई आपकी अर्जुन पांडे जी से कि जिन लोगों के साथ ओबराय में बैठकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने दफ्तर में ना बुलाकर उनको नवाजा जा रहा था, ओबराय में डील की जा रही थी। 32 जो जोन थे, हर जोन के अंदर हर जोन के देने वाले व्यक्ति को जो 2-2 जोन के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उनसे सीधा 3-3 करोड़ रुपया आपने लिया नहीं लिया, ये बताइए क्या रिश्तेदारी थी उन जोन के 16 जोनों से।
और उसके बाद जो दुकानदार थे, उन दुकानदार से जो रिटेल के दुकानदार है, जब सीबीआई गहराई में जाएगी और पूछेगी तो जो रिटेल के दुकानदार जिस जोन में अलग दुकानदार थे, क्या आपके मनीष सिसोदिया जी ने आपसे केजरीवाल साहब बात करके ये तय नहीं किया था कि हर दुकानदार 2.5 लाख रुपए महीने हमको देगा, इसलिए हमने उनका कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। वो दुकानदार भी सामने आएंगे जिन लोगों से आपने 2.5 लाख रुपए मंथली के लेने तय किए थे अपने अरोड़ा बंधु एंड कंपनी से इकट्ठे करवाने के बाद। आपसे मैं ये पूछना चाहते हैं हम केजरीवाल साहब से, जवाब उनके पास होता नहीं है। डाइवर्ट करने की बात आप कह रहे हैं कि बार बार ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अब पूरा देश जान चुका है, आपके फॉलोअर भी जान चुके हैं कि जब अच्छी पॉलिसी थी तो आपने इसको विड्रॉ क्यों किया, जो बार बार सिसोदिया साहब कहते हैं और आप लोग मिलकर कहते हैं। आपने जो इन लोगों को इंटरनेशनल बियर, जिसका आपने कॉन्टेक्ट के अंदर जब उनसे ओबराय में बैठ के मीटिंग की तय की, तो इंटरनेशनल बियर के ऊपर 50 रुपए पेटी के हिसाब से दिल्ली की जनता के लूटने के लिए वो कीमत क्यों बढ़ाई गई, ये एक सवाल उठता है। बताइए आप, इसमें आपका कोई लेन देन नहीं था। 144 करोड़ रुपया 30 क्यों छोड़े, वो आपको गौरव जी ने बता दिया है। इसलिए भाइयों, हम एक केवल जानना चाहते हैं केजरीवाल साहब से, अगर कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी हैं तो कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी को स्क्रिप्ट लिखकर आप जब टीवी पर बैठाते हैं, बैठाने के बाद इंडिपेंडेंटली आप मनीष सिसोदिया को क्यों ये बात नहीं कह रहे हो कि सतेंद्र जैन की तो बीवी ने कह दिया है कि केजरीवाल साहब अगर हमें मंत्रालय से हटा दिया गया तो सुन लो आप, ये भी एक जांच का विषय, केजरीवाल के फोन का चेक होना चाहिए कि उनकी बीवी ने धमकी दी कि सतेंद्र जैन को मंत्री अगर हटा दिया गया, सारा पैसा हवाला के माध्यम से आपके पास पहुंचा है मंत्री जी सतेंद्र को बनने के लिए, हम आपका नाम कोर्ट तक कर देंगे। अभी एक नई बात निकल कर आई है, गिड़गिड़ा रहे सिसोदिया जी के पैरों में कि सिसोदिया साहब मैं बाहर रहूंगा तो मना लूंगा, क्रेडिबिलिटी तो देश की मैंने जीते, तुम मेरी वजह से मंत्री हो। इसका भी जवाब दें कि क्या सिसोदिया को आपने एश्योर नहीं किया है और सिसोदिया ने आपको एश्योर नहीं किया है कि मैं भाजपा में, मुझे कॉल किया जा रहा है, बुला रहे हैं और मैं ईमानदार आदमी हूं। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, देशद्रोही व्यक्ति को, जो सीए के तरह सर तन से कलम करने वालों का मदद करने वाला सिसोदिया, भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी न छुएगी। भाजपा ऐसे लोगों को जो किसानों के रूप में यहां पर खालिस्तानी बॉर्डर पर आकर बैठ गए थे, उनकी समर्थन देकर उनके साथ चलेगी। भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी नहीं छुएगी। जो राष्ट्र विरोधी लोग होंगे, अपने केवल सत्ता पर बना रहने के लिए कितने भी गिर सकते हैं, ये भाजपा आपसे पूछना चाहती है। इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ एक्साइज पॉलिसी में, तुम्हारी बनाई पॉलिसी में, ये आपने करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया था और एफआईआर में कुछ नहीं है। अफसर बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे। अरे भाई, अफसर तभी बढ़िया होते हैं, फल तभी बढ़िया होता है जब वृक्ष बढ़िया होता है। अगर उन अफसरों को चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेटर मोदी साहब अच्छे हैं तो अफसर अच्छे हैं। आपकी तरह चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट करके, उन अफसरों को दबाकर, ब्लैकमेल करके वो काम नहीं होता है। अफसर अपने काम का ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं। वो अफसर नहीं है कि आप जीवन में कभी कमिश्नर नहीं रहे इनकम टैक्स के, और आपने सबसे बड़ा झूठ बोला कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, मैं भ्रष्टाचारी होता तो करोड़ों लूट लेता। ये बताइए आप इनकम टैक्स कमिश्नर कौन से सन में थे? कितना बड़ा झूठ आपने धोखा लोगों को दिया है। अब ये झूठ आपके एक्सपोज हो रहे हैं। आप सब लोगों के माध्यम से हम ये बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि सब देशवासी केजरीवाल से पूछे, बाद की बातें बाद में करेंगे, इधर उधर की बातें ना करो। ये बताओ एक्साइज पॉलिसी के अंदर क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्रश्न आप देखिए कि ये जो है वो सतेंद्र जैन और सिसोदिया का यहाँ पर बीजेपी जो है वो All right, that's the BJP unit in Delhi hitting out at the Kejriwal government, saying if this allegation isn't true, then why have some of the people who are involved in this case fled? Gaurav Bhatia also responding on the same. Listen in. और उधर से उत्तर नहीं आ रहा। और आपने कहा कि कैसे इंसाफ होगा, जनता को इंसाफ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी और इस देश में न्यायालय हैं, विवेचना चल रही है, उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, इसीलिए मैं उस क्षेत्र में नहीं जा रहा। लेकिन कुछ
बड़े प्रश्न जरूर उठते हैं। किसी लेख को दिखा देना आपके घोटाले का उत्तर नहीं हो सकता। उस घोटाले को छोटा बता के 1 करोड़ का कह देना एफआईआर में लिखा है उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, ये उत्तर नहीं हो सकता। और अरविंद केजरीवाल जी शीशे में खुद को देख के बड़ा नेता समझते हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, जनता की आंखों से खुद को एक बार देखें तो बहुत बौने मिलेंगे, बहुत बेईमान मिलेंगे और बहुत कायर मिलेंगे, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर नहीं दें। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि अभी तो बहुत कार्ड खेले जाएंगे। विक्टिम कार्ड भी है, बाकी कार्ड भी है, लेकिन ईमानदारी की नीयत से इसी मंच से बार बार ये सवाल पूछेंगे और जो सवाल सामने आएंगे जनता की आवाज बन के हम लोग पूछते रहेंगे। और जब भ्रष्टाचार होता है तो उससे प्रताड़ित हर व्यक्ति होता है। ये भ्रष्टाचार का नया फॉर्मूला आम आदमी पार्टी का हो सकता है, जिसमें वो जात लाएं, धर्म लाएं, विदेशी ताकतें लाएं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और अरविंद केजरीवाल जी की चुप्पी ये सिद्ध कर रही है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान हैं। As expected, BJP, of course, mounting pressure on the Aam Aadmi Party to speak up on the allegations leveled against them, calling Arvind Kejriwal a thorough, corrupt man. Sushant joining us, who's tracking those developments right outside Kejriwal's residence. Sushant, a quick word from you on the kind of protest that we see here. BJP members there have gherowed Arvind Kejriwal's residence in Delhi. They're protesting against him, calling him a corrupt man. Show us more. देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आज बीजेपी ने प्रचंड प्रदर्शन किया था। एक्साइज पूरे मामले के अंदर अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है। एकाएक बीजेपी आक्रामक है। अभी आप देखेंगे कि जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आवास है, उनके घर के पास बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को जो है वो यहाँ पर डिटेन कर लिया है। कई सारी बैरिकेडिंग जो है वो तोड़ी थी बीजेपी कार्यकर्ताओं से। आक्रोश जो है वो बीजेपी का साफ तौर पर आज दिल्ली की सड़कों पर जो है वो दिखाई दे रहा था। और लगातार बीजेपी चाह रही है कि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी को जो है वो हर हाल में घेरा जाए। और यही वजह है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार की जा रही है ताकि सरकार पर जो है वो लगातार दबाव बनाया जाए, क्योंकि इस पूरे मामले पर बीजेपी को एक बड़ा कहा जाए एक जड़ी बूटी टाइप का जो है वो हाथ में लगा है। और ऐसे में बीजेपी इस पूरे मामले को बुनाने में लगी है, क्योंकि सीबीआई मामले में सीबीआई ने जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर रेड करी, 15 घंटे तक रेड चली। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी पिछले कई दिनों से, जब से ये पॉलिसी आई थी 2021 के अंदर 17 नवंबर को, तब से बीजेपी लगातार इस पूरी पॉलिसी को लेकर के सवाल जो है वो खड़े कर रही थी आम आदमी पार्टी पर। उन्हीं को लेकर के सीबीआई ने जो है वो अब इस पूरे मामले की छानबीन जो है वो शुरू की गई है। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से पूछताछ हुई है। इस पूरे मामले पर अब जो है वो घेरने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी को जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। जी सुशांत, उनसे कोई अगर है आपके पीछे तो बात कीजिए। बीजेपी नेता क्या रहे हैं? We're looking at effigies being burnt of Arvind Kejriwal, the chief minister, as well as his deputy Manish Sisodia. उनकी चुप्पी भी बहुत सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो बोल नहीं रहे हैं एलिगेशंस के बारे में। वो सिर्फ बाकी चीज़ों के बारे में, उनकी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, मगर ये जो एलिगेशंस है करप्शन की, उसके बारे में वो चुप ही है।
देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि लगातार बीजेपी इस पूरे मामले पर साफ तौर पर यह कहती नजर आ रही है कि जो लिकर पॉलिसी का मुद्दा है, जिस पर सरकार ने खुद महज 8 महीने पीछे जो है वो रोल बैक कर लिया गया, जिस पर सरकार ये कहती थी कि इससे 10,000 करोड़ का फायदा जो है वो सरकार को होगा, राजस्व आएगा, लेकिन सरकार को सिर्फ 1500 करोड़ रुपए ही आ पाया। सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बीजेपी कह रही है कि इस पूरे मुद्दे पर सरकार जो है वो अपना पक्ष रखे, सामने आए कि आखिरकार वो इस पूरे मामले पर चुप क्यों है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर डिफेंड जो है वो शिक्षा के मॉडल पर, हेल्थ के मॉडल पर जो है वो करती हुई नजर आ रही है कि शिक्षा के मॉडल पर शिक्षा के मंत्री को जो है वो सीबीआई जो है वो गिरफ्तार। राइट, स्टे विद अस। आप संजय सिंह has spoken exclusively to India Today's Pankaj Jain. Let's cut across. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गुजरात पहुंच रहे हैं और इससे पहले उन्होंने बड़ा दावा किया है कि भाजपा उन्हें अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाना चाहती है और इसके बजाय वो सीबीआई और ईडी के जो मामले हैं उसे खत्म कर देगी। ये बड़ा दावा किया है मनीष सिसोदिया ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। बड़ा दावा जो किया गया है, क्या कोई कॉल आया, मैसेज आया, व्हाट्सएप आया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों का चेहरा सामने आया है। मनीष सिसोदिया जी के साथ वही प्रयोग करने जा रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो प्रयोग उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो प्रयोग उन्होंने बंगाल में किया, जो प्रयोग उन्होंने गोवा में किया, अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, वही प्रयोग वो करना चाह रहे थे। ईडी और सीबीआई की जांच दरअसल मनीष सिसोदिया को तोड़ने की कोशिश थी, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश थी। इस बात का खुलासा मनीष सिसोदिया जी ने किया है। और जो आप पूछ रहे हैं तरीका, जिन तरीकों से नारायण राणे को तोड़ा, जिन तरीकों से अजीत पवार को तोड़ा, जिन तरीकों से हेमंत बिश्व शर्मा को तोड़ा, जिन तरीकों से मुकुल राय को तोड़ा, वही तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पे कहा है, महाराणा प्रताप का वंशज हूं, टूटूंगा नहीं, लड़ूंगा नहीं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी हैं या बाकी जो तमाम नेताओं का जिक्र आम आदमी पार्टी कर रही है, वो तो एक पैटर्न हो गया। कोई कॉल आए, मैसेज आए तो सबूत एक तरह से दिया जाता है कि देखिए ये हमारे पास सबूत है कि कॉल आया और हमसे कनेक्ट होने की कोशिश की गई। ऐसा है कि मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, ये लोग कौन से लोग थे बताइए? नारद स्टिंग ऑपरेशन हुआ, भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के सड़कों पर उतरी उनके खिलाफ। शारदा स्कैम हुआ, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी। कांग्रेस में थे हेमंत बिश्व शर्मा, वाटर स्कैम हुआ, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी। अजीत पवार के स्कैम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरी। बाद में इन्हीं लोगों पे ईडी सीबीआई डाल के और इनको तोड़ के अपने साथ शामिल कर लिया। तो मनीष सिसोदिया को तोड़ने की कोशिश है। हाँ, बिल्कुल कोशिश है। उन्होंने तो खुद साफ कह दिया कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि ईडी सीबीआई के सारे जांच खत्म कर देंगे। हम लोग इन जांचों से डरने वाले लोग नहीं है। ये जो प्रयोग इन्होंने दूसरे राज्यों में किया वो दिल्ली में सफल होने वाला नहीं है। भाजपाइयों को कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र का जिक्र आपने किया, क्या दिल्ली की सरकार भी इस तरह से खतरे में है? अगर इस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं खतरे में कैसे होगी कि कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक आदमी जब टूटने के लिए तैयार ही नहीं है, या अच्छा आप बताइए, दिनेश मोहनिया के साथ क्या किया था इन्होंने? उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। वो शेर सिंह डागर का स्टिंग ऑपरेशन आप भूल गए? जो हमारी पार्टी ने खुद किया था उनका स्टिंग ऑपरेशन आप भूल गए कि किस तरीके से पैसे और पद का लालच देके दिनेश मोहनिया को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। पहले भी प्रयोग किया, फिर विफल रहा, इस बार भी प्रयोग किया, विफल रहा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोग बिकाऊ नहीं है, आम आदमी पार्टी के लोग लड़ने वाले हैं। हम आंदोलन की कोख से निकले हैं। तो भाजपाइयों का असली चेहरा सामने आया है। ये ईडी सीबीआई की जांच के पीछे का सच सामने आया है। गुजरात भी पहुंचे हैं मनीष सिसोदिया, तो अब क्या एक रणनीति का हिस्सा हो गया है ये जो पूरी रेड हुई है? ये एक षड्यंत्र थी, बीजेपी का षड्यंत्र का हिस्सा था। इस घटना से जो आज मनीष जी ने बताया, इससे यह साबित होता है कि एक गहरा और बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का था, ईडी सीबीआई की जांच करा के मनीष सिसोदिया को तोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह। सीधे तौर पर षड्यंत्र बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, और देखना होगा कि क्या कुछ रुख आगे आम आदमी पार्टी अपनाती है इस पूरे दावे के बाद। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ पंकज जैन।
Let me cut across to Shreya joining us live for more. Shreya, give us an understanding on this protest that we see outside Arvind Kejriwal's residence. Burning of effigies there. Kejriwal's effigy, Manish Sisodia's effigy is being burnt. BJP, of course, stepping up the heat against the Aam Aadmi Party in Delhi. Well, exactly, Sonabila. You know, since the last 4 days, ever since the Central Bureau of Investigation registered an FIR against Manish Sisodia and 14 others, we've seen this kind of politics playing out between the Aam Aadmi Party and the BJP. At one front, the Aam Aadmi Party is calling this vendetta politics, and now Sanjay Singh is also saying that this is a tactic used by the BJP to break the Aam Aadmi Party. The BJP, however, says that there has been a huge corruption in the Delhi excise policy, and that's the reason they say that Manish Sisodia and the likes of who was involved should be investigated. The CBI is already investigating the matter. On the other hand, they've also given the documents and the FIR to ED. ED is under its process to register a case, and there will be 2 simultaneous inquiries. But amidst all these investigations, the bitter battle that's being playing out is between the Aam Aadmi Party and the Bharatiya Janata Party. Bitter words exchanged. At one point, we saw that the BJP was calling the Aam Aadmi Party a Reverie and Bevery Sarkar. On the other hand, the Aam Aadmi Party is firm. They say this is nothing but to break the Aam Aadmi Party as well as a pure vendetta politics, as they say that Arvind Kejriwal has become the top challenger against Narendra Modi. Stay with us. I'm going to cut across to reactions on the same. भी कर देंगे और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में जब जाती है और वहां ये कमजोर होती है, वहां ये नंबर 2, नंबर 3 को ही टारगेट करती है। इसी मोडस ऑपरेंडी से आप रिसर्च करिएगा, हर जगह इस तरह से एक कैंपेन चलाया जाता है, उसको बदनाम किया जाता है, उसको ईडी, सीबीआई और जेल का डर दिखाया जाता है, और फिर भारतीय जनता पार्टी में जब वो आ जाते हैं फिर वो सारे मुकदमे खत्म हो जाते हैं। एक सवाल सर और है, पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा, अब उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस की चुप्पी हैरान कर रही है सिसोदिया जी पर सीबीआई जांच को लेकर। तो क्या विपक्ष का आपके साथ नहीं होना कुछ विपक्षी पार्टियों को अचरज में डाल रहा है, या विपक्ष आपके साथ नहीं है? देखिए, ये समस्या कांग्रेस पार्टी की आज से नहीं है, ये 2015 से है, जब से हमारी सरकार बनी। 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा, उस वक्त कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो अजय माखन होते थे, और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चीयर लीडर अजय माखन ही रहे। जब जब शुंगलू कमेटी ने हमारी 450 फाइलें ली और कहा गया कि अब केजरीवाल खत्म हो गए, इनका भ्रष्टाचार खुल जाएगा, ये बर्बाद हो जाएंगे, सबसे ज्यादा पैरवी इस चीज की भारतीय कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने की। और आप मेरे पुराने बयान निकाल के देख लीजिए, ट्वीट निकाल के देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देख लीजिए, मैंने शुरू से ये कहा कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रयोग कर रही है। हमारे पास जब मुख्यमंत्री के यहाँ छापा मारा गया, तो हमारा पहला राज्य था जब मुख्यमंत्री के यहाँ छापा मारा गया, हमारा पहला राज्य था जहां पे 450 फाइलें एक चुनी हुई सरकार की उठा के एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, शुंगलू कमेटी को दे दी गई कि साहब लो और इसके अंदर भ्रष्टाचार ढूंढो। ये जो हमारे साथ हुआ, हमारे 72 से ज्यादा मुकदमे हमारे विधायकों के ऊपर लगे हैं, जिसके अंदर साबित मुश्किल से एक आध कोई हुआ होगा, बाकी सब में बरी हो गए हैं। तो ये जो प्रयोग हमारे ऊपर हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चीयर लीडर कांग्रेस पार्टी रही, और अब कांग्रेस को एक खामियाजा उठाना पड़ रहा है। बट समस्या अब उनकी ये है कि वो इस केजरीवाल से अपनी नफरत में इतना आगे निकल गए हैं कि वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़े दिखते हैं। जब जब केजरीवाल के ऊपर ईडी और सीबीआई का कोई भी जो है मामला होता है, तो वो मोदी जी की तरफ जो है वो आपको दिखेंगे। छोटा सा कई नाम गिनाए जो पहले दूसरी पार्टी में थे, जिनको लेकर आपका भ्रष्टाचार के आरोपी थे, भाजपा में आने पर अब उन पर कोई जांच नहीं है, तो उस नाम के सहारे आप अपने नेता के खिलाफ सीबीआई जांच का हिम्मत से स्वागत करते हैं, या आपको लगता है कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए? All right. Now, as we continue tracking those developments right outside Arvind Kejriwal's residence, we're looking at Manish Sisodia, Delhi's Deputy Chief Minister, who is currently under heat by the CBI and the Enforcement Directorate, making some serious allegations against the BJP. He said that he's received a message from the Saffron Party asking him
to join the BJP. He says that CBI and ED cases against him will be dropped if he joins the Bharatiya Janata Party. Manish, who is being probed by the CBI in connection with the liquor policy, says that he was a dissident of Maharana Pratap and a Rajput would rather be beheaded instead of bowing down. He said he will never bow down to corrupt conspirators, referring to the BJP. Meanwhile, BJP has slammed Sisodia for invoking Maharana Pratap, says that he has insulted the Rajput community. And amid this uproar on the CBI raids, Manish Sisodia will be joining Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on his visit to poll-bound state of Gujarat. This will be Sisodia's first trip outside the national capital ever since the raids on him. जहां तक ये बात है कि भाजपा आपको शामिल कराना चाहती है और आपके केस खत्म कर देंगे, तो मीडिया में और पॉलिटिकल सर्कल में सबको पता है कि आपने इस केस को खत्म कराने के लिए और बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, किस किस को आपने कोशिश की है अप्रोच करने की, मिलने की, लेकिन आपके लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं, नहीं खुलेंगे। और ये बात आपको पता है, इसीलिए जब कोई चोर पकड़ा जाता है, कोई भ्रष्टाचारी, कोई रिश्वतखोर पकड़ा जाता है, वो कैसे बिलबिलाता है, ऐसे ही आज आप और केजरीवाल बिलबिला रहे हो। कोई चोर, कोई भ्रष्ट, कोई रिश्वतखोर महाराणा प्रताप जी का इस प्रकार नाम ले, ये महाराणा प्रताप का अपमान है। मनीष सिसोदिया जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। राजपूत समाज के कई युवाओं के मेरे पास फोन आ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। इस प्रकार से आपको चोरी पकड़े जाने पर, जेल जाने के समय महाराणा प्रताप जी याद आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। सिसोदिया जी, आपको राजपूत समाज के प्रचंड आक्रोश का सामना करना पड़ेगा इस प्रकार से महाराणा प्रताप जी का अपमान करेंगे। ये जितना बौखलाहट है, ये सब यही बताता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के लंबे और बड़े दलदल में घुस चुके हैं। एजेंसीज को ये सारे का साक्ष्य मिल चुका है, ऐसा लगता है। और अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। मैं भी आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ 2 दिन के लिए गुजरात जा रहा हूँ। 2 दिन गुजरात में अलग अलग जगहों पर रहेंगे और वहाँ भी लोगों से यही अपील करेंगे कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता के लिए, शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर पाई, रोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाई। वहाँ पे महंगाई से लड़ने में लोगों की कमर टूट गई है, उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दें गुजरात के लोग, तो 5 साल में वो करके दिखाएंगे जो गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन में जितना अच्छा काम नहीं देखा होगा। इसके लिए हम आज गुजरात जा रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहा हूँ और जिस तरह से दिल्ली में पिछले 7-8 साल में काम हुए हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे काम किए अरविंद केजरीवाल जी ने, महंगाई से लड़ने में दिल्ली के लोगों की मदद हुई है और परेशानियों से बाहर निकल सके, कि भारत देश का विकास हो सके। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? उनका ध्यान क्या महंगाई पर है? उनका ध्यान का बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पर है? नहीं, उनका ध्यान सिर्फ एक और एक चीज पर है कि कैसे जो उनकी विरोधी पार्टियां हैं, जो दूसरे दल की राज्य सरकारें हैं, उनको साम दाम दंड भेद से कैसे गिराया जाए। हम ये देश भर में देख रहे हैं कि किस तरह से अभी महाराष्ट्र में हमने देखा कि शिवसेना को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकार बनाई। हमने उससे पहले गोवा में देखा, कर्नाटका में देखा, मणिपुर में देखा, राज्य दर राज्य में हमने देखा कि किस तरह पार्टियों को तोड़ तोड़ कर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारें बनाने की कोशिश करती है। क्या है भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का मोडस ऑपरेंडी? क्या है उनका सरकार तोड़ने का तरीका? उनका सरकार तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है उनकी केंद्र सरकार की एजेंसियां। तो क्या फॉर्मूला फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या फॉर्मूला फॉलो करती है उनकी केंद्र सरकार? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जिस पार्टी को तोड़ना है, जिस सरकार को तोड़ना है, जिन नेताओं को तोड़ना है, सबसे पहले उन पर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों को छोड़ दो। उनके ऊपर सीबीआई का केस करो, उनके ऊपर ईडी का केस करो,
उनके ऊपर इनकम टैक्स का केस करो, जो भी सरकारी एजेंसी आपके पास है उनका केस करो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जाके उनके नेताओं को ऑफर देती है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे केस बंद हो जाएंगे। तो एक तरफ धमकाया जाता है और दूसरी तरफ लुभाने का प्रयास किया जाता है। हमने देखा कि किस तरह महाराष्ट्र में भी यही हुआ कि महाराष्ट्र की रूलिंग कोalition के अलग अलग नेताओं पर सीबीआई के, ईडी के तरह तरह के केस हुए और फिर उन केस की धमकियों को यूज करके शिवसेना के विधायकों को तोड़कर एक नई सरकार बना दी गई, जिसमें एक शिवसेना के फॉर्मर एमएलए अब चीफ मिनिस्टर बन गए। दिल्ली में भी आज यही करने की कोशिश करी जा रही है। जो ये केस दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पर हो रहा है, ये भी एक कोशिश है आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को तोड़ने की। मनीष सिसोदिया जी पर सीबीआई का केस होता है, 14 घंटे की रेड होती है, उस रेड में कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगले दिन खबर प्लांट हो जाती है कि अब जैसे सीबीआई ने एफआईआर करी है, अब ईडी को केस दिया जाएगा और ईडी का भी केस चालू होगा। जैसे ही सीबीआई की एफआईआर की, ईडी की एफआईआर की एक तरह से धमकियां आती हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी को अप्रोच करते हैं और अप्रोच करके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओगे तो सारे केस बंद कर दिए जाएंगे। और ना सिर्फ इतना, मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया जाता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने शिवसेना के ही एक ब्रेकअवे एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया, तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, अपने साथ एमएलए लेकर आ जाओ, हम तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। ये कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। आप बाकी एमएलए को, एमपीज को, नेताओं को, पार्टियों को क्यों तोड़ पाए? क्योंकि शायद उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा, शायद उन्होंने पैसा खाया होगा, इसलिए वो आपकी ईडी की एफआईआर, सीबीआई की एफआईआर और इन एजेंसी की धमकियों से डर गए और आपकी पार्टी में आके शामिल हो गए। लेकिन आम आदमी पार्टी और उसके नेता कट्टर ईमानदार हैं। ना आज तक हमने एक पैसे का भ्रष्टाचार किया है, ना एक पैसे का भ्रष्टाचार करेंगे। तो चाहे धमकियां हो, चाहे लुभावने के प्रयास हो, आम आदमी पार्टी उसमें आने वाली नहीं है। मनीष सिसोदिया जी ने सीधा जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी वालों को कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूं और मुझे पता है कि अगर देश में एक नेता है जो भारत को, दुनिया को नंबर 1 पर लेके जा सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो चाहे आप मुझे जेल में डाल दो, चाहे आप ईडी का केस कर दो, चाहे आप सीबीआई का केस कर दो, मैं आम आदमी पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी का ये मोडस ऑपरेंडा है। भारतीय जनता पार्टी की ये वॉशिंग मशीन सिर्फ पहली बार यहां पे नहीं चलाने की कोशिश है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जहां पे देश भर में अलग अलग पार्टियों के नेताओं को वो धमकियां देते हैं, ईडी के केस शुरू कराते हैं, सीबीआई के केस शुरू करवाते हैं, फिर उनके साथ डील हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाओगे, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए तो उसके बाद सारे केस खत्म। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, जिन पर 2010 के वाटर स्कैम का केस चल रहा था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2015 में ज्वाइन किया, आज भारतीय जनता पार्टी के आसाम के मुख्यमंत्री हैं
आज वाटर स्कैम का नामो निशान खत्म हो गया। आज वाटर स्कैम की कोई बातचीत नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई रेड नहीं। बेल्लारी के रेड्डी ब्रदर्स, जिनका नाम पूरे देश की हेडलाइन में छाया रहता था, जिनके 2006 से 2011 के 16,500 करोड़ के स्कैम सामने आए, सीबीआई उनके पास तो कभी नहीं गई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़े हुए रहे। नारायण राणे, जिन पे 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग के केस, लैंड स्कैम के केस सीबीआई और ईडी ने उन पर केस किए, 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आज भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। सीबीआई और ईडी ने सवाल जवाब करना बंद कर दिया। सीबीआई और ईडी ने रेड करनी बंद कर दी। बीजे पांडा, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के और वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के केस हुए फरवरी 2019 में, जैसे ही केस हुए तुरंत उनके पास ऑफर आया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। सीबीआई और ईडी ने केस बंद कर दिए। सबसे फेमस शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार पश्चिम बंगाल में होने वाले भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थे। शारदा स्कैम के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी ने कई चुनाव लड़ डाले बंगाल में। 2020 में शुभेंदु अधिकारी जी को भी ऑफर जाता है कि आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में साफ हो जाइए। शुभेंदु अधिकारी, जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। ये लिस्ट चलती जा सकती है। हमारे पास ऐसी दर्जनों नेताओं की लिस्ट है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब कुछ भारतीय जनता पार्टी के खास ऐसे नेता हैं जो कह भी देते हैं। महाराष्ट्र के एक एमएलए कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी में, नारायण पाटिल, पब्लिक में आके कह देते हैं कि जी जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूं तो चैन की नींद सो पाता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे ऊपर कोई भी इंक्वायरी होने वाली नहीं है। तो यही कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वॉशिंग मशीन फॉर्मूले से देश भर में करी है, महाराष्ट्र में करी है, उड़ीसा में करी है, पश्चिम बंगाल में करी है, मध्य प्रदेश में करी है, आज भारतीय जनता पार्टी उसे दिल्ली में भी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी याद रखें कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त पार्टी है। आप हमें डरा लो, आप हमें धमका लो, आप हमें जेल भेज दो, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमें अपनी ईमानदारी पे भरोसा है। हम राजनीति में इस देश की सेवा के लिए आए हैं, ना तो हम आपकी धमकियों से डरने वाले हैं और ना ही आम आदमी पार्टी का कोई नेता आपके कितने भी लुभावने ऑफर हो, ना वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। हम मरते दम तक इस देश की सेवा में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ लगे रहेंगे। धन्यवाद। एक सवाल है, शब्द दर शब्द आप बता रही हैं कि भाजपा के लोगों ने कैसे मनीष जी से संपर्क किया। ये तीसरा मीडिया इंटरेक्शन है सुबह से, नाम क्यों नहीं आप लोग खुलासा कर रही हैं? पब्लिक डोमेन में नाम क्यों नहीं रख रही हैं? मैम नाम भी या मैसेज भी कुछ तो दिखाइए, हम पता चले क्या किस माध्यम से कैसे आया है, कैसे अप्रोच किया, कब किया गया। देखिए, ये अप्रोच पिछले ही कुछ दिनों में किया गया है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। और उसी व्यक्ति ने अप्रोच किया है जिसने शुभेंदु अधिकारी को, मुकुल रॉय को और हेमंत बिस्वा शर्मा जी को और बीजे पांडा को अप्रोच किया था। सेम व्यक्ति है। तो आप
बीजे पांडा से और शुभेंदु अधिकारी से जाके पूछ सकते हैं, जो सेम व्यक्ति जिसने उन्हें अप्रोच किया था और जिसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने की, उस सेम व्यक्ति को मनीष सिसोदिया जी को अप्रोच करने की जिम्मेदारी दी इन द लास्ट फ्यू डेज। शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, बीजे पांडा और हेमंत बिस्व शर्मा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वो कौन व्यक्ति है। Ma'am, the links has been connected to Telangana also now. Kavitha coming out and saying that this is to malign our image. What does आप say on it? देखिए, मैंने कल ही कह दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आजकल और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनको तो देख के बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर्स को भी शर्म आ जाएगी। क्योंकि देखिए, आप जब बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर हैं तो आप बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी आधार के, बिना किसी प्रूफ के कोई भी बात कह सकते हैं, कोई भी नेटफ्लिक्स का एपिसोड लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं और कोई आरोप लगा रहे हैं तो कुछ तो आधार रखेंगे आप बिना किसी आधार के, बिना किसी डिटेल के कभी भी कोई बात कह देंगे तो क्या कहा जाए। अच्छा, उनकी दूसरी समस्या ये है कि उनको पहले एक स्क्रिप्ट दी जाती है, वो 2-3 हफ्ते चलती है, फिर पता चलता है ओहो हो ये तो सारी स्क्रिप्ट गलत थी, इसमें तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है, ये तो सब कुछ ड्यू प्रोसेस से हुआ है। तो फिर उन बेचारों को भी रोज रोज कोई नई स्क्रिप्ट निकालनी पड़ती है। तो ये कोई आखिरी स्क्रिप्ट नहीं है उनकी, जो उन्होंने कभी चलाएंगे वो नई स्क्रिप्ट। और पिछले 7 सालों से वो अलग अलग भ्रष्टाचार की कई स्क्रिप्ट लेके आए हैं। तो वो चाहे जिस चीज पे अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लें, वो एक्साइज पॉलिसी पे कर लें, वो बसों पे कर लें, वो स्कूलों पे कर लें, वो दवाइयों पे कर लें, वो फ्लाईओवर पे कर लें, वो सड़कों पे कर लें, वो मोहल्ला क्लिनिक पे कर लें, वो आम आदमी पार्टी के हर डिपार्टमेंट की हर पॉलिसी पे इन्वेस्टिगेशन खोल लें, ये हमारा दावा है कि 1 पैसे का भ्रष्टाचार उनको नहीं मिलेगा। लेकर आ जाए रोज रोज भ्रष्टाचार की नई स्क्रिप्टें। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है, हमें अपने काम पे भरोसा है, हमें अपनी ईमानदारी पे भरोसा है। के आरोपों को स्क्रिप्टेड बता रही है और बीजेपी, आम आदमी पार्टी बीजेपी के आरोपों को स्क्रिप्टेड बता रही है। बीजेपी उल्टा आप लोगों को ये कह रही है कि ये सब स्क्रिप्टेड है, इस तरह से कोई ऑफर गया नहीं। देखिए मैं इसमें आपको इसमें आपने बोला 2 दिन पहले संपर्क किया गया, 2 दिन पहले मैं कह रही हूँ कि पिछले ही 2-3 दिनों में संपर्क किया गया। Atishi, AAP leader, who's of course justifying all the allegations made against them, saying this is nothing but the BJP's tactic to suppress the voice of the Aam Aadmi Party, who stands as a great challenge to Modi in the upcoming polls. Now, amid this Delhi Liquorgate war, a furious face-off has emerged on the cyberspace, with BJP and the TMC launching an intense video and meme war. BJP has taken a jibe at Kejriwal, releasing a video titled "Golmaal Hai." That video that you see on your screens here, showing Kejriwal, a lookalike of him, distributing freebies to divert attention of Aam Aadmi Party's misrule in the state. This is the latest in the series of video wars between AAP and the BJP. AAP has also released another meme which shows Manish Sisodia shielding Delhi's education model by blocking arrows in the form of central agencies. The video tries to project Deputy Chief Minister Manish Sisodia as a fighter pitted against the central government, which is alleged, which in fact the Aam Aadmi Party is accusing the BJP of trying to dismantle its good work. If we can see that video of the Aam Aadmi Party as well, the meme that shows Sisodia holding up, in fact, a shield to block off arrows from the BJP. AAP had earlier released a video of Prime Minister Modi slamming CBI misuse while in opposition. देखिए वो आ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स में हमारा विज्ञापन छा गया। हट बेवकूफ, आर्टिकल बोलो। सॉरी सर जी। तो भाइयों और बहनों, देखा आपने आज हमारी सरकारी स्कूल की प्यारी प्यारी बच्चियां आज ये सीबीआई का राजनीतिकरण, ये सीबीआई का दुरुपयोग
निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए सीबीआई का अनाप शनाप कारनामे जो चलाए जा रहे हैं, और कभी न कभी तो आपको हिंदुस्तान की जनता को जवाब देना पड़ेगा। मेरा मानना है भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी का ऐलान कर देना चाहिए। जो भ्रष्टाचार करेगा उसे गद्दारी माना जाएगा। देश के साथ गद्दारी कर। Now, meanwhile, the BJP has dragged the TRS in the Delhi's liquor controversy. BJP's Parvesh Verma has alleged that KCR's daughter, Kavitha, is involved in this excise policy case. BJP has alleged that TRS helped Sisodia with the formulation of the liquor policy. KRS's daughter, Kavitha, has come out to hit out at the BJP for making such allegations, calling it absolutely baseless and trying to clear the air, saying she has no link with the liquor scam in Delhi. Now, the TRS MLC, Kavitha, has claimed that the BJP has been trying desperately to malign her and her family, but all efforts would be shut down as she belongs to the family of fighters. We are the family of fighters. We fought for Telangana. We were on the streets. We were with the people. We never go back in a fight. Today, if you just want to put us down by throwing some baseless allegations at us, it is just going to remain baseless. Nothing is going to come out of it. Today, you are in power. You want to use agencies. You want to use media. You want to use everything possible to curtail the voice of opposition. I am so sorry. You are messing with the wrong people. We are not the people who are going to calm down. We are not the people who are going to step down. We are fighters. Telangana people are known to put up a fight and make sure the fight ends in a prosperous result. Tomorrow we want the country to prosper as Telangana is prospering today, and we will firmly stand on this. The allegations that are made on me by BJP party and their party people are completely baseless. The allegations will certainly remain an allegations. They have all the agencies in their hands. They can do whatever investigation that is required. We will completely cooperate. I have nothing to do with the Delhi liquor investigation that is going on. This is a baseless allegation made on me by Bharatiya Janata Party just to make sure they malign the reputation of our family, and I'm so sorry to tell them it is not going to work. केसीआर की बेटी जो हैं उनका इसमें रोल है, के कविता का इसमें रोल है, और के कविता जो है मीटिंगें करती रही ओबरा इसमें। के कविता जो है शराब के लोगों से चड्डा परिवार से उन्होंने मीटिंग की, चड्डा परिवार का पैसा लेके उन्होंने फैक्ट्री डीसील करा के दी उनकी, तो ये सारा के कविता का रोल रहा है पैसे लेने देने में बहुत बड़ा। All right, coming up on the other side of a short break, traffic snarls at key Delhi borders as farmers group return to the border areas to protest over MSP law. Protesters, many of them rounded up by Delhi police. Images on the other side. Stay with us. Everyone's busy finding what's trending. You're busy finding out why. India Today, for those who research before reacting. Download the India Today app now. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Kerala's public health. All political parties traveling from different parts. Armed with facts, Looking at political back. she takes the news by its horns. Do you think the future of these students are not hampered? Fierce, bold and direct, setting the tone for the biggest stories from every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. Everyone's busy finding what's trending. You're busy finding out why. India Today, for those who research before reacting. Download the India Today app now.
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com. With every sunrise comes new beginnings, new opportunities and new stories. And that's why we're first up. While you're sleeping, we're hard at work to ensure you get the perfect news shot every morning. Get you all the updates. Our morning mission to get you news that's fresh and packed with flavor. Watch First Up every weekday morning with me, Akshita Nandagopal, right here on India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Here's some big breaking news coming in. Russian security agencies have claimed to have apprehended an Islamic State operative that was planning to strike in India, targeting members of the ruling circles. An Islamic State suicide bomber who planned a terrorist attack against one of the representatives of the ruling circles of India was detained in Russia. This information comes as per the Russian FSB. As per its report on Monday, the FSB of the Russian Federation in Russia identified and detained a member banned in Russia by the international organization Islamic State, a native of the country in the Central Asian region who planned to carry out an investigation on the initiative of one of the representatives of the ruling circles of India. This is what the release says. Russia detains an ISIS suicide bomber, and Russia's statement claims that this ISIS suicide bomber had plans to target India, and that attempt has been foiled. Russian security agency has claimed that they have apprehended an ISIS operative that was planning to strike in India and target members of the ruling circles. This is precisely what the Russian security agency's statement claims. The statement there claims that the ISIS suicide bomber had planned a terrorist attack against India, against one of the representatives of the ruling circles of India. He was detained in Russia. This report comes as per the press release of the Russian FSB. The FSB of the Russian Federation in Russia identified and detained a member banned in Russia by the international organization ISIS, a native of the country in the Central Asian region, who planned to carry out an investigation on the initiative of one of the representatives of the ruling circles of India. For more clarity on this, Geeta Mohan joining us for an understanding. Geeta, quick word on Russia claiming that they've apprehended an ISIS bomber who allegedly was plotting to strike in India, mainly target a person from the ruling circles. What more do we know? Well, the details and identity of who the target was has not been divulged. We do not have details on that front, but certainly the fact that they're saying that a high-profile individual from the ruling circles was the target is a cause for worry, and a cause for worry for India as also for Russia, given that the person traveled from a Central Asian country, an ISIS terrorist, according to FSB, the intel agency of Russia, to Moscow, and then from there was preparing documents to travel to India, was apprehended in time. So that certainly is a good news. But the big news over here is that certain individuals in India are under the target of ISIS terrorists. And this was a suicide bomber. He was planning to carry out a suicide attack, apparently, according to FSB. He has been apprehended. This comes just days after we saw National Security Advisor Doval's visits to Moscow, where they were talking about and emphasizing on how counterterrorism should be one of the most important aspects of Russia in their ties. Having said that, Nabila, the worrying factor over here is that high-profile representatives from the ruling circles of India, in all probability, they are looking at government authorities, because one of the reports from Russia says
very clearly that that the person was planning to travel to India and commit a terrorist attack against a representative of the country's authorities. So the profile over here is from not just the ruling circles, meaning just from a particular party or setup. It is from the target was a part of the of Indian authority. So a very high profile individual indeed, but we do not have details of who that individual was, who was under target and who was being targeted or is being targeted by the ISIS terrorists from Central Asian region. Right. You know, Geeta, of course, this is a really alarming piece of news, undoubtedly, but this man has been apprehended, so his attempts have been foiled. But where was he apprehended? Any idea on what condition he was found? What was he armed? Where exactly was this man found? Well, the details are quite sketchy right now because it's a preliminary press release by the FSB, wherein all that's stated is that the Federal Security Service of the Russian Federation has identified and detained a member of the international terrorist organization, the Islamic State that is banned in Russia and in most parts of the world, native of the country in the Central Asian region, was planning to commit a terrorist attack and has been apprehended. The terrorist attack that he was planning was by self-detonation against one of the representatives of the ruling circles of India. That's what the release says. So no details on where he was caught, how he was apprehended, what was the intel that the Russian agencies got from various quarters, but we do know that there is real-time intel sharing between Russia and India when it comes to these matters. But we really, and again, between Russia and some of the Central Asian countries as well. But we do not know where the intel really came from, how they carried out the operation, and where the man was apprehended. We do know that he was traveling to Russia, particularly Moscow, to get documents to be able to travel to India. So it is in the process of his planning and plans of travel to India that he was apprehended. And certainly there must be a lot of evidence against him, given that they have very specifically said that he is a suicide bomber. He's a suicide bomber who has been detained and apprehended by the FSB and the Russian authorities. All right, you know, Geeta, stay with us. I'm going to quickly cut across to Gaurav Sawant as well, joining us live for more. Gaurav, a really alarming piece of news coming in from Russia. The Russia state agency, security agency there, releasing a statement claiming that they've apprehended an ISIS terrorist, a bomber, who aimed at targeting India, particularly as a top member from the ruling circles. That's what their statement says. Please do elaborate for us. What more information do we have? So more details will emerge. It's a very terse statement that's come out of FSB. But given the fact that this individual was being tracked, or his group of 15 was being tracked by Russia's counterintelligence agency, is an indicator of the degree of the issue. For example, they tracked this individual who's been arrested while he was in Turkey, while he swore allegiance to the emir of not just the Islamic State, but the group of 15, which means there appears to be a wider plot. One was the suicide bomber. There are several others who are involved in this planning, and they were involved in the planning which took place in Turkey. His Telegram accounts and certain other accounts are also under scrutiny according to initial information that seems to be filtering out. That's part one of the story. Part two of the story, equally critical at this point of time, is a wider plot to target India and the kind of thinking. Had this individual flown to India directly from Turkey, he would have been under closer scrutiny. As you well know, that there are certain countries from where when individuals come into India from those countries, they are very closely watched. Russia is a trusted country. So this individual went to Russia, was completing his documents to fly to India in order to perhaps evade scrutiny at border control or the immigration authorities at the airport to try and slip into the country. And then the bigger issue that is yet to be made public is who would he have met in India
the sleeper cell within the country where he would have received the kind of assistance that he required in terms of explosives, a suicide vest and other details to be able to carry out that terror plot within the country. So it's a much wider investigation where India would then be seeking more information from FSB in Russia, but it points to a very, very dangerous scenario that is being painted. And Nabila, if I may, this is one part of the story. You'd recall a couple of days back, a terrorist was apprehended along the line of control in Jammu and Kashmir. Again, the information was that that terrorist was a suicide bomber who was coming into the country, which means there is maybe a bigger concerted plot to push in terrorists into this country, whether from along the LOC or internationally, and then try a big terror attack in India. You know, Gaurav, as we know here that this man has been apprehended possibly in Moscow. That's more or less the suspicion here as per Geeta. But the Russian security agency claims that this man is a suicide bomber connected with the ISIS, and his target was a member from the ruling circles of India. That was his target. Not too sure who the Russian security officials there are referring to. But do we know anything more on the man's intentions, apart from just this one message that Russia gives out saying that he wanted to target someone from the ruling circles? Any word on his modus operandi, on where he had come from, how he planned to go towards India, and who exactly was on his target? Who exactly was the man he was hunting for? In fact, at this point, what we prima facie know is that Russian security agencies have apprehended this man who belongs to ISIS. He is an ISIS operator, and he has been caught in Russia's Moscow. He was allegedly trying to target members of the ruling circles in India. His aim was to infiltrate into India in whatever way and try and target a member of the ruling circles. Of course, very pertinent point here, the sticking point is that his intention was to target a member of the ruling circle. Any word, Gaurav, on who this member of the ruling circle really is? And if we know what this man's intention was, how did he land up in Russia? Did he plan to move from Russia to India, and how would he have possibly done that? You know, very interesting points that you raise here, but as of now, very sketchy details in public domain. But you're absolutely right. The fact that a plot was being hatched, according to FSB in Russia, it's the new KGB or the new version. They were tracking this individual. Remember, Russia also very closely tracks Islamic State or, the Daesh terrorists, because it poses a serious threat to them. It poses a serious threat to Europe. So they were tracking either this individual or a group of individuals. The information is a group of 15 were being tracked. They swore allegiance to the Emir of Islamic State. There's some telegram or some, social media conversation and contacts that were being tracked. That came under scrutiny. Then when this individual flew into Russia, that's the time this individual was arrested. Flying to Russia is a very interesting aspect, as we were discussing. Had this individual come directly from Turkey to India, he could have been under closer scrutiny at the immigration in Delhi. But people coming from Russia or from trusted countries, by and large, it's easier for them to get in. So was that the aim? Once in India, who would he have met in India is the biggest point as far as India is concerned. And that is where the National Investigation Agency, India's premier counter-terrorism agency, along with the Research and Analysis Wing, they would be tracking the sleeper cell within the country, and that would remain under wraps till the time investigations are completed, because who would have provided this individual with explosives in India? Who's the VIP? We do not know, but there have been several reports in the past how top government ministers and of course the Prime Minister are on the radar of these terrorist organizations, whether it's Lashkar-e-Taiba or Jaish-e-Mohammed based in Pakistan, or the Islamic State, which is more a pan-global organization. You'd recall we'd done a report about how Al-Qaeda in Afghanistan was trying to spread terror in India. So that is where this story becomes really huge on foreign terrorists and their local counterparts. A short while back, you and I were also discussing how a certain individual tried to come from Pakistan into India to spread terror. He too, according to intelligence agencies, was a suicide bomber. Fortunately, he was apprehended.
perhaps now on interrogation of the individual in Moscow and the person who was arrested along the line of control, there would be more details that would emerge. But unfortunately, they operate in very small cells. The bigger picture may take a long time to be made public. All right, this has certainly raised alarm bells at this point. Russia's, in fact, they've formally released a statement, the security agency, saying that they've apprehended a man connected with the ISIS and he's a suicide bomber. His target was someone from the ruling circles of India. Of course, the man was hatching a plot. Before that, the Russian government has managed to crack him down. Let me cut across to Abhishek Bhalla for a little more clarity here. Abhishek, a quick word on the formal release by the Russian security agency alerting India that there's a man connected with the ISIS that they've apprehended in their country, possibly in Moscow, and his target was someone from the ruling circles of India. Any more information that Russia has shared? Have the Indian officials tried to connect with Russian officials for more on this? Well, when the Russian statement says that somebody in India from the ruling circles was a target, it clearly suggests that somebody who is in power and in a position which is extremely important. So that's the gravity of the situation. This information being taken very seriously by Indian security and intelligence agencies. And, it's perhaps for the first time where an ISIS threat in India has been so clear, where somebody from outside is actually, a prime suspect wanting to come to India and commit a terror act. In the past, there have been several Indians who have been arrested, intercepted, trying to leave the country, trying to go and join the ISIS. Many have already done so, but never had there been, clear indication, a clear intercept of somebody from outside the country coming to India. So that's what makes this even more serious. The information that the Russian agencies have is that this particular individual had visited Turkey and perhaps he met some people there. It was part of planning and then was planning to come to India. So definitely Indian and Russian agencies sharing more information and the Indian security agencies tracking all the details that have been shared with them extremely closely. Abhishek, it's certainly worrisome. Now, when the Russian state security agency says that this man could be a local of the Central Asian region, what are they really indicating? And was he armed? In any sense, was he armed? We believe that his intention was to target someone from the ruling circles of India and maybe blow himself up as a suicide bomber that he is deemed to be as per the Russian authorities. But at the point of apprehension, was he armed, and which country does he typically belong from? Well, he was living in Russia. That's what the agencies from Russia have said. And he belongs to a Central Asian country. They have not specified which country. But what they've mentioned is that he was in Russia. He's been arrested from the country and he had traveled to Turkey. That's one link that has been extremely common in several ISIS cases. Even people who had, wanting to join ISIS had in fact traveled to Turkey first and then crossed over to Syria. And that's been a common link in several cases of ISIS recruits from across the world. Turkey has been that place from where they have managed to cross over to Syria, joining the ISIS. So that's something which is common in many cases. But as far as this particular individual is concerned, once again, having gone to Turkey is something that the agencies are looking at closely. Who could be his links? Was he in touch with somebody from India who's part of ISIS? So all these things part of intelligence gathering. Now this particular individual has been apprehended by Russian agencies in Russia. Abhishek, stay with us. I'm going to quickly cut across to Major General A.K. Sivaj, joining us for some understanding on the ISIS module. Major General, at this point, Russia and its state security agency has alerted India about this man that they've apprehended in their country who allegedly was trying to target the
member of a ruling circle in India, which clearly, evidently here speaks of the BJP. His target was someone top in the BJP leadership. Not too sure who, because that clarity has not yet come about. But what do you think has happened here? This man was caught in Russia. Was he trying to come into the country via Russia? How does ISIS really recruit suicide bombers? No doubt. First of all, ISIS, Islamic State, is an international terrorism, and they don't know any boundaries, and they can come from one country to another. Now, what is happening is that the Islamic State, possibly from Turkey, from Syria, all these countries, this is hub center of Islamic State. Now, coming to Russia, possibly from Russia, then coming to India, or from Russia coming via Nepal to India. Now, this become an unsuspecting route. Now, anyone coming from Russia, possibly not on that much radar as much as someone coming from Islamic country. So this can be very cleverly selected as a route. But all said and done, the point is today, the Russian agencies, intelligence were very alert and they could nab it. They are still not telling us to who was the target. Possibly the target was very high profile. And therefore, we have to be very alert. My point is, within our country, there are a lot of sleeper cell and also overground workers, which give them a lot of protection as well as logistics support. So we have to be very alert. And the second issue is that we still have a porous border. We have a porous border with Nepal. To some extent, we have managed to fence to Bangladesh, but still we have a porous border to Myanmar also. So all this thing also we have to be also very assured. It is not only that they have to come directly to India. They can come via these smaller countries which are all around. So threat is real, and Islamic State is a threat which is increasing. It's not only these Islamic countries, it is also in Afghanistan now this threat is increasing manifold. You remember that Al-Qaeda, after Al-Jawahiri was killed in Kabul, and after Taliban has taken over in 15th August 21, you find most of the international organization making a headquarter in Afghanistan. And Islamic State is also now trying to spread its wings there. So anything which is happening in Afghanistan can have a direct implication on India. So overall, a good move by the Russian intelligence. They could nab it, but we should go into more detail. What was their modus operandi? Where were they doing? Who was the target? Who was the support system available within the country? We have to do much more homework. But today, the requirement as far as the country is concerned, the intelligences have to have a more cooperation at national and international level, and within the country between state and also the central government, because terrorism is spreading like a fire, and India is one of the countries which is on their radar and also on the hit list. Thank you very much, Major General. Let me quickly cut across to Lieutenant General Sanjay Kulkarni as well, joining us for some more understanding on the ISIS. But do stay with us. Quickly cut across. में का इंतजाम किया, एजुकेशन फ्री कर दी, हेल्थ फ्री कर दी, महिलाओं का ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, तो लोगों को महंगाई से थोड़ा सा रिलीफ मिला है। 12 लाख बच्चों को हमने रोज़गार दिया, तो रोज़गार देना हमें आता है। तो अगर हमारी सरकार बनती है तो महंगाई और बेरोज़गारी से भी हम छुटकारा दिलाएंगे। और आज मुझे खुशी है, मैं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को अपने साथ लेके आया हूँ, मनीष जी को, जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा में शानदार काम किया। इनके चर्चे अमेरिका के अखबारों में के फ्रंट पेज पे मनीष जी की फ़ोटो छप रही है। तो मनीष जी अगर कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ इस दौरे में गुजरात आया हूँ। और दिल्ली में जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूल बहुत शानदार हुए हैं और दिल्ली में हमने प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ने दी है, वैसे ही मैं समझता हूँ गुजरात के भी हर बच्चे का हक है कि उसको शानदार शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले। और गुजरात के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हर बच्चे का भी हक है कि उसके स्कूल की फ़ीस नाजायज़ तरीके से न बढ़ाई जाए। और ये हो सकता है। इसके लिए 27 साल की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली ने करके दिखाया है, केवल 5 साल में ऐसा हो सकता है। तो आज हम गुजरात की जनता से ये अपील करने आए हैं कि जैसे दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया अरविंद केजरीवाल जी को, जैसे पंजाब के लोगों ने मौका दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, एक मौका केजरीवाल जी को दें। 5 साल के अंदर अंदर यहाँ के स्कूलों में
बहुत बदलाव आ सकता है। यहाँ के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो सकते हैं, यहाँ के प्राइवेट स्कूलों की फीस को ऐसे बढ़ने से रोका जा सकता है जैसे दिल्ली में रोका गया। तो राजपूत समाज अभी नाराजगी दिखा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? और भाजपा की तरफ से भी आपको ऑफर मिली, आपने ट्वीट किया है। देखिए, ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके, और ख़ास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए ये सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफ़र हैं। एक तो ये कि आपके CBI ED जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया, और मैं आपके सबके माध्यम से भी देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं, और मैंने इनसे सीखा है, इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विज़न के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा CM बनने का, PM बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पर खुला जवाब है। अच्छा, केजरीवाल जी जब बात करते हैं एजुकेशन और हेल्थ, आप पीसी करेंगे। That's Arvind Kejriwal and Manish Sisodia in Gujarat, where, of course, asking for people in the state to vote for the Aam Aadmi Party, and that they are going to carry out a huge transformation in the education system and governance if they come to power in Gujarat. They land in Ahmedabad and have been greeted by media extensively, questioning them about, of course, the excise policy corruption probe by the CBI, which at this point, Manish Sisodia very briefly tells the media people that he was forced to join the BJP, and if he did, then they would drop all the cases against him. He says, I will not bow down, I won't join the BJP, and then quickly moves away as he is right now headed towards meeting and greeting people, the Aam Aadmi Party ground leadership in Gujarat, as the state is poll-bound. We're looking at the glimpses of campaigning already that's begun in the state of Gujarat, which is Prime Minister Modi's home turf. Manish Sisodia lands with Arvind Kejriwal. Both of them, the top leaders within the Aam Aadmi Party, have landed in Ahmedabad, speak to the media about how they could give stellar governance and literally transform the education model in the state of Gujarat if they do come to power. Saurabh Bhaktania is right there in Gujarat, tracking the movements of the Aam Aadmi Party leaders, Arvind Kejriwal and Manish Sisodia. Saurabh, tell us more. What's the mood like as Aam Aadmi Party chief lands in Ahmedabad? In fact, Kejriwal spoke a little while earlier. Before that, let me cut across to what Kejriwal and Manish Sisodia said as soon as they landed in Gujarat. अगर आम आदमी पार्टी की गुजरात में सरकार बनती है, हमारी अपील है सभी गुजरात के लोगों से कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाइए। आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम करेंगे, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो चाहे प्राइवेट स्कूल में। आपके पूरे परिवार के लिए अच्छे और फ्री इलाज का इंतज़ाम करेंगे, आपके पूरे परिवार के लिए। और दूसरा, दिल्ली में हमने महंगाई और बेरोज़गारी पे काफ़ी काम किया। गुजरात सरकार महंगाई और बेरोज़गारी पे बिल्कुल विफल रही है। लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सब चीज़ महंगी हो गई है। युवा बेरोज़गार घूम रहे हैं गुजरात के अंदर। दिल्ली में हमने बिजली फ्री कर दी लोगों की, पानी फ्री कर दिया लोगों का, अच्छे स्कूल में का इंतज़ाम किया, एजुकेशन फ्री कर दी, हेल्थ फ्री कर दी, महिलाओं का ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। तो लोगों को महंगाई से थोड़ा सा रिलीफ मिला है। 12 लाख बच्चों को हमने रोज़गार दिया, तो रोज़गार देना हमें आता है। तो अगर हमारी सरकार बनती है तो महंगाई और बेरोज़गारी से भी हम छुटकारा दिलाएंगे। और आज मुझे खुशी है, मैं दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री को अपने साथ लेके आया हूँ, मनीष जी को, जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा में शानदार काम किया। इनके चर्चे
अमेरिका के अखबारों में के फ्रंट पेज पे मनीष जी की फ़ोटो छप रही है। तो मनीष जी अगर कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ इस दौरे में गुजरात आया हूं और दिल्ली में जिस तरह पिछले कुछ वर्षों में सरकारी स्कूल बहुत शानदार हुए हैं और दिल्ली में हमने प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ने दी है, वैसे ही मैं समझता हूं गुजरात के भी हर बच्चे का हक है कि उसको शानदार शिक्षा मिले, फ्री शिक्षा मिले और गुजरात के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हर बच्चे का भी हक है कि उसके स्कूल की फ़ीस नाजायज़ तरीके से न बढ़ाई जाए। और ये हो सकता है। इसके लिए 27 साल की ज़रूरत नहीं है, दिल्ली ने करके दिखाया है, केवल 5 साल में ऐसा हो सकता है। तो आज हम गुजरात की जनता से ये अपील करने आए हैं कि जैसे दिल्ली के लोगों ने एक मौका दिया अरविंद केजरीवाल जी को, जैसे पंजाब के लोगों ने मौका दिया है अरविंद केजरीवाल जी को, एक मौका केजरीवाल जी को दें। 5 साल के अंदर अंदर यहाँ के स्कूलों में बहुत बदलाव आ सकता है। यहाँ के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो सकते हैं, यहाँ के प्राइवेट स्कूलों की फीस को ऐसे बढ़ने से रोका जा सकता है जैसे दिल्ली में रोका गया। तो राजपूत समाज अभी नाराजगी दिखा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? और भाजपा की तरफ से भी आपको ऑफर मिली, आपने ट्वीट किया है। देखिए, ये सारा मसला जो पिछले 2-4 दिन से चल रहा है, ये है ही इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोका जा सके और ख़ास तौर पे क्योंकि गुजरात में अब लोग अरविंद केजरीवाल जी को एक उम्मीद के रूप में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को देख रहे हैं, तो इनको रोका जा सके, तो इसीलिए सारा किया है। और अब मुझे आश्चर्य हुआ जब तो कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफ़र हैं। एक तो ये कि आपके CBI ED जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे आप। Cutting back to the security scare that's coming up from Russia, a statement that's been released by Russian Federal Security Agency claiming that they've detained an ISIS bomber in Russia whose target was someone from India, particularly a member from the ruling circles. This is the image that we get, the first image that we get of this the suicide bomber that was apprehended by Russian authorities. Big development coming in on a national threat. And in fact, Russia's security agency has released a detailed statement saying that they've apprehended a suicide bomber. And according to prima facie details, the suicide bomber is a member of the ISIS, the Islamic State terrorist group, who was plotting a terrorist attack in India. They claim that this suicide bomber was targeting someone from the ruling circles of India, clearly indicating that the target was someone from the BJP. Now, who in the BJP? Some kind of clarity needed on that. But this man that you see on your screens here, the first image coming in of Russian security forces there apprehending this man who allegedly is a suicide bomber. As per Russia's statement, they claim that this man is linked with the ISIS. He's a suicide bomber recruited from ISIS, possibly coming in from Turkey. And his target was someone from the ruling circles of India, clearly indicating someone from the BJP was his target. This is the big news that we're currently tracking. Islamic State suicide bomber planning a terrorist attack in India has been detained in Russia. The Islamic State suicide bomber was recruited by one of the ISIS leaders, possibly in Turkey. This is the prima facie information that we get here. The first video right here on India Today. The man on your screens that we show you is the man who's been apprehended by the Russian security forces. The suicide bomber is said to be a native of the country in the Central Asian region. Now, which particular country is Russian security forces referring to needs to be clarified. We'll know that in just moments from now. But this man seems to be a local from the Central Asian region. He's been apprehended in Russia. He was all set to blow himself up against one of the representatives of the ruling circles of India, which very clearly indicates that his target was someone from the BJP top leadership. ISIS state, its suicide bomber found in Russia. Let me quickly cut across to that first visual coming in on the suicide bomber being apprehended by Russian forces. Подготовка в Турцию. В 2022 году по указанию Юсуф Таджика я летел в Россию
Я приехал в Россию, откуда должен был выехать в Индию. В Индию меня должен встречать было и необходимые для встречать и дать все необходимые вещи для совершения теракта по указанию исламского государства за оскорбление пророка Мухаммада. Man has spoken. I'm going to cut across Abhishek Bhalla to get some clarity on what exactly the suicide bomber has said while he was apprehended by Russian security forces. Abhishek, this man is in the custody of Russian security forces. He's spoken. What exactly has he said? We believe he was planning a massive attack in this year itself, 2022. That was his target against a senior leader of the BJP. Well, the information that has been shared by Russian agencies is that he was looking at targeting somebody from the ruling class, which essentially means somebody in power, somebody in a position of importance. So it was definitely a high-profile target that this man was looking at, working for ISIS. The other information that we have is that he had traveled to Turkey and he had come back to Russia and was planning to travel from Russia to India to carry out some kind of an attack on a particular individual. So these are the details that have been shared by Russian authorities. And, really perhaps the first of its kind case where an ISIS recruit looking at entering India from another country and then carrying out some kind of an attack. In the past, there have been several ISIS recruits from within India who have looked at traveling to Syria. Some of them were intercepted. Some have managed to go there. Some also in the AAP region, in what is called ISIS Khorasan. So, there have been several Indians who have joined ISIS as recruits, but perhaps the first time where a foreign ISIS recruit was looking to enter India and target a high-profile individual in the country. This man has spoken right after he was taken into custody by the Russian security forces. Would you by chance are able to translate that for us? Is there any word on what exactly he said? Well, it's the information that the Russian authorities have shared. To break it down, it's essentially what his plans were, what he had been doing before planning to come here, and basically, looking at targeting a high-profile individual, a VVIP, if we can say so. Some word doing the round that possibly from the BJP, but we wouldn't like to speculate because that's not something that the Russian authorities have said. What they've said is from the ruling class, which, if loosely translated or inferred, would mean somebody in power. And if it's somebody in power, it obviously is somebody who's influential and VVIPs, if we can say so. That's the information that has been shared by the Russian authorities. Abhishek, from the details that we get firsthand, we believe that this man has been recruited from by the ISIS, possibly from Turkey, between the months of April and June. That's the initial report that suggests that this man is maybe a fresh inductee. He was already set out to his mission. He was found in Russia, caught by the security agencies. He's now apprehended and blurts it out. He verbally speaks of his intentions while Russian authorities catch him. And that's how, as per your statement as well, that Russia has released the statement confirming that this man's target was someone from the Indian leading or the ruling circles of India. Any word on where this man was caught, if there was any kind of arms or ammunition found on him? A little clarity on that. No, he was apprehended from Russia. That's something that the Russians have clarified. And they have mentioned that he had visited Turkey. And that's quite common for several ISIS recruits. In fact, if you see the trend of ISIS recruits, they all, go to Turkey and from the border try to cross over to Syria. So it's still not clear whether he has been to Syria, whether he was on his way back from Syria, and that's when he entered Turkey and got back to Russia. All that is still not clear, whether he tried to come directly from Turkey to India. So these are the loose ends of this story till now.
But what has confirmed is that Russian authorities have arrested one individual who was planning to come to India and target a high-profile individual in the country. You know, at this point, we still have no clarity on this man and the way he managed to enter Russia in the first place. But again, I'd like to ask you if there's any information on if this man also tried to infiltrate into Russia itself. Does he have legit documents or a passport? Did he come into Russia legally, or was he an illegal? Did he take this illegal route to enter Russia in the first place? No such confirmation from the Russian authorities on what his status is, considering he was in Russia. All they've said that he's from a Central Asian country. So there are several Central Asian countries around Russia. And as has been the trend, people from these countries have gone to Turkey. Why he came to Russia is not clear. Obviously, it will be part of further investigation, whether he has any links in Russia, whether any of his handlers are in Russia. So now it's an investigation that will be tracked very closely, not just by Russians, but even Indians as well. Indian agencies, intelligence agencies would be interested in a lot of information that they can get from the Russian counterparts, because Indian agencies would obviously want to look at what were his links within India, if any, and if his handlers were present in India or any other country. Those will be, the vital information that agencies of Russia and India would be exchanging with each other. Abhishek, I'd still, of course, stress on the fact that this is an alarming piece of information, because we never know who really the man's target was, whoever it is, even if it's a common citizen. It's something to certainly worry. And ISIS sending out these suicide bombers to get their targets is a common affair, because they try to infiltrate on many parts of the borders of India itself, like the line of control. Time and again, our security forces trying to block them off. But it seems like this whole different route that this ISIS suicide bomber is taking via Russia. Now, like you rightly said, these are all loose ends which needs to be established. If he was due to come to India via Russia, and how would he possibly do that? But that apart, has the Indian government established communication with the Russian security agencies as yet? Well, no official word on it, but I am pretty sure, Nabila, that this is the standard protocol. Agencies would definitely be in touch with their counterparts in Russia. Now that Russian authorities have made this official, this is not some source-based information that has been given from Russia. It's an official statement that has come from the country about the arrest. So Indian intelligence agencies will definitely be in touch with Russian authorities and trying to get whatever information they can about this plot to target a high-profile individual within the country. All right. At this point, what we get in initial information from the Russian security agency and its statement is that this man that you see on your screens here, his target was someone from the ruling circles of India. And like Abhishek said, loosely could translate to someone from the ruling government, the BJP. Now, who exactly was his target needs to be established. But this is the man who was caught. He was recruited by the ISIS in between the months of April and June. And this man here was caught and apprehended in Russia. He seems to have blurted out some information soon after Russian officials cornered him. Here's what he said. Let's listen in. Try and get that audio for you. But this man that you see on your screens here, the first image that we show you right here on India Today, the bomber, suicide bomber who hails from the Central Asian region, as per Russian security agency's report. His attempt was to target someone from India, someone from the ruling circles. Who was on his target and how he really intended to enter India
remains to be established, but for now, what we know is that this man on the right-hand sides of your screens that you see is an ISIS recruit. He's a suicide bomber who set out on a journey to attack India, to attack someone from the ruling circles of India. These are statements that he himself has made soon after he was apprehended by the Russian forces. He was, of course, asked on his intentions, and this man seems to have explicitly explained what his intentions were. He claims that he wanted to target, he was a suicide bomber and he had set out to target someone from the ruling circles of India. A clear national security threat at this point, India taking this up very seriously. Of course, this man has been apprehended in Russia. What was his modus operandi? How was he really intending to enter India? Does he have connections within India? All that needs to be established. In due course of time, we'll have information on that. But a big admission coming in by the ISIS suicide bomber. This Russian federal agency, the security agency, FSB, has released a statement now saying that this suicide bomber has been apprehended in Russia. They claim, the security forces in Russia claim that this man was caught. He's a suicide bomber and claims to have, they've claimed that he has been plotting against India, that he wanted to target someone from the ruling circles of India. Who exactly was on his target list? Of course, clarity on that needed, which we should get in a little while from now. But this suicide bomber has been detained in Russia. He's admitted that he wanted to take revenge in India for insulting the Prophet. Big admission coming in by the ISIS suicide bomber. The ISIS terrorist claiming that he wanted to take revenge for the insults against Prophet Muhammad. Big admission coming in as Russian security forces have apprehended him in Russia. The FSB, the Russian Federal Security Service, have released a statement that this man on your screens here has been caught. They've apprehended him. He's a terrorist, a suicide bomber who was recruited by the ISIS. He possibly has come in from Turkey. He belongs to the Central Asian region. Now, which country, again, an understanding on that is needed. But this man was plotting a terrorist attack against one of India's leadership. In fact, it explicitly says that the target was a member from the ruling circles. Now, ruling circles could be, we could confidently translate that to someone from the BJP. That's more or less what it appears, that this man was attempting to target someone from the ruling circles of India. Was it someone from a political party or, a person within the administration? All of that clarity yet needed. But this man has been caught in Russia. He was recruited very recently by the ISIS between the months of April and June, and his target was someone from the ruling circles of India. He was plotting a terrorist attack against one of India's leadership elite. This is Russian security service coming out with a formal statement. So this is not hearsay, it's not source-based. It's coming directly from the government of Russia, their security force. In fact, there's Russian Federal Security Service who've established that this man was a suicide bomber, has been aiming at targeting someone from the ruling circles of India. He was plotting a terrorist attack in India. How he would have possibly managed to enter India, of course, all of that details will come out after probe is intensified. But for now, Russia has caught this man. He's spoken right after he was cornered. Let me cut across to the audio there so we could try and understand what he's possibly trying to say. I'm going to translate that for you in a little while, but let's listen in what he said. В апреле 2022 год дал байат амиру исламского государства по имени Юсуф Таджики. В 2022 году приходил специальную подготовку в Турцию. В 2022 году по указанию Юсуф Таджика. All right, that's the admission by this suicide bomber, the ISIS suicide bomber who has been caught in Russia, who was targeting, his aim was to target India and someone from the ruling circles of India. In the video here, he claims that he was born in the year 1992, a fairly young guy who's been recruited by the ISIS.
in the month of April and June, somewhere between that period that he's been recruited. He's planning to carry out a terror strike in India. This year itself, 2022, was his target. He was preparing for a suicide attack. He says, I flew to Russia from where I was supposed to leave for India. In India, he had to meet someone. In fact, some clarity on this, what exactly he says. He says that he had to meet someone to give all the necessary things to commit this terrorist attack on the orders of the ISIS for insulting Prophet Muhammad. All right. This is more or less a loose translation of what this man has said. He says, I flew into Russia from where I was supposed to leave for India. In India, I was supposed to meet someone to get all necessary things to commit this terrorist attack on the orders of the Islamic State for insulting Prophet Muhammad. Geeta Mohan joining us for more. Geeta, this is quite a shocker coming in for a national security threat indeed. This man has been apprehended in Russia, and as soon as he was apprehended by Russian forces, he claims that he set out to target India, carry out a terrorist strike, a terrorist attack, and says that his aim was to target someone from the ruling circles, and the terrorist attack was supposed to happen this year, 2022. That was his aim. He intended to enter India via Russia. Tell us more. Well, that's right. That's the press release by the FSB, the intelligence agency of Russia, and Russian authorities have spelled it out very clearly that the man has been apprehended. Nabila, what the good news is that with the cooperation and intel sharing that we've seen in the recent past, at least the man has been apprehended before he could actually commit a crime. And this is a serious act of terrorism wherein he was planning on self-detonation, that's act as a suicide bomber, and target one of the high-profile representative of the ruling circles within India. We do not really have the identity of the person, but yes, this comes at a time when India has been marred in a lot of controversy with regards to Prophet Muhammad, and is the reason why we are seeing a lot of these Islamic State terrorists and terror organizations, their splinter groups as well, now looking at trying to enter India and carry out terrorist activities or terrorist acts. So a very serious act that FSB claims has been averted. And we again will have to wait for details as to who really the target was. This comes, Nabila, at a very, very sensitive and critical juncture. And the Islamic State has been carrying out attacks in various parts. We know that Salman Rushdie not so long ago was also attacked by, again, another Islamist fanatic. And similarly over here, this man, again, from the Islamic State, has been apprehended and done so well within time. He was in Russia. He moved from a Central Asian country. We do not, again, have details on which country he moved out of, but was in Moscow to get the requisite documentation to enter India. So, serious terrorist attack in many ways, and one averted, Nabila. All right, Geeta, you say that this man was attempting to get some paperwork done to enter India. Is that right? He flew into Russia with legit documents. He had all valid documents to come into Russia, and he was preparing to enter India via Russia, again, through proper channels. He wanted to get documentation to enter India. Is that right? Well, yes, that's right. He was looking at getting all the documentation and details that were required to really travel to India. And it would have been easier in terms of process to go to Russia and then get the paperwork done and move to India. So instead of traveling from Central Asia. So yes, he was planning. This was a thought-out plan by the Islamic State organization in one of the Central Asian countries. And an elaborate plan at that, because he was going to come to India. He would have required some sort of support. We do not know what kind of intel sharing has happened between Moscow and New Delhi. National Security Advisor Ajit Doval was in Moscow not so long ago for meetings with his counterpart, and in the meetings, they did discuss counter-terror operations. Counter-terrorism is a very important part of Russia-India cooperation. So we do not really know what kind of intel has been shared with India with regards to this
man's movement, because he would have certainly required support. And in all probability, the Indian agencies here will now be looking at busting those support structures in India. You know, it's certainly a huge scare that's been averted. Russia has acted swiftly. Any word on what kind of suspicion that Russia and their security agencies may have found that led to them cornering this guy and apprehending him? Eventually, he's, of course, admitted, he blurted out his intentions. But this suicide bomber, we believe, is quite young. He was born in 1992, so he's very recently recruited. And may not be a seasoned, a man who's possibly trained well enough to carry out this attack. Well, yes, you see, the intelligence agencies have a very, very difficult work and task cut out for them now in the day of social media and so many social media platforms where these groups now have started working, and the kind of language they use to decipher the language. So according to the agency, it was from April to June that he was in Turkey when he was recruited as a suicide bomber, and he was remotely using Telegram for his for all the personal meetings in Istanbul. The monitoring happens on social media as well as it does physically when the person lands in a country and is followed around. But the initial stages are always online. And that has become a very, very difficult and Herculean task for intelligence agencies across the world to really start gathering information and intelligence when young people, young boys, young women who get onto these sites and then communicate. So to find the communication, to get the language, to decipher the language, and to then get to know exactly what the plans are is certainly a very tall ask, but the Russian authorities over here, according to them, have apprehended an Islamic state terrorist who was planning a dastardly attack against a high-profile Indian within India on Indian soil. So that certainly reminds us of the kind of attacks India has witnessed in the past from various quarters, particularly from across the border, Nabila, and we have been dealing with this kind of terrorism not just on ground, but also when it comes to trying to decipher and get details on platforms such as WhatsApp, Telegram, Signal, where conversations take place before they even plan things out and plan on meetings. You know, of course, this kind of sentiment not just prevails among the ISIS, but you have, beheading calls that were made even in India, locally, right after Nupur Sharma made that comment against Prophet Muhammad. You had cases of beheading that were reported from different states, which really raised alarm bells when it came to national security. And now you have people from the outside, ISIS sending out lone wolves to enter India and carry out this attack. And this time, Russia and their security force has apprehended this man who they believe is a suicide bomber and has set out to target someone from the ruling circles of India. A huge worry for India and our security agencies, of course. Any word on if India has established communication with Russia on this matter? Well, we do not really know, but we do know that on this matter specifically, after the report, we don't know. But Nabila, there is a surety on the kind of conversations that take place. So the Indian authorities must have been informed even before the arrest was made. They have been intelligence sharing between India and Russia is almost on a real-time basis. So unlikely that India would have been kept in the dark on such a high-profile attack being planned against an Indian individual on Indian soil. But we do not have details as to what kind of intelligence sharing took place between Moscow and New Delhi, and what kind of intelligence has been shared for them to look for the support structure, if at all the person had within India. So we have to wait and see and wait for officials to start speaking to us on the record
or off the record. Right. You know, Geeta, do stay with us. I'm going to quickly cut across to former diplomat Suresh Goyal joining us on the phone line for some more clarity on this. Mr. Goyal, this possibly is the first of its kind, a case that's come up in Russia, where Russian security forces have apprehended this man that we see on our screens here. They say that he's a suicide bomber. He was attempting to carry out an attack, a terrorist attack in India, and someone against the ruling circles of the country. You know, if we could loosely translate that, possibly someone he wanted to target within the BJP top leadership. How would you look at this case? Well, first of all, we have, I think you said earlier, we have a very effective information sharing understanding between India and Russian Federation, under which we share all kinds of intelligence information. And therefore, on this, it's a good thing that finally the Russian operatives were able to get the information from about this and alert India. That is number one. Number two, we do not know who the target is, whether it's BJP or which political high-profile leader it is. But it's the first time, to my understanding, I'm not quite sure I will need to check on that again, that there is an attack directly by an ISIS operative on a target in India. And if that is the case, we will need to become even more firm about the security, and we will need to take cognizance of the fact that ISIS will be now operating in India not just through LEP or JUM, but directly also, and that's a great danger, that's a great security threat to India and India's government. So that means we will need to really hike up our own security apparatus. Yes. At this point, of course, the Home Ministry taking cognizance of this kind of infiltration by terrorists. This is not the first time that a terrorist is trying to enter Indian borders. Of course, the first time that Russia has raised an alarm saying that they found a suicide bomber who set out to attack an Indian senior leader. Someone from the ruling circle. So they found this man in Russia. He landed into Russia with all valid documents and then was trying to get paperwork sorted to enter India. Is that as easy, Mr. Goyal? Is that, sorry, what? What is the last word? Is it so easy for a man to get his paperwork done to enter India? What are the credentials needed for a man of this nature to enter India? Nothing is easy. But a person who is determined to carry out an attack, stopping him from carrying out an attack becomes that much more difficult, because that person would have done a review to understand what our security lines are, what our security operations are, and he would have built in his own operation all kinds of measures to counter our security lines. Therefore, it makes it not easy but more difficult. But please do remember, there have been operations in the past even in India when totally unexpected lines have been taken. Please remember Mrs. Gandhi. She was assassinated by her own bodyguard, totally unexpected. Therefore, a person who is determined to carry out an attack can do so, and it means that we need to be extra careful. Yes. You know, Mr. Goyal, what we're really shocked here is that this man intended to enter India legally. He wanted to get his papers done. He wanted to fly into India, not like he was attempting to infiltrate through any of our porous borders, but wanted to, get valid legal documentation done and fly down to India and then carry out this terrorist attack. And then he claims that he already has a contact established in India where he had to be meeting someone and get some things done and sorted to carry out this terrorist attack. So this kind of communication that this man has managed to establish with people all the way from the ISIS recruits to people in Russia and then people in India, all via telegram. These operations are done in a manner that we don't even know that it's actually being done. It's done in the open. People know it is happening, but they can't relate it to a terrorist attack. And therefore, if a person obtains a visa from Russia on a passport which is not detectable as a false or suspect passport, enters into India, there are
at least 10,000 people, 20,000 people who enter through different checkpoints in India every day. Our immigration. All right, we've lost Mr. Goyal's connection there. Suresh Goyal, former diplomat, saying nothing is easy for anyone to be entering India to get documentation from whichever country. It's a long-drawn process. So this man intended to really carry out this attack, keeping his target in mind for God knows how long. But he was recruited by the ISIS apparently along the months of April, June, not very long ago. But he's been stern on his target. He's come into Russia again. No clarity on which country he belongs to, but he hails from the Central Asian region. Which country exactly? Clarity needed on that. But from what the Russian security agencies claim, that this man was attempting to get documentation done to enter India and carry out this attack. And it's scary to even know that this man has someone in India that he's already established contact with to try and give him some kind of help or provide him with some material to carry out this terrorist attack against someone from the ruling circles. Who was on the list of his target? पिछले 27 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनमें बहुत अहंकार आ गया है। वो सुनते ही नहीं है किसी की। वो कहते हैं कि क्या कर लेंगे लोग हमारा, लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। कांग्रेस को वोट देंगे तो हम कांग्रेस के एमएलएस को खरीद लेंगे, हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से जनता के सामने जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रही है। हम एक पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई से कैसे आपको छुटकारा दिलाएंगे, बेरोजगारी से कैसे छुटकारा दिलाएंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे। आज हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देने आए हैं। गारंटी मतलब कि अगर हम काम ना करें तो हमें अगली बार वोट मत देना। तो मैं बाद में बात करूंगा। आज मेरे को बहुत खुशी है कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर, जहाँ पे दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपनी फ़ोटो देखने के लिए तड़पते हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया जी की फ़ोटो छपी और उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। आज मैं उनको साथ में लेके आया हूँ। गुजरात के बच्चों का भविष्य हम कैसे बनाएंगे, गुजरात के बच्चों को हम कैसे अच्छी शिक्षा देंगे, पहले ये उस पर बात करेंगे, फिर मैं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, साथ ही गुजरात की आम आदमी पार्टी की बहुत विश्वसनीय मेहनती लीडरशिप और मीडिया के सभी साथी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को विकसित देश बनने के लिए एक बहुत शानदार शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है। बिना शानदार व्यवस्था के, हर बच्चे के लिए शानदार शिक्षा व्यवस्था के बिना भारत विकसित देश नहीं बन सकता। भारत दुनिया में नंबर 1 देश नहीं बन सकता। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक शिक्षा क्रांति शुरू हुई और उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, उनके विजन पर चलते हुए आज दिल्ली में दिल्ली के हर बच्चे के लिए फ्री शानदार विश्व स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित की गई है। दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए आज शानदार शिक्षा उपलब्ध है। दिल्ली के हर माँ बाप आज इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारे बच्चे के लिए केजरीवाल जी ने शानदार स्कूल बनवा दिए हैं। इसी तरह का काम अब पंजाब में भी शुरू हो गया है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वहाँ भगवंत मान जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो पिछले 5 महीने के अंदर अंदर इतनी तेजी से काम कर रही है शिक्षा पर कि आप देखिएगा बहुत जल्द वहाँ पे बहुत शानदार स्कूल देखने को मिलेंगे और वहाँ की रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
अच्छी शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है, वो चाहे गांव में रहता हो, चाहे कस्बों में रहता हो, शहरों में रहता हो, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो। अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है। तो आज मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आप सबके बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात के हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज से हम सपना देखना शुरू कर दें कि हम अपने बच्चों के लिए, गुजरात के एक एक बच्चे के लिए, गुजरात में पैदा होने वाले हर एक बच्चे के लिए एक शानदार शिक्षा की व्यवस्था लागू करेंगे। और वो शानदार शिक्षा की व्यवस्था गुजरात के गांव देहात से लेकर शहरों तक हर जगह लागू होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहर के कुछ स्कूलों को अच्छा करेंगे, जैसा दिल्ली में हर स्कूल को किया है। तो इसलिए आज मैं आपके बीच में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से केजरीवाल जी की शिक्षा गारंटी के रूप में गुजरात के सामने कहना चाहता हूं कि आप सब अरविंद केजरीवाल जी को मौका दें। गुजरात के सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या वो सभी लोग साथ साथ जो चाहते हैं कि गुजरात का आधार मजबूत करने के लिए, गुजरात को विकसित आगे बढ़ाने के लिए हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गुजरात के हर बच्चे के लिए फ्री और शानदार शिक्षा व्यवस्था गुजरात में दी जाएगी। फ्री और शानदार शिक्षा व्यवस्था। दूसरा, गुजरात के हर सरकारी स्कूल को दिल्ली की तरह से इतना शानदार बनाया जाएगा जैसे कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल होते हैं। जैसे हमने दिल्ली में हर सरकारी स्कूल को उतना शानदार बनाया है। और यहाँ के सभी विद्यालयों में टीचर्स की जो कमी है, वो टीचर्स की कमी तुरंत भर्ती करके दूर की जाएगी। किसी भी स्कूल में टीचर्स की कमी नहीं रहने दी जाएगी। मैं खुद गुजरात के स्कूलों में गया था और मैंने देखा था कि टीचर्स भी महीने महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किए जाते हैं। परमानेंट टीचर्स हर स्कूल में पूरी भर्ती करके किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्राइवेट स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों की दिल्ली में भी केजरीवाल जी की सरकार से पहले ये समस्या थी कि वहाँ फीस बहुत मनमाने तरीके से बढ़ाते हैं और पेरेंट्स एक बार अपने बच्चों को दाखिला तो करा लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके हाथों लुटने पर मजबूर होते हैं। हमने दिल्ली में करके दिखाया है और गुजरात में भी करके दिखाएंगे केजरीवाल जी के नेतृत्व में कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस किसी भी प्राइवेट स्कूल को नाजायज रूप से नहीं बढ़ाने दी जाएगी। तो इससे गुजरात के एक एक बच्चे को अच्छी, शानदार, फ्री शिक्षा की गारंटी मिलेगी। आज केजरीवाल जी की तरफ से मैं आपके समक्ष ये गारंटी रख रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुजरात के लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा के लिए केजरीवाल जी की इस गारंटी के आधार पर केजरीवाल जी को एक मौका जरूर देंगे। धन्यवाद। अब गुजरात में लगभग 1 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, उसमें 53-54 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और 44 लाख के करीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। दोनों के साथ धोखा होता है। जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं उनकी फीस मनमानी बढ़ा देते हैं, उनको ज़बरदस्ती करते हैं उनके साथ, और जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। तो अभी जो मनीष जी ने अभी आपके सामने पूरा खाका रखा, उससे गुजरात के इन 1 करोड़ बच्चों का भविष्य सुधरेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तभी गुजरात की तरक्की होगी और तभी देश की तरक्की होगी। और ये जो आज स्कूलों की और शिक्षा व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, ये भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कुशासन का नतीजा है। इनको अगर एक मौका और दे दिया तो 5 साल और खराब करेंगे ये लोग। अब मैं आपको स्वास्थ्य की गारंटी के ऊपर आता हूँ। गुजरात के सरकारी अस्पतालों का, सरकारी डिस्पेंसरी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, जानबूझ के ख़त्म किया जा रहा है। और इसलिए ख़त्म किया जा रहा है ताकि आदमी मजबूरी में प्राइवेट स्कूल अस्पतालों में प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाने के लिए मजबूर हो।
और प्राइवेट अस्पताल इतने महंगे हो गए कि अगर एक कोई बड़ी बीमारी किसी के हो जाए तो पूरी जमीन जेवर सब बिक जाते हैं, आदमी कर्जे में आ जाता है और कई किसान इस वजह से अब सुइसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनके पास बीमारी का इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते। दिल्ली में हमने ये व्यवस्था की कि दिल्ली में सरकारी अस्पतालों को पहले हमने शानदार बनाया, मोहल्ला क्लिनिक को शानदार बनाया, और फिर हमने कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे इस जात का हो चाहे उस जात का हो, चाहे आदमी हो औरत हो, इस धर्म का हो उस धर्म का, 2 करोड़ लोगों को सबको पूरा इलाज मुफ्त होगा। सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट, सारे ऑपरेशन, सब कुछ मुफ्त कर दिया हमने दिल्ली की जनता के लिए। पहली गारंटी स्वास्थ्य में मेरी ये है, गुजरात के हर व्यक्ति, गुजरात में रहने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा और अच्छा होगा। मुफ्त का मतलब ये नहीं कि सरकारी अस्पताल इतने खराब होंगे कि आप जाना ना चाहें, तो मुफ्त होगा और अच्छा होगा। दूसरी गारंटी, सारी दवाइयाँ, सारे टेस्ट, सारा इलाज, सारा ऑपरेशन, अमीरों का भी गरीबों का भी सबका मुफ्त होगा। अमीर प्राइवेट में जाना चाहें उनकी मर्जी है, लेकिन किसी से ये नहीं पूछा जाएगा बीपीएल कार्ड दिखाओ। जो सरकारी अस्पताल में जाएगा उसका इलाज मुफ्त होगा। तीसरी चीज, जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, हर गांव के अंदर एक गांव का क्लिनिक खोला जाएगा और शहरों में हर वार्ड के अंदर एक क्लिनिक खोला जाएगा। तो जितनी छोटी मोटी बीमारियां, खांसी, जुकाम, बुखार, उसके लिए आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, आपको बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। एयर कंडीशनड है, सारे के सारे शानदार हैं, वहां पे आप जा सकते हो। चौथी चीज, जितने सरकारी अस्पताल हैं आज गुजरात में, इनको प्राइवेट के मुकाबले अच्छा किया जाएगा, शानदार किया जाएगा, सेंट्रली एयर कंडीशन किया जाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों को अच्छा करेंगे और नए सरकारी अस्पताल भी खोलने की जरूरत पड़ेगी, वो भी खोलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहते हैं मुफ्त होगा और इलाज हो ही ना, इलाज शानदार होगा, अच्छा होगा। और आखिरी चीज, दिल्ली में हमने एक स्कीम बनाई है, अगर किसी का भी एक्सीडेंट होता है उसका पूरा इलाज हम मुफ्त कराते हैं, चाहे उसका प्राइवेट में कराना पड़े। अगर सीरियस एक्सीडेंट हो जाए और सरकारी अस्पताल में नहीं हो सकता तो बेस्ट से बेस्ट प्राइवेट अस्पताल में उसका इलाज कराते हैं, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। अभी तक पिछले 3 साल में 13,000 लोगों की हम जान बचा चुके हैं इस स्कीम के तहत, क्योंकि एक्सीडेंट होता है, लोग कोई उसको उठा के नहीं ले जाता अस्पताल, उसे लगता है मैं अस्पताल ले गया तो मेरे पल्ले पड़ जाएगा। हमने कहा आप अस्पताल ले जाओ, उसका सारा खर्चा हम देंगे, बस अस्पताल में ले जाकर उसको एडमिट करा दो। तो ये 5 गारंटी आज मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रहा हूँ। 1-2 चीज़ें और बात करना चाहता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं आया था, लगभग महीना 1.5 महीना पहले, तो कई सारे पूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन धरने पे, प्रदर्शन पे बैठे हुए थे। तो उनकी एक डिमांड ये थी कि जो गुजरात का रहने वाला व्यक्ति सेना में शहीद हो जाता है बॉर्डर पे, तो उसको उचित मुआवजा नहीं मिलता। दिल्ली में हम लोग, दिल्ली का रहने वाला अगर कोई भी व्यक्ति फौज में है और काम कर रहा है और बॉर्डर पे शहीद हो जाता है, हम उसको 1 करोड़ रुपए देते हैं। तो उस टाइम मैंने उनके बिहाफ पे मैंने ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको 1 करोड़ रुपए देंगे। मुझे बेहद खुशी है कि कल गुजरात सरकार ने ऐलान किया है कि वो भी अपने पूर्व सैनिक, कोई भी शहीद होगा तो उसको 1 करोड़ रुपए की राशि देगी। मैं इसके लिए गुजरात सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन एक डिमांड और है मेरी, हमारी दिल्ली में जो स्कीम है उसमें सैनिक भी शामिल हैं और पुलिस वाले भी शामिल हैं, क्योंकि पुलिस भी अपनी जान जोखिम में डाल के उनको बचाती है। तो अगर कोई पुलिस वाला भी किसी ऑपरेशन में शहीद हो जाता है, उसके परिवार को भी मैं खुद उनके घर जाके 1 करोड़ का चेक दे के आता हूँ। तो गुजरात पुलिस के भी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाए 1 करोड़ रुपए वाली स्कीम के अंदर, कि अगर गुजरात पुलिस का भी कोई व्यक्ति शहीद होता है तो उसको भी 1 करोड़ मिलेगा। दूसरी चीज, ये मैं नहीं कह रहा, ये जनता कह रही है कि ये जो 1 करोड़ इन्होंने ऐलान किया है, इन लोगों की मंशा नहीं है करने की। 3 महीने बाद चुनाव है इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि बाकी किसी भी राज्य में नहीं किया इन्होंने, बीजेपी वालों ने मध्य प्रदेश में भी नहीं किया, हिमाचल में भी नहीं किया, यूपी में नहीं, गुजरात में किया क्योंकि 3 महीने बाद चुनाव है।
तो जनता ऐसा कह रही है कि इनकी मंशा नहीं है करने की। पहले 1 लाख रुपए देते थे, अभी तक वो भी देते नहीं थे, कागजों में थे, लोगों को धक्के खाने पड़ते थे 1 लाख रुपए लेने के लिए भी। मेरा ये निवेदन है गुजरात सरकार से, अगले 10 दिन के अंदर पिछले 5 साल में जितने भी शहीद हुए हैं लोग, उनको सबको 1-1 करोड़ रुपए की राशि दी जाए, ताकि जनता को भरोसा हो कि आप देंगे, आप झूठा ऐलान नहीं कर रहे। और अगर गुजरात सरकार नहीं देती तो हमारी सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर, सरकार बनने के 10 दिन के अंदर 5 साल में जितने गुजरात के रहने वाले शहीद हुए, उन सबके परिवारों को हम 1-1 करोड़ रुपए की राशि देंगे। एक बात कि स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट ट्रांसपोर्ट में जो काम करने वाले हैं, उनकी तनख्वाह बहुत कम है। जो कच्चे कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बहुत कम है। वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मेरे से मिलने के लिए आए थे। मैं ऐलान करता हूं कि हमारी सरकार बनने के 1 महीने के अंदर उनकी जितनी मांगे हैं वो सारी मांगे पूरी की जाएंगी। सभी गुजरात सरकार के स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सभी ड्राइवर्स, कंडक्टर्स और दूसरे कर्मचारियों से उनसे निवेदन करता हूं कि जब आप बसों में चल रहे होते हैं, एक यात्री को बोलो कि अब बदलाव चाहिए गुजरात को, अब बदलना है। एक यात्री को बोलो कि इस बार झाड़ू पे वोट डालनी है। सारे ड्राइवर, सारे कंडक्टर लग जाओ, 3 महीने का टाइम है। सब लोग एक यात्री को, हर बस के अंदर एक यात्री को बोलो और खड़े होकर सामने बोलो कि इस बार झाड़ू पे वोट डालनी है। आपका काम करने की जिम्मेदारी मेरी, आपकी तनख्वाह 1 महीने के अंदर हम बढ़ा देंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो बताइए। वन बाय वन। आपको बीजेपी की तरफ से कोई संदेश मिला है? आपने ऐसा जिक्र किया है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, एडी का जो। हाँ, एक बार ही बता रहे हैं। मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि मेरे पास मैसेज आया कि 2 मैसेज थे, 2 पार्ट थे उस मैसेज के, कि एक तो आपके खिलाफ जितने ईडी के, सीडी के, सीबीआई के केस चल रहे हैं, इनको सबको खत्म कर दिया जाएगा, और दूसरा कि आप बीजेपी ज्वाइन करके, पार्टी तोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए और हम आपको सीएम बना देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई सीएम कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी में। तो मैंने कहा भाई, ये सीबीआई, ईडी जितने केस चल रहे हैं, इनकी सच्चाई तो मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सारे केस फर्जी हैं। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। इनफैक्ट मैं अरविंद केजरीवाल जी की टीम में हूँ ही इसलिए कि मैं एक कट्टर ईमानदार आदमी हूँ। मैंने अब तक सारा काम ईमानदारी से किया है, कट्टर ईमानदारी से किया है। तो इन फर्जी केस में कोई दम नहीं है। आप इनकी धमकियां तो नहीं दे सकते मुझको, इनसे नहीं डरा सकते। और रही सीएम कैंडिडेट बनाने की बात, सीएम बनाने की बात, तो मैंने स्पष्ट किया कि मेरा सपना सीएम बनना नहीं है। मैं यहां राजनीति में सीएम बनने के ख्वाब लेके नहीं आया। मैं जो ख्वाब लेके आया हूं वो ये है कि दिल्ली के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले, और आज मैं काम कर रहा हूं कि देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले, वो चाहे गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा। मेरा सपना ये है, मैं उस सपने पे काम कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि ये सपना अरविंद केजरीवाल जी ही पूरा कर सकते हैं। इस देश में कोई और नेता नहीं है जो देश की एजुकेशन को वहां ले जा सकता हो जहां से हमारे देश के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन मिले। तो मैं ये भी आप भूल जाओ कि मैं किसी सीएम कैंडिडेट बनने के, सीएम बनने के चक्कर में यहाँ हूँ। मैं तो अरविंद जी के साथ हूँ। अरविंद जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आदेशों पर, उन्हीं के डायरेक्शंस में दिल्ली में काम किया है और राजनीति में काम किया है। नाम बता सकते हैं आप? देखिए, जो लोग, जिन्होंने मुझे मैसेज दिया, उन्होंने मुझे कहा कि वेस्ट बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जी को हमने ही ज्वाइन कराया था, असम में हेमंत शर्मा जी को हमने ही ज्वाइन कराया था, फिर नारायण राणे जी से लेके और जो और ज्वाइनिंग उन्होंने कराई है। तो उन्होंने कहा कि हम पे आप भरोसा रखिए, हम लोग इसमें हैं
हम ही ज्वाइन कराते हैं, जयंत पांड्या जी को भी हमने ज्वाइन कराया था। तो अब आप पूछ लीजिए उन लोगों से उनको किसने ज्वाइन कराया था। वन बाय वन प्लीज, एक एक करके। जिसने आपको मैसेज भेजा वो कोई इंडस्ट्रियल ग्रुप है या कोई पॉलिटिकल पार्टी से? वो छोड़ दीजिए, आप चिंता मत कीजिए। ये तो वही लोग बताएंगे ना कि उनको किन्होंने ज्वाइन कराया था। मुझे दो तीन क्वेश्चन उन लोगों से भी पूछ लीजिए आप। सिसोदिया जी, दो सवाल है मेरे। पहला सवाल ये है कि हर्ष संघवी जो हमारे यहाँ के गृह राज्य मंत्री है, आपके ट्वीट को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है कि पहले ये तय कीजिए कि आप भगत सिंह की संतान है या महाराणा प्रताप की, क्योंकि दो ट्वीट में अलग अलग है। हम दोनों। दूसरा सवाल ये है कि वो जानना चाहते हैं कि कौन सा राजपूत समाज नाराज है। आपने लिखा है राजपूत समाज नाराज। मैं शहीद भगत सिंह का फॉलोअर भी हूँ, मैं महाराणा प्रताप की दिलेरी बहादुरी का फॉलोअर भी हूँ, मैं गांधी से लेके सरदार पटेल तक सबको अपना गुरु, अपने पिता तुल्य मानता हूँ और उनको अपने जीवन का आदर्श मानता हूँ। राजपूत समाज कौन सा नाराज है? आपने लिखा है राजपूत समाज नाराज है। पूरे देश में लोग नाराज हैं। एक मिनट, जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें। ये होना चाहिए था। ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, सारे समाज नाराज हैं। राजपूत भी नाराज हैं, ब्राह्मण भी नाराज हैं, बनिए भी नाराज हैं, एससी भी नाराज हैं, एसटी भी नाराज हैं, अमीर भी नाराज हैं, गरीब भी नाराज हैं, औरतों भी नाराज हैं, आदमी भी नाराज हैं। सब नाराज हैं कि मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से सताया जा रहा है। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। एक मिनट, गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3 महीने 4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी। किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है। किसको फायदा होगा? हम काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी। इससे देश का भला होगा क्या? सवाल यही है कि अगर नाराज है तो सिर्फ राजपूत समाज का उल्लेख क्यों किया गया? ये सामाजिक राजनीति कर रहे हैं आप। किसी समाज को क्यों जोड़ रहे हैं? चेंज क्यों कर दिया? क्या चेंज कर दिया? लीगल पॉलिसी जो थी सीबीआई की रेड होने के बाद तुरंत ही आप लोगों ने लीगल पॉलिसी को चेंज क्यों कर दिया? सीबीआई की रेड होने के बाद नहीं किया। 1 अगस्त को किया था। उसका कारण है 850 दुकानें खुलनी थी दिल्ली के अंदर। एक एक करके 350 दुकानें खुल पाई, 500 दुकानें नहीं खुल पाई। जिस तरह से केंद्र सरकार और सारी एजेंसीज दबाव डाल रही थी हमारे अफसरों के ऊपर, अफसरों ने उस पॉलिसी के तहत नई दुकानें का ठेका करना, नीलामी करने के लिए मना कर दिया। एलजी का दबाव था, पुलिस का दबाव था, सेंट्रल एजेंसीज का दबाव था। वो पॉलिसी बहुत अच्छी है, हम किसी के साथ भी डिबेट करने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। अगर हम वो नहीं करते, सारी दुकानें बंद हो जाती और वहां पे नकली दारू बिकनी चालू हो जाती, जैसे आज गुजरात के अंदर है। इसलिए हम पुरानी वाली पॉलिसी पे चले गए। पुरानी पॉलिसी में 100 कमियां हैं, लेकिन कम से कम नकली दारू तो नहीं बिक रही है। हमारे को कोई लालसा नहीं है। जैसा मनीष जी ने कहा, ये सीएम बनने नहीं आए और मैं भी पीएम बनने नहीं आया। हमारा एक ही सपना है। 75 साल हो गए हमारे देश को, अभी तक हमारा देश पिछड़ा क्यों रह गया? हमारे बाद जो देश आज़ाद हुए वो हमसे आगे चले गए। सिंगापुर आगे चला गया, जापान आगे चला गया, जापान तहस नहस हो गया था, जर्मनी तहस, हम पीछे क्यों रह गए?
वो इन्हीं लोगों की वजह से रह गए। अगर इनके भरोसे, तो अब हमारे पास हमें सबको मिलके देश को आगे बढ़ाना है। मेरा एक ही सपना है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना है। वो नेता और पार्टियां नहीं कर सकते। आप सब लोगों के साथ मिलके 130 करोड़ लोगों को एक साथ मिला के और इस देश को नंबर 1 बनाएंगे। गुजरात में सरकार बनेगी तो क्या यहाँ भी लीकर मुक्त करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जो पॉलिसी आज नशाबंदी की चल रही है, वो नशाबंदी की पॉलिसी लागू रखेंगे, लेकिन गैर कानूनी शराब का धंधा नहीं करेंगे। वो धंधा करते हैं, 10,000 करोड़ की दारू का धंधा करते हैं, ये उनका धंधा है। हम अपनी पार्टी को गैर कानूनी शराब बेच के नहीं चलाएंगे। आप बहुत पॉपुलर नेता है और आप जिस दिन ये पूरा मामला हुआ रेड का, उसके दूसरे दिन आपने गुजरात आने का ऐलान कर लिया, लेकिन यहाँ की आपकी टीम कह रही है कि आपके ऊपर हमले का खतरा है। आपका कोऑर्डिनेशन स्टेट से या उनसे ठीक से नहीं होता है, या कैसे आपके पास ये इन्फॉर्मेशन? नहीं, मैं समझा नहीं। आपके ऊपर हमले का खतरा है, ऐसे यहाँ के लोकल नेता कह रहे हैं। वो ये कराते हैं ना दूसरी पार्टी वाले। उन्होंने डीजी से परमिशन मांगी थी, आप तो आपने गुजरात में आने का ऐलान दूसरे दिन। दूसरी पार्टी वाले सब कुछ कर सकते हैं, गुजरात के लोग नहीं करेंगे। ये दूसरी पार्टी वाले करेंगे, गुजरात के लोग बिल्कुल। गुजरात के लोग अब हमें प्यार करते हैं। गुजरात के लोग इनके 27 साल के शासन से तंग आ चुके हैं। अच्छा, आप एक छोटी सी चीज बताओ, कोई आदमी अगर आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, आप उससे प्यार करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। कोई अगर आपके परिवार का अच्छा इलाज करा देता है, आप उससे प्यार करोगे कि नहीं करोगे? कोई कहता है मैं आपको 24 घंटे बिजली दूंगा, मुफ्त बिजली दूंगा, ये तो करते नहीं है सब, मैं करता हूं, तो मेरे से क्यों नहीं प्यार करेंगे गुजरात के लोग यार? लेकिन केजरीवाल जी, कहीं ये इमोशनल वाला कार्ड तो आप नहीं खेल रहे हैं ना, क्योंकि ये पॉलिटिकल गेन लेने की भी आरोप लग रहे हैं। वो तो आरोप लगाते रहेंगे, उनको मत सुनिए आप, गुजरात की जनता को सुनिए। गुजरात आज ये सारा, मैं आपसे एक पूछता हूं प्रश्न, ये सारा रेड वेड अब अचानक क्यों चालू हो गई? इसको गिरफ्तार कर लिया, एक और कल केस एक और रजिस्टर कर दिया, अभी तो बहुत गिरफ्तारियां होंगी। ये सब गुजरात के चुनाव की वजह से। दिसंबर में खत्म हो जाएगा, दिसंबर तक हो रहा है बस, ये दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है, इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है, मेरे को भी करने, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, होमगार्ड्स की जितनी भी मुद्दे हैं, होमगार्ड्स की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मैं आश्वासन देता हूं कि सरकार बनने के 1 महीने के अंदर हम पूरा करेंगे। होमगार्ड से भी मेरा निवेदन है, जम के प्रचार करें, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं, आपके मुद्दों का समाधान हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। All right, the Aam Aadmi Party versus BJP. Kejriwal lauding Sisodia as the best education minister, hitting out right there at the Bharatiya Janata Party, and this was Kejriwal's scathing attack on the BJP. They had a live press conference. They've been hitting out at the BJP. This, of course, in the backdrop of the ED heat on Manish Sisodia as well. That's our big story at this point of time. We'll get you more reactions from the BJP as we go along the way. But that's the biggest story we're tracking at this point. There's also a mega BJP protest outside Kejriwal's residence. Effigies of Kejriwal and Sisodia burned. There's an explosive face-off that is happening after Delhi Deputy Chief Minister claims BJP had a plot to split the Aam Aadmi Party, and the Aam Aadmi Party now responding. Also speaking about how people in Gujarat are unhappy with the Bharatiya Janata Party. That's also the other big point brought out by the Aam Aadmi Party, saying people of Gujarat are tired of the 27-year-old rule of the Bharatiya Janata Party, saying BJP capable of arresting Sisodia, and he's fearing arrest now because of the ED heat on him, saying that Sisodia deserves Bharat Ratna. In fact, Atishi Marlena also a while back had a press conference where she spoke about how
anyone who's outside of BJP is being targeted by the central agencies, and how Manish Sisodia is on the radar of the Bharatiya Janata Party and they are not allowing him to function. In fact, Arvind Kejriwal also spoke about how Sisodia was featured in the front page of American newspapers for the education model that he has created in Delhi, and that is something that is not going down well with the Bharatiya Janata Party, according to Kejriwal. And he says that Sisodia deserves a Bharat Ratna, not the Enforcement Directorate, not arrest, but a Bharat Ratna. Kejriwal, Manish Sisodia together have taken on the Bharatiya Janata Party in Gujarat. Kejriwal lauding Sisodia as the best education minister. BJP capable of arresting me and Sisodia, that is what Kejriwal is saying. And that was the live press conference of the Kejriwal of Aam Aadmi Party. We'll get you a reporter to bring you up to speed with what the BJP's reaction is as far as this story is concerned. The BJP is holding a massive dharna against Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia and the Aam Aadmi Party government. A sea of BJP workers led by Adesh Gupta descended at Delhi Chief Minister Kejriwal's residence demanding the resignation of Sisodia and Health Minister Satinder Jain. Protesters tried to storm Kejriwal's residence, clashed with the police and burnt Aam Aadmi Party leaders' effigies. Meanwhile, ED is all set to probe foreign remittances by event management companies linked to the excise policy. CBI has also shared some documents to link the Enforcement Directorate in connection with this case. A lookout notice has now been issued as well against 8 out of 9 people named in the FIR. The BJP has claimed that the accused are associates of Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. AAP has alleged that the charges are fabricated and the numbers floated by the BJP remains unsubstantiated by the CBI. हम पहले दिन से कहते हुए आए हैं कि केंद्र सरकार ने जितनी भी जांच एजेंसियां भेजनी हैं वो भेज दें। उन्होंने सीबीआई को भेजना है, उन्होंने ईडी को भेजना है, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना है। हमें अपनी ईमानदारी पे भरोसा है। हमने एक पैसे का भ्रष्टाचार ना तो कभी किया है ना कभी करेंगे। मैं 24 घंटे पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको देता हूं इस चुनौती के साथ कि अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, जैसा आप अपने आप को प्रमाणित करते हैं, बाहर निकल कर आइए और जो सवाल जनता के हैं उनका उत्तर जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है इन सभी गंभीर आरोपों का उत्तर न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और इश्तिहार का बजट बढ़ाकर टिम्बकटू टाइम्स में भी आप एक इश्तिहार दे के बच जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता के लिए शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर पाई, रोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाई। वहाँ पे महंगाई से लड़ने में लोगों की कमर टूट गई है, उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दें गुजरात के लोग, तो 5 साल में वो करके दिखाएंगे जो गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन में जितना अच्छा काम नहीं देखा होगा। इसके लिए हम आज गुजरात जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। मैं तो यही कहूंगा, बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार। जो आपने शराब माफिया दोस्तों को पैसा दिया है, दिल्ली के खजाने को लुटाकर दिया है, आखिर उसके जिम्मेदार जो है वो सिसोदिया है। और इसीलिए वो इस तरह की बातें करते रहते कि अब ये होगा, अब ये गिरफ्तार होंगे, अब वो गिरफ्तार होंगे। क्योंकि भाई जिसने काले कारनामे कर रखे हैं, जिसके सामने कर रखे, उन्हें पता है कि हमने कब साइन किए थे, किस फाइल पर। अगर ये पॉलिसी किसी तरीके से फेल की गई और किसी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया, तो वो उस वक्त के एलजी ने किया।
उन्होंने पॉलिसी को हाँ करके ऐन मौके पे उसको पलटा है। सुबह सुबह एक आरोप लगा दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तोड़ करके बीजेपी में आ जाइए, सारे केस बंद। अब ये मनीष सिसोदिया जी सुबह सुबह क्या भांग खाकर उठते हैं, क्या सुबह सुबह अपनी 1+1 की जो स्कीम है शराब की, क्या उसको ये अवेल कर लेते हैं, मैं नहीं समझ पाता। उनको सुबह सुबह उठकर प्राणायाम करना चाहिए, उनको कपालभाति करनी चाहिए, भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, तो उनकी बुद्धि, उनका मन वो शांत रहेगा। मगर सुबह दिल्ली में घटना हो रही है आज, जो केजरीवाल अपने को इतना बड़ा समझते हैं कि देश का प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। 2 स्टेट में सत्ता में हैं वो लोग, और दोनों स्टेट मिलकर 20 पार्लियामेंट्री सीट है। अभी पता नहीं एक भी सीट उनके हाथ में है कि नहीं, एक तो रिजाइन कर दिए थे। तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि इसीलिए उनको टारगेट बनाया जा रहा है। ठीक है, उसका एक सीमा भी होनी चाहिए। जब कंप्लेन आया है तो उसका इंक्वायरी भी हो रही है, कोर्ट में उसका समाधान हो जाएगा। Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia has made a serious allegation against BJP. He says he received a message from the Saffron Party which said that the CBI and ED cases against him are going to be closed if he joins the BJP. Sisodia was being probed by the CBI in connection with the liquor policy, says he was a descendant of Maharana Pratap and a Rajput, would rather be beheaded corrupt rather than call a corrupt conspirator. Meanwhile, BJP has slammed Sisodia for invoking Maharana Pratap, saying that he has insulted Rajput community. BJP has rubbished Sisodia's allegations, saying they would never invite a corrupt person like him to the party. Amidst the uproar on the CBI raids, Manish Sisodia will join Delhi Chief Minister Kejriwal on his visit to poll-bound Gujarat, and they've been hitting out right there at the BJP already. This is going to be Sisodia's first trip outside the national capital ever since the raids on him. केसीआर की बेटी जो हैं उनका इसमें रोल है, के कविता का इसमें रोल है। और के कविता जो है मीटिंगें करती रही ओबरा इसमें। के कविता जो है शराब के लोगों से, चड्डा परिवार से उन्होंने मीटिंग की, चड्डा परिवार का पैसा लेके उन्होंने फैक्ट्री डीसील करा के दी उनकी। तो ये सारा के कविता का रोल रहा है पैसे लेने देने में बहुत बड़ा। The allegations that are made on me by BJP party and their party people are मनीष सिसोदिया जी के साथ वही प्रयोग करने जा रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो प्रयोग उन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो प्रयोग उन्होंने बंगाल में किया, जो प्रयोग उन्होंने गोवा में किया, अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, वही प्रयोग वो करना चाह रहे थे। ईडी और सीबीआई की जांच दरअसल मनीष सिसोदिया को तोड़ने की कोशिश थी, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश थी। इस बात का खुलासा मनीष सिसोदिया जी ने किया है। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, देशद्रोही व्यक्ति को, जो सीए के तरह सर तन से कलम करने वालों का मदद करने वाला सिसोदिया, भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी न छुएगी। भाजपा ऐसे लोगों को जो किसानों के रूप में यहां पर खालिस्तानी बॉर्डर पर आकर बैठ गए थे, उनकी समर्थन देकर उनके साथ चलेगी। भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी नहीं छुएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी को अप्रोच करते हैं और अप्रोच करके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओगे तो सारे केस बंद कर दिए जाएंगे। मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया जाता है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने शिवसेना के ही एक ब्रेकअवे एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया, तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, अपने साथ एमएलए लेकर आ जाओ, हम तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। सियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये जितना बौखलाहट है, ये सब यही बताता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के लंबे और बड़े दलदल में घुस चुके हैं।
एजेंसीज को ये सारे का साक्ष्य मिल चुका है ऐसा लगता है, और अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। जहां तक ये बात है कि भाजपा आपको शामिल कराना चाहती है और आपके केस खत्म कर देंगे, तो मीडिया में और पॉलिटिकल सर्कल में सबको पता है कि आपने इस केस को खत्म कराने के लिए और बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, किस किस को आपने कोशिश की है अप्रोच करने की, मिलने की, लेकिन आपके लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं, नहीं खुलेंगे। और ये बात आपको पता है, इसीलिए जब कोई चोर पकड़ा जाता है, कोई भ्रष्टाचारी, कोई रिश्वतखोर पकड़ा जाता है, वो कैसे बिलबिलाता है, ऐसे ही आज आप और केजरीवाल बिलबिला रहे हो। कोई चोर, कोई भ्रष्ट, कोई रिश्वतखोर महाराणा प्रताप जी का इस प्रकार नाम ले, ये महाराणा प्रताप का अपमान है। मनीष सिसोदिया जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। राजपूत समाज के कई युवाओं के मेरे पास फोन आ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। इस प्रकार से आपको चोरी पकड़े जाने पर, जेल जाने के समय महाराणा प्रताप जी याद आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। सिसोदिया जी, आपको राजपूत समाज के प्रचंड आक्रोश का सामना करना पड़ेगा इस प्रकार से महाराणा प्रताप जी का अपमान करेंगे। Breaking news just coming in. Violent protests in Patna. BJP has accused ADM of lathi charging teachers who are protesting for jobs. That's the massive protest that's going on in Bihar. Visuals on your screens right now. Just take a look at Patna right there. Those are visuals coming from Patna, Bihar. Seen in the video, a youth being thrashed brutally. The video has been shared by Bharatiya Janata Party's Shehzad Poonawala. Teachers are protesting over jobs, and the accusation is that the ADM is lathi charging teachers who are protesting for jobs. See, take a look at the youth that is being thrashed brutally right there. We're cutting across to our sister channel Aaj Tak for more on this story. आज जो दिख रहा है वो बहुत ही अफसोसजनक है। आंदोलन कोई भी करता है, आंदोलन को शांत करने के भी अपने एक तरीके होते हैं, पर घेर करके एक व्यक्ति को पीटना यह बहुत ही गलत है। तस्वीरें तो वाकई सर सबके सामने, लेकिन अभी हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़े थे, आरजेडी नेता। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे तत्व इसमें घुसे थे जिन्होंने इसको उग्र बनाया और इशारों में निशाना बीजेपी की तरफ था। वो तो कहेंगे ही, उनका फर्ज है, उसी के लिए उनको काम के बदले सब कुछ मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन इशू यह है कि एक व्यक्ति को घेर के एडीएम पीट रहा है, यह क्या मॉब डिस्पर्स है? अगर भीड़ को हटाने का क्या ये नया तरीका अब याद करेंगे कि कोई अगर भीड़ की बात करेगा तो उसको पकड़ करके व्यक्तिगत तौर पर पीटा जाएगा, वो भी एक एडीएम स्तर पर? क्या एडीएम किस नाते पीट रहे हैं? वो या जानबूझ करके एक, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सर एडीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए। संजय जायसवाल जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आज तक से। तो बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया और कहा कि एडीएम पर तत्काल कार्रवाई करो, क्यों लाठीचार्ज छात्रों पर किया गया। अब एक बहुत छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज। All right, this is the big story that is coming in right now, the video of which has been posted by Shehzad Poonawala of the BJP, accusing ADM of lathi charging teachers who are protesting for jobs. Just take a look at the way the youth was brutally thrashed right there. We'll get you reactions and our reporter from Ground Zero getting you up to speed with the very latest in moments from now. That's the big breaking news coming in at this point. This is a massive protest in Bihar. Violent protest in Patna. Visuals from Patna. Just take a look at the youth that is being brutally thrashed. It's just distressing. I just want to say it's a very distressing visual that is coming in at this point. These are massive protests that are happening in Bihar, and the BJP has accused the ADM of lathi charging the teachers who are protesting for jobs. The prospective teachers are on a warpath, and seen in the video is a youth that is being, a young man who is being brutally thrashed. The video has been shared by BJP's Shehzad Poonawala. We'll get you more on this story, but let's try to get Shehzad also on the story. But I'm just taking a look at Shehzad's timeline to
He has tweeted, and I quote, "Look at the ADM's hooliganism, lathi charge on those seeking jobs in teacher posts. ADM did not even care about the tricolor and brutally beat up the young man. RJD had promised employment, but is giving them lathi. Free run for criminals and lathi for youth," unquote. This is a grave story. This one, this kind of brutality is something which is a matter of huge concern. We'll wait for the authorities to also respond to why this kind of brutality right there. In fact, you can see on the visuals right there that the man was also at one point holding a tricolor. It's on Shehzad's Twitter timeline too. This is a video that has been put out by Shehzad Poonawala talking about ADM's hooliganism, saying that lathi charge on those seeking jobs in teachers' posts. Shehzad further goes on to say ADM did not even care about the tricolor and brutally beat up the young man. The RJD had promised employment but is giving them lathi. Free run for criminals and lathi for youth. And the protests are still underway in Bihar. We'll get you more details as we go along the way. Our reporter will also be joining us for the very latest as far as the story is concerned. This is a protest in Bihar. Visuals coming in from Patna right there. Prospective teachers at the moment on warpath, and Shehzad Poonawala hitting out at the current administration in Bihar. Violent protests in Patna. Those are the visuals coming in. You can see the visuals of the violent protests. The prospective teachers are on a warpath. The BJP accusing ADM of lathi charging teachers protesting for jobs. In the video, you can see how a young man is brutally thrashed. The video has been shared by Shehzad Poonawala of the Bharatiya Janata Party. In fact, Shehzad has also put out a tweet about half an hour back speaking of ADM's hooliganism and the lathi charge on those who are seeking jobs in teacher posts, which means these are prospective teachers. They're looking for jobs and hence they were protesting. And the allegation is that the ADM is lathi charging the one who are protesting, which is the prospective teachers who are looking for jobs, are being thrashed brutally. And hence, Shehzad goes on to say RJD promised employment to them but is giving them lathis. It's a free run for criminals and lathis for youth in Bihar. Rohit Singh will be joining us in moments from now on this story. He's right there and will get you all the details in terms of what really happened right there. This is a tweet that has been put out by Shehzad Poonawala with some grave allegations and accusations, but you can also see the video. The visuals are speaking for itself. You can see the young man being brutally thrashed by ADM too. Rohit Singh is joining us on the phone line for more. Rohit, what happened there? Teddy, basically what happened is that all the aspirants who want to become teachers in Bihar and who have qualified the central teachers eligibility test, and they are demanding that they should be appointed. They want that they should be given job because they have already cleared the central eligibility test. But despite that, they have not been provided any kind of job, and this agitation of theirs is going on for the past few months. And in this connection today, almost 5,000 job aspirants, they came to Patna and they wanted to agitate at the Gardani Bagh area, which is a designated place to protest. And they were stopped at the Dak Bangla roundabout, and the police later had to resort to lathi charge, and they beat up several job aspirants brutally, in which several job aspirants were hurt badly. Blood was coming out from their various parts of the body. They were rushed to the hospital, and the police also had to resort to using water cannons to disperse the mob. But it was like a complete battlefield, like a situation at Dak Bangla Chauraha, and the cruel face of, in fact, the police and the administration came to light, and several job aspirants were
brutally and mercilessly beaten up by the police, who had come to Patna demanding that they should be given jobs because they have already qualified the teachers' eligibility test. But why this kind of brutality? What is going on? Why was this young man thrashed like this? You see, there is massive anger amongst these job aspirants, and several aspirants were also having the tricolor in their hand, and they were agitating on the road, and that is when you see in this picture that the ADM Were the protests violent? Were the protests violent at all? Or were the protests non-violent? Because if the protest was non-violent, there's no reason for this kind of brutality. Well, the protest was non-violent. It was not that as if these students had come armed with lathis or dandas, but they were stopped by the police and state administration at the Dak Bangla roundabout, and they were not allowed to move forward. And that is what agitated that they wanted to go to the Gardanibagh area, the designated. But the visuals that we are getting, Rohit, are of absolute barbarism. The barbaric act of the police of, brutally thrashing this young man for what? For protesting, which is his democratic right in this country. Well, absolutely. The kind of visuals what we are seeing is extremely brutal, and mercilessly these students, these job aspirants are being beaten up. It's not, as I told you, they were not armed with any lathis or dandas, and as if that they attacked the police or administration officials who were present there. But because they were in large numbers and keeping in mind the law and order situation, the police started lathi charge on them, beat up several job aspirants very mercilessly, brutally, in which several job aspirants were blood were oozing out from the bodies, from the various parts of the bodies. They were rushed to the hospital also, and big questions being raised because you see a few days back when the new government has come in place, Tejasvi Yadav or maybe Nitish Kumar, they are all promising jobs, 10 lakh jobs, 20 lakh jobs, but these but what is the, do we have a reaction at all from the current administration, from the new government on, what is this kind of brutal atrocity on somebody who's just protesting in a non-violent manner in Patna? Do we have any reaction from them, any explanation from them? Chelsea, could you just repeat your question? I'm saying, do we have any reaction from the ruling party? No, not at all. Nobody has come forward to speak on this entire issue about what has happened. Neither Tejasvi Yadav nor Nitish Kumar or anyone from the ruling party or even the education minister, nobody has come forward to speak on the issue, and that is why these job aspirants are even more angry because the government has promised jobs for them, and they have been demanding. It's a long pending demand. That is a big demand, and that is a big story, Rohit. But here, my myopic point here is on this one young man who is being brutally thrashed. We can see in the video as well. How is it that the local police can really beat up and thrash a young man for just protesting, and for which the administration needs to answer and take due action against the policemen over there? Well, absolutely. You see in this visual that this job aspirant is having a tricolor in his hand. He's protesting, and it's the kind of pain he is going through because he has not been given job. He has not been appointed despite clearing the central teachers eligibility test. So that is the kind of anger he has, and he was expressing that anger on the streets of Patna when the administration started lathi charging him. You see in this picture, he's holding the tricolor in his hand, but despite that, the ADM there who was deputed there, Mr. KK Singh, he started mercilessly hitting at this person, and he was very injured, and he has been rushed to a hospital. And the kind of pictures that has come is extremely brutal and barbaric here. Jesse. Absolutely. There needs to be due action and course correction by the ADM as well, and hence the Bihar government needs to step in, the administration needs to step in.
to conduct the due diligence on the ADM and take necessary action for unleashing this kind of a brutality on a young innocuous man who's just trying to protest right there because he's a prospective teacher, right? Well, absolutely. There needs to be some sort of action and that must be taken, but remains to be seen whether the Patna administration or even the state government will take cognizance of this brutal act by this ADM KK Singh, and whether some sort of action is taken against him or not. That remains a big question. But these pictures are extremely brutal and barbaric, where you see this ADM holding a stick in his hand and mercilessly beating this job aspirant who was holding a tricolor and just protesting because he wanted job, as he was a qualified teacher, but he was not being provided job in the state government. So we will continue following up on the story. We won't let the story go. We will get more reactions. We will also ask the administration the action that they are going to be taking against the ADM for unleashing this kind of, brutality on a young man right there who is protesting. We'll get you more reactions. For now, we're compelled to slip into a very short commercial break. When we return, up next, Russia detains an ISIS suicide bomber who was plotting a high-profile terror attack in India. Bomber makes a sensational admission he wanted to avenge insult to the Prophet. You are watching India Today. I don't read the news. I read between the lines to tell you the true version of events, the true story of our times. To document grief, the toughest assignment for any journalist to be. From those who matter. Women politicians going to stick up for each other. Of those who should matter. I document the truth. I don't distort the truth. I don't glamorize the truth. I don't gloss over the truth. The ghosts of India's contentious medieval history have come knocking again. I hustle for the truth. On the ground, in the newsroom, in the studio. I don't try to grab eyeballs. I inform you to make you see the point. To the Point with Preeti Chaudhary. At these times, only on India Today. Traveling from different parts. Armed with facts, Looking at political back. she takes the news by its horns. Do you think the future of these students are not hampered? Fierce, bold and direct, setting the tone for the biggest stories. From every corner and every angle. Expect nothing but the unfiltered truth. News first, niceties later. Watch me, Nabila Jamal, on India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Will metaverse replace our reality? Can it? We don't know that yet, but in its present form, it kind of is a duplicate of the physical world. But the only way to access it is via the internet. The idea of metaverse has its roots in many sci-fi narratives from the 90s. It exists either as immersive online games, workrooms, virtual concerts, or much more. So what can you do in the metaverse? Apparently a lot.
From watching your favorite pop star to working as personalized avatars in a virtual workspace, Metaverse can make that happen. It will eventually be possible to do exactly what we do in reality thanks to a virtual reality freed from physical constraints. As interactions increase, it will be possible to meet people, make purchases, and pay in cryptocurrency or go sightseeing while staying at home. Well, virtual tourism seems like a nice idea in the comfort of your room. What tools would you need for Metaverse? You'd need virtual reality headsets and a good internet connection for starters. Virtual reality headsets will allow us to immerse ourselves in 3D worlds in the form of avatars animated by our movements. But it will require an enormous amount of computing power to allow millions of people to act simultaneously in that virtual space. Even devices that recreate taste, smell, and touch could be invented. What do you think? Are you ready for the Metaverse? are watching India Today. An ISIS plot for possible revenge against Nupur Sharma has been busted in Russia. The Russian Federal Security Agency has detained an ISIS suicide bomber. The terrorist was to leave Russia to carry out a high-profile attack on India. Top leaders of the BJP and Indian central authorities were on target. The suicide bomber, who was recruited between April and June this year, has made a huge admission. He has told Russian authorities that he was asked by ISIS to take revenge for insult to the Prophet. He also said that he had met a handler in India who would provide him with the necessary materials for a terrorist attack. The suicide bomber was recruited via Telegram app. He met ISIS leadership in Turkey. This is a big one that we're tracking at the moment, the big story coming in right there. Abhishek Bhalla and Geeta Mohan will be joining us for more on this story. Do we have Abhishek or Geeta with us? The ISIS plot for possible revenge against Nupur Sharma busted in Russia. This is huge. The Russian Federal Security Agency detained ISIS suicide bomber. The terrorist was to leave Russia and he was supposed to carry out a high-profile attack in India. And the top leaders of the Bharatiya Janata Party and Indian central authorities were on the suicide bomber's target. We're getting some reactions coming in, I'm being told. Let's listen in. ISIS, Islamic State, is an international terrorism, and they don't know any boundaries, and they can come from one country to another. Now, what is happening is that the Islamic State, possibly from Turkey, from Syria, all these countries, this is hub center of Islamic State. Now, coming to Russia, possibly from Russia, then coming to India, or from Russia coming via Nepal to India. Now, this become an unsuspecting route. So, overall, a good move by the Russian agency. They could nab it, but we should go into more detail. What was their modus operandi? What way were they doing? Who was the target? Who was the support system available within the country? We have to do much more homework. But today, the requirement as far as the country is concerned, the agencies have to have more cooperation at national and international level, and within the country between state and also the central government, because terrorism is spreading like a fire, and India is one of the countries which is on their radar and also on the hit list. Big story. Russian Federal Security Agency detained this ISIS suicide bomber. We're bringing you that all angles of the story. The terrorist was to leave Russia to carry out a high-profile attack on India, is what we know so far. What we also know so far is that the top leader of the BJP and Indian central authorities were also on target. Geeta Mohan, our foreign affairs editor, is joining us. Geeta, what more can you add to the story that is coming in, and what more do we know on this front? Well, Chetty, the fact that the man who has confessed and the video now is out clearly spells out that he is indeed an IS operative, and that he was inducted in Turkey in the month of
between April and July, and that he was planning on visiting India. This is to avenge the insult to Prophet Muhammad. So a very clear reference to the kind of controversy we've seen in the recent past after BJP's Nupur Sharma made those comments with regards to Prophet Muhammad. So again, we do not have a name, a specific name in terms of who the target really was, but suffice to say that certain quarters where the insult really came from were a target. This is one high representative of the ruling circle, is what the FSB has said, and has not divulged details. But the clarity with which this individual, the detainee, was caught, the terrorist, has spoken on what the plan was, how he was going to India. He had got all the material that he needed to deliver, and suicide bombing was to be carried out to take out whoever they thought was a target for them. So a disturbing development when it comes to how there are individuals and terrorists from various fringe groups of the Islamic State from various countries who are now looking to enter Indian territory and carry out attacks such as a suicide bombing attack or a suicide bombing incident. So very disturbing. But there was intelligence sharing, and always has been, between Russia and India. We do not really know at this point in time, at this juncture, what's the kind of details and evidence that has been provided and shared by Russia with New Delhi. But certainly, whatever happens, there is going to be some sort of operation, so to say, within India as well, with regards to what the plan was, and to foil the plan with people if they are supporting this terrorist organization within India. Thanks, Geeta, for joining us with the latest details. We're moving on now. The other story that we're tracking here on India Today, the showdown over the egg attack on Siddaramaiah has triggered a full-blown political fight in Karnataka. Amidst the face-off over Savarkar and the attack on Siddaramaiah's convoy, the BJP and Congress are now embroiled in war of words over Siddaramaiah's eating habits. It all started with Karnataka BJP chief Nalin Kumar Katil alleging that Siddaramaiah ate meat and then visited a temple, a claim that Siddaramaiah confirmed and then questioned what's wrong. The former chief minister has dismissed the BJP's criticism and declared he's a non-vegetarian, and the BJP had no right to question that. The latest face-off was triggered by the egg attack on Siddaramaiah last week, where BJP claimed a Congress worker hurled the egg over allegations that Siddaramaiah consumed beef. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಪಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡಲಿ ಯಾಕ್ರಿ ಭಯ ಪಡಲಿ 2013ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ನ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರು ಭಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಕಂಡ್ರು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಯ Mega BJP versus Congress showdown over Savarkar poster escalates in Karnataka. Police removed Savarkar posters put up by few miscreants outside Congress regional office in Karnataka's Vijaypura district. This incident comes amid senior Congress leader Siddaramaiah's comment on the ongoing Savarkar poster row in Shivamogga. Meanwhile, BJP Yuva Morcha President Basavaraj Hugar admitted putting up Savarkar posters outside the office. The Yuva Morcha president even tried to protest in front of Congress office but was detained by the cops. Retaliating to Basavaraj's statement, Congress has vowed to paste Tipu Sultan posters outside the BJP office. ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ತಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸೋರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗದೆ ಇವತ್ತು ಅವನು ತತ್ಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅವನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು BJP ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು
ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. 60 ವರ್ಷ ಆಳದಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಸುಟ್ಟವರು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರುಗಳು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರು ಸುಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನು ಅಂಟಿಸಿದ್ದೇನು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಲುವು, ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಚಾರದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಾಯ್ತು, ನಾವು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಓದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಸಾವರ್ಕರರು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು 5 ಪೇಜಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೊಂದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಲಂಜಲಿ ಹಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಒಯ್ದು ಅಂಟಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು 4 ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ agree with any of my leader telling that they have to put Tipu Sultan photo. There is no need. As a Congress president, I don't like to allow this. We want peace in the state. But there are our national leaders. To the entire country, 39% of the revenue goes on. And in wherever places issues are going on, either in Shivamogga or in Kur, that is all the tourism places. What is the status of Kashmir? What is the status of Sri Lanka? Whether employment has been given, whether tourism is being development, whether in this bad condition of this weather roads have been built. Why they are making unrest among the people of this state? After Savarkar poster row, the politics of polarization has now taken over Karnataka ahead of festive season. Sri Ramasena Chief Pramod Muthalik has started a signature campaign for permission to celebrate Ganesh Chaturthi at the contentious Idgah ground in Hubballi district of Karnataka. Muthalik has demanded the nod for celebration of Hindu festivals at the Idgah ground days after a campaign by several right-wing groups in Hubballi. He has also launched a campaign to place Savarkar's idol along with Lord Ganesh in the upcoming festival. Meanwhile, days after the state government gave permission to celebrate Ganesh Chaturthi in educational institutions, the issue has become a big flashpoint. Slamming the government's decision, Muslim body SDPI has threatened to protest against the move, demanding permission to offer namaz and Christian prayers. SDPI said the government cannot ignore other faiths. Not just SDPI, CFI has also expressed dissent against the alleged saffronization of education in Karnataka. इस समय हम हुबली के दुर्गद बैल से सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं कि सरकार को आग्रह कर रहे हैं, हमारा हक है कि हम सार्वजनिक गणेशोत्सव करेंगे, आप अनुमति दे या न दे, हम इस बार सार्वजनिक गणेश प्रतिष्ठापन करके अत्यंत शांत रीति से हम मनाएंगे, ऐसा मैं विनती करता हूँ. See, 100 people, 1,000 people demand, make a letter, all these things. There is a constitution, there is a government, there is a law, and what to avoid peace, to see that peace is being given, to see that communal tensions will not rise. It is up to the government to take appropriate action. Let the government act, then we will react. ಪ್ರತಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೂಮತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಂಟಪದ ಅಲ್ಲೇನೋ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀವಿ. Protesting farmer groups have been rounded up from several parts of Delhi's borders. Farmers are gathering at Delhi's Jantar Mantar seeking various SOPs like MSP guarantee. Traffic snarls return to Delhi as farmers stage a mega stir. Security has been ramped up at the Ghazipur, Tikri, Singhu borders of Delhi. Farmers are arriving at Jantar Mantar in Delhi following a call by some farm unions to protest against unemployment. Farmers' demands include 1. Minimum support price, that is the MSP legal guarantee. Number 2. Withdraw proposed electricity law. Number 3. Seeking of Minister of State for Home Ajay Mishra's
as well. You do remember that incident that took place with Ajay Mishra, and now sacking of Minister of State for Home Ajay Mishra because his son was also involved in the bulldozer attack at Lakhimpur Kheri. Victims of Lakhimpur Kheri should get justice. These are the basic demands at this point of time. This is a farm stir 2.0 brewing at this point. We'll wait to see what the BJP, the central government, has to say on this. As you can see, the vehicles of the farmers are not being stopped by Delhi police. They are being allowed. These are all farmers in the vehicles. Sir, Jantar Mantar Jantar Mantar. So you can see these are all farmers who are moving towards Jantar Mantar, and some of them holding flags. As you can see, the earlier commotion was about whether Delhi police will stop them, but clearly they are not being stopped by Delhi police as these vehicles are being allowed to Jantar Mantar. With video journalist Nasir, this is Shah Chatterjee for India Today. आप लोगों को आशंका थी कि जंतर मंतर आप लोगों को जाने से रोकेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस गाड़ी नहीं रोक रही है। हाँ, देखिए, वो अगर वो कोऑपरेट करेंगे, हमने प्रशासन को ये कहा कि अगर ये कोऑपरेट करेंगे तो उनसे दोगुना हम कोऑपरेट करेंगे। जंतर मंतर पर तो बैरिकेड्स लगाइए। नहीं, अभी हमारे किसान साथी वहाँ पहुँच चुके हैं। कि कुल कितने किसान? हजारों की संख्या में किसान पहुँच चुके हैं। Slipping into a break, when we return, mega BJP protests outside Kejriwal's residence. Effigies of Kejriwal in Sisodia burnt. Explosive face-off after Delhi Deputy Chief Minister claims BJP plot to split up. You are watching India Today. There is a certain amount of pressure just because even when we're shooting any commercial or anything, they strive for perfection. And so, you know, every shot, every angle, every lighting has to be perfect. So sometimes you're shooting for hours and hours and, you know, one thing is out of line and it's a whole new setup. So. When I did begin training, I trained every day of the week. I had dance classes every single day. I had weekly evaluations, which is a very big thing in the K-pop industry. I did those for months and months and months, and then finally the day came where my company told me I was getting prepared for debut.
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. You are watching India Today. Very good evening and thanks so much for being with us here on India Today. I'm Chaiti Narula joining you with all the top stories. Let's start with the headlines first. Russia detains an ISIS suicide bomber who was plotting a high-profile terror attack in India. Bomber makes a sensational admission, admits he wanted to avenge insult to the Prophet. Mega BJP protest outside Kejriwal's residence. Effigies of Kejriwal and Sisodia burned. Explosive face-off after Delhi Deputy Chief Minister claims BJP plot to split AAP. Kejriwal says he could also be arrested. KCR's daughter hits back after BJP claimed her role in Delhi liquor scam. Kavitha calls it a conspiracy to malign her family. Have nothing to do with the Delhi liquor investigation that is going on. This is a baseless allegation made on me by Bharatiya Janata Party just to make sure they malign the reputation of our family, and I'm so sorry to tell them it is not going to work. BJP Congress and furious. Tipu versus Savarkar war. Congress threatens to paste Tipu Sultan posters at BJP office in a tit-for-tat after the BJP workers put up Savarkar posters at Congress office. Former Pakistani Prime Minister Imran Khan leaves home, applies for pre-arrest bail after being booked for acts of terror. Supporters hit the streets. Massive escalation in the AAP versus BJP showdown is the big breaking news coming in over liquor excise case. This is a big claim coming in from the Aam Aadmi Party. AAP sources say Manish Sisodia is in possession of the recording where the Bharatiya Janata Party allegedly offered to drop the cases if he splits with the AAP. The AAP sources say that if the need arises, they are ready to make the tapes and the recording public. Huge sensational news coming in at this point of time, where the AAP source is going on to say that Manish Sisodia is in possession of that tape, that recording, where the allegation is that the Bharatiya Janata Party allegedly offered to drop the cases against Manish Sisodia if he splits with the Aam Aadmi Party. The sources also say that if the need arises, that they are all ready to make the recording public. This is a big story coming in at this point. Massive escalation going on. AAP versus BJP showdown going bigger and bigger. This after Kejriwal's press conference. You heard Atishi Marlena right there as well. Manish Sisodia also was with Kejriwal. And now the big claim coming in by the Aam Aadmi Party. This is in light of all the investigation that is going on against Manish Sisodia, where Kejriwal also said that, he should be given a Bharat Ratna and not be investigated like this because he is one of the best education ministers. And Kejriwal also mentioned how he was on the front page of American newspapers for his education model and he deserves a Bharat Ratna. And the last thing that the Aam Aadmi Party wants is an interrogation against a minister who's done so well for education, according to Kejriwal. And the AAP source is now saying that Manish Sisodia is in possession of the recording where the Bharatiya Janata Party allegedly offered to drop the cases against Manish Sisodia if Manish Sisodia splits from the Aam Aadmi Party. But we also had Kejriwal earlier, who's in the press conference, the Aam Aadmi Party press conference, that says that Manish Sisodia is absolutely loyal to the Aam Aadmi Party. And now the big explosive allegation is that he has the proof. That's the allegation, that he has the proof that the BJP tried to offer to drop the cases if he split with the AAP. AAP sources also say that in case the need arises, they are willing, they are all ready to make that particular recording public. AAP versus
versus BJP Excise showdown getting bigger and bigger. AAP sources make sensational revelation. This is a huge story. We have to see how the Bharatiya Janata Party responds to how the sources are saying that Manish Sisodia is in possession of the recording where Bharatiya Janata Party allegedly offered to drop the cases against him if he split, that is Manish Sisodia split with the Aam Aadmi Party. Aam Aadmi Party sources saying that if the need arises, they will make this recording, these tapes public. Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia has made a serious allegation against the BJP, says he received a message from the Saffron Party that said that the CBI and ED cases against him will be closed if he joins with the BJP. Sisodia was being probed by the CBI in connection with the liquor policy, says he was a descendant of Maharana Pratap and a Rajput would rather be beheaded rather than joining corrupt conspirators, that is the BJP. Meanwhile, BJP has slammed Sisodia, beg your pardon, for invoking Maharana Pratap, saying that he has insulted the Rajput community. BJP has also rubbished Sisodia's allegations, saying that they would never invite a corrupt person like him to join the party. Amidst the uproar on the CBI raids, Sisodia will join Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on poll-bound visits. This is going to be Sisodia's first trip outside of national capital ever since the raids on him. अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है, इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विज़न के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पे खुला जवाब है। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, देशद्रोही व्यक्ति को, जो सीए के तरह सर तन से कलम करने वालों का मदद करने वाला सिसोदिया, भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी न छुएगी। भाजपा ऐसे लोगों को जो किसानों के रूप में यहां पर खालिस्तानी बॉर्डर पर आकर बैठ गए थे, उनकी समर्थन देकर उनके साथ चलेगी। भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी नहीं छुएगी। सियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये जितना बौखलाहट है, ये सब यही बताता है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के लंबे और बड़े दलदल में घुस चुके हैं। एजेंसीज को ये सारे का साक्ष्य मिल चुका है, ऐसा लगता है। और अगर वो ऐसी भ्रष्टाचारी काम करके महाराणा प्रताप से तुलना करते हैं अपनी, तो ये महाराणा प्रताप का भी अपमान है। जहां तक ये बात है कि भाजपा आपको शामिल कराना चाहती है और आपके केस खत्म कर देंगे, तो मीडिया में और पॉलिटिकल सर्कल में सबको पता है कि आपने इस केस को खत्म कराने के लिए और बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, किस किस को आपने कोशिश की है अप्रोच करने की, मिलने की। लेकिन आपके लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं, नहीं खुलेंगे, और ये बात आपको पता है। इसीलिए जब कोई चोर पकड़ा जाता है, कोई भ्रष्टाचारी, कोई रिश्वतखोर पकड़ा जाता है, वो कैसे बिलबिलाता है, ऐसे ही आज आप और केजरीवाल बिलबिला रहे हो। कोई चोर, कोई भ्रष्ट, कोई रिश्वतखोर महाराणा प्रताप जी का इस प्रकार नाम ले, ये महाराणा प्रताप का अपमान है। मनीष सिसोदिया जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। राजपूत समाज के कई युवाओं के मेरे पास फोन आ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में हैं। इस प्रकार से आपको चोरी पकड़े जाने पर, जेल जाने के समय महाराणा प्रताप जी याद आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये नहीं करना चाहिए सिसोदिया जी। आपको राजपूत समाज के प्रचंड आक्रोश का सामना करना पड़ेगा इस प्रकार से महाराणा प्रताप जी का अपमान करेंगे। सुबह सुबह एक आरोप लगा दिया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी तोड़ करके बीजेपी में आ जाइए, सारे केस बंद। अभी मनीष सिसोदिया जी सुबह सुबह
क्या भांग खाकर उठते हैं, क्या सुबह सुबह अपनी 1+1 की जो स्कीम है शराब की, क्या उसको ये अवेल कर लेते हैं, मैं नहीं समझ पाता। उनको सुबह सुबह उठकर प्राणायाम करना चाहिए, उनको कपालभाति करनी चाहिए, भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, ओम का उच्चारण करना चाहिए, तो उनकी बुद्धि, उनका मन वो शांत रहेगा। मगर सुबह सुबह बेबुनियाद कुछ भी बोल देना, रात को क्या सपना उन्होंने देखा और सुबह वो क्या बोल रहे हैं, एक दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, एक राज्य का उप मुख्यमंत्री ऐसी बेतुकी बात अगर करे तो उसका कोई क्या जवाब दे। तो उनको नाम बताना चाहिए कि उनको जो है किस आदमी ने ऑफर किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। वो Shreya Chatterjee is joining us. Shreya, I want to bring you back to the news that we just broke right now about what the AAP sources have said. AAP sources have said that Manish Sisodia is in possession of that recording where the BJP said that the cases against him will be dropped if he splits with the Aam Aadmi Party. If you could confirm what the AAP sources are saying and what more can you add to this? Well, Chaipi, the Aam Aadmi Party sources are very categorically pointing it out that that Manish Sisodia was indeed approached by a person from the Bharatiya Janata Party to join the party. Not just that, he was mentioned that if he joins BJP, then all the cases against him, which he's being currently facing investigation, will be dropped. So that's the allegation that came forward from the Aam Aadmi Party. We also saw now the Aam Aadmi Party claiming that they have audio recording on the same. On the other hand, we saw the BJP's reaction. The BJP said that several times Manish Sisodia himself tried to join the Bharatiya Janata Party. The BJP's doors are closed for him. So this is a bitter battle that's playing at a time when the Central Bureau of Investigation has registered an FIR under the Prevention of Corruption Act in the alleged excise policy scam in the national capital. Unfortunately, politics circumferencing in the investigation, and now the claim is that it is BJP who's been asking Manish Sisodia to join them so that all the cases are dropped. So that is the allegation recently that's come forward from the Aam Aadmi Party. Okay, thanks Shreya for joining us with those details right there. Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia has made a serious allegation against the BJP. He says he received a message from the Saffron Party that said the CBI and ED cases against him are going to be closed if he joins the BJP. Sisodia, who's being probed by the CBI in connection with the liquor policy, says he was a descendant of Maharana Pratap and a Rajput would rather be beheaded rather than joining a quote-unquote corrupt conspirators party. Meanwhile, BJP has slammed Sisodia for invoking Maharana Pratap, saying he has insulted Rajput community. BJP has rubbished Sisodia's allegations, saying they would never invite a corrupt person like him to the party. And amidst the uproar on the CBI raids, Manish Sisodia will join Delhi Chief Minister Kejriwal on his visit to Gujarat. This is going to be Sisodia's first trip outside the national capital ever since the raids on him. अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार, एक मिनट, गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3 महीने 4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी। किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है। किसको फायदा होगा? हम काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी। इससे देश का भला होगा क्या? दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा गुजरात का। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। इनका 27 साल का शासन खिसक रहा है। अभी मनीष भी गिरफ्तार होंगे और भी कई हो सकता है। मेरे को भी करने, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। मैं किसी सीएम कैंडिडेट बनने के, सीएम बनने के चक्कर में यहाँ हूँ। मैं तो अरविंद जी के साथ हूँ। अरविंद जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के आदेशों पर, उन्हीं के डायरेक्शंस में दिल्ली में काम किया है और राजनीति में काम किया है। हम पहले दिन से कहते हुए आए हैं कि केंद्र सरकार ने जितनी भी जांच एजेंसियां भेजनी हैं वो भेज दे। उन्होंने सीबीआई को भेजना है, उन्होंने ईडी को भेजना है, उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना है। हमें अपनी ईमानदारी पे भरोसा है। हमने एक पैसे का भ्रष्टाचार ना तो कभी किया है ना कभी करेंगे। मैं 24 घंटे पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको देता हूं इस चुनौती के साथ कि अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, जैसा आप अपने आप को प्रमाणित करते हैं, बाहर निकल कर आइए और जो सवाल जनता के हैं उनका उत्तर जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है इन सभी
गंभीर आरोपों का उत्तर न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और इश्तिहार का बजट बढ़ाकर टिम्बकटू टाइम्स में भी आप एक इश्तिहार दे के बच जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी गुजरात की जनता के लिए शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाई, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कर पाई, रोजगार के लिए कुछ नहीं कर पाई। वहाँ पे महंगाई से लड़ने में लोगों की कमर टूट गई है, उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका दें गुजरात के लोग, तो 5 साल में वो करके दिखाएंगे जो गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के शासन में जितना अच्छा काम नहीं देखा होगा। इसके लिए हम आज गुजरात जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी आज तक भी मुंह नहीं खोले हैं। ये अपने आप में मोहर लगाती है कि ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं और कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। मैं तो यही कहूँगा, बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार। जो आपने शराब माफिया दोस्तों को पैसा दिया है, दिल्ली के खजाने को लुटाकर दिया है, आखिर उसके जिम्मेदार जो है वो सिसोदिया है। और इसीलिए वो इस तरह की बातें करते रहते कि अब ये होगा, अब ये गिरफ्तार होंगे, अब वो गिरफ्तार होंगे। क्योंकि भाई जिसने काले कारनामे कर रखे हैं, जिसके सामने कर रखे, उन्हें पता है कि हमने कब साइन किए थे, किस फाइल पर। अगर ये पॉलिसी किसी तरीके से फेल की गई और किसी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया, तो वो उस वक्त के एलजी ने किया। उन्होंने पॉलिसी को हाँ करके ऐन मौके पे उसको पलटा है। दिल्ली में घटना हो रही है आज, जो केजरीवाल अपने को इतना बड़ा समझते हैं कि देश का प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। 2 स्टेट में सत्ता में हैं वो लोग, और दोनों स्टेट मिलकर 20 पार्लियामेंट्री सीट है। अभी पता नहीं एक भी सीट उनके हाथ में है कि नहीं, एक तो रिजाइन कर दिए थे। तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने का स्वप्न देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि इसीलिए उनको टारगेट बनाया जा रहा है। ठीक है, उसका एक सीमा भी होनी चाहिए। जब कंप्लेन आया है तो उसका इंक्वायरी भी हो रही है, कोर्ट में उसका समाधान हो जाएगा। Telangana Chief Minister's daughter and TRS MLC K. Kavitha to file a defamation case against BJP leaders Pravesh Verma and Majinder Sissa. Both the leaders alleged the complicity of Kavitha Rao in the Delhi Excise case. The BJP dragged in the TRS in the Delhi liquor controversy, alleging that KCR's daughter Kavitha was also involved. BJP alleged the TRS helped Sisodia with the formulation of the liquor policy. KCR's daughter hit back at the allegations, making it clear that she has no link to the Delhi liquor scam in any way. TRS MLC has claimed that BJP was trying to malign her and her family, but all efforts are going to be shut down as she belonged to a family of fighters. केसीआर की बेटी जो हैं, उनका इसमें रोल है, के कविता का इसमें रोल है। और के कविता जो है मीटिंगें करती रही ओबराइस में। के कविता जो है शराब के लोगों से, चड्डा परिवार से उन्होंने मीटिंग की, चड्डा परिवार का पैसा लेके उन्होंने फैक्ट्री डीसील करा के दी उनकी। तो ये सारा के कविता का रोल रहा है पैसे लेने देने में बहुत बड़ा। The allegations that are made on me by BJP party and their party people are completely baseless. The allegations will certainly remain an allegations. They have all the agencies in their hands. They can do whatever investigation that is required. We will completely cooperate. I have nothing to do with the Delhi liquor investigation that is going on. This is a baseless allegation made on me by Bharatiya Janata Party just to make sure they malign the reputation of our family. And I'm so sorry to tell them it is not going to work. Amidst the Delhi liquor gate war, a furious face-off has emerged on the cyberspace, with BJP and TMC launching an intense video and meme war. BJP takes a jibe at Kejriwal, releasing a video titled Golmaal Hai. The video showed Kejriwal look-alike distributing freebies to all and diverting attention from its misrule. This is the latest in the series of video war between the AAP and the BJP. The AAP also released a meme that showed Sisodia shielding Delhi's education model by blocking arrows in the form of central agencies. The video tried to project Deputy Chief Minister Sisodia as a fighter pitted against the central government, which it alleged is trying to dismantle its good work. The AAP had earlier released a video of Prime Minister Modi slamming CBI misuse while in the opposition. Breaking news coming in. Arvind Kejriwal has tweeted saying Operation Lotus has failed in Delhi. He says CBI raid has nothing to do with the liquor policy and corruption. These raids were done only to topple the Aam Aadmi Party government in Delhi, like they have done in other states.
That's the latest coming in. Arvind Kejriwal's tweet right there alleging Operation Lotus in Delhi and saying that it has failed. The BJP has failed to conduct an Operation Lotus in Delhi. That is what he has said. There's a tweet in Hindi that just come out that says Delhi mein Operation Lotus failed. So he's gone ahead and put out this particular tweet that the raids were done only to topple the Aam Aadmi Party government. This is the same thing that they've done in other states as well. And this Operation Lotus of the Bharatiya Janata Party has failed in Delhi. In fact, you do remember we just mentioned about how Manish Sisodia had alleged that he was said that the CBI raids and all the other cases could be dropped if he split the AAP, and source-based information coming in saying that he also is in possession with the tape where the BJP has said this to him, and that source-based information, BJP is still to respond to this. The sources, that is AAP sources, also say that they're willing to make this tape public if need be. BJP still has to respond to this. BJP still needs to respond to what Kejriwal has just said. CBI and ED raid has nothing to do with liquor policy and corruption, he questions. He says these raids were done only to topple the Aam Aadmi Party government in Delhi, and he's just put out a tweet right now saying that Operation Lotus has failed in Delhi. Slipping into a break. When we return, up next, Russia detains an ISIS suicide bomber who was plotting a high-profile terror attack in India. Bomber has made a sensational admission, admitted he wanted to avenge insult to the Prophet. You are watching India Today. I'm the early bird who gets the news. The fresh morning air is my energizer. With me around, there are no dwindled dawns. Only bright, action-packed mornings. Rise and shine with me every single day, and you'll never hit that snooze button. Good morning, India. Why wake up any other way when you can witness magic every single day? Watch First Up with me, Akshita Nandagopal, right here on India Today TV. In a move that's likely to further anger China, a bipartisan delegation of Japanese lawmakers are now all set to visit Taiwan. And this visit comes weeks after the visit of US House Speaker Nancy Pelosi and the recent visit of a bipartisan delegation of US lawmakers, both Democrats and Republicans. Now, what's the message here? Whether it's the United States in the West or Japan in the East, democracies are standing with a democratically elected government in the Republic of China or Taiwan. And China clearly unlikely to be all too pleased with these developments. After Nancy Pelosi's visit, China announced a series of military drills and exercises around Taiwan Straits, in a way blockading Taiwan. But then another delegation came and China intensified those exercises. Now, when a Japanese delegation comes, will China further escalate these exercises? And that's the apprehension. The democratic world appears to be pushing back against an expansionist force. There is also a massive air power exercise that's being carried out in Australia. This is called Exercise Pitch Black. 100 fighter jets and other aircraft are likely to participate in this exercise starting in a couple of days. You are watching India Today.
An ISIS plot for possible revenge against Nupur Sharma has been busted in Russia. Russian Federal Security Agency has detained an ISIS suicide bomber. The terrorist was to leave Russia to carry out a high-profile attack on India. The top leaders of BJP and Indian central authorities were on target. The suicide bomber, who was recruited between April and June this year, made a big admission, told Russian authorities that he was asked by the ISIS to take revenge for the insult to the Prophet. He has said that he had met a handler in India who would provide him with the necessary materials for a terror attack. The suicide bomber was recruited via a Telegram app and met ISIS leadership in Turkey. Well, after the incitement, dharnas and whatnot, now there is terror attack that was being planned, a suicide attack that was being planned. We're bringing you all the details in terms of what the modus operandi was of this terror attack that was being planned, but it's been foiled at the moment. Russian Federal Security Agency detained the ISIS suicide bomber. The terrorist was to leave Russia to carry out a high-profile attack on India, and the top leaders of BJP and Indian central authorities were on the target. We're having a reaction that is just trickling in. Let's listen in to that reaction on this story. ISIS, Islamic State, is an international terrorism, and they don't know any boundaries, and they can come from one country to another. Now, what is happening is that the Islamic State, possibly from Turkey, from Syria, all these countries, this is hub center of Islamic State. Now, coming to Russia, possibly from Russia, then coming to India, or from Russia coming via Nepal to India. Now, this become an unsuspecting route. So, overall, a good move by the Russian agency. They could nab it, but we should go into more detail. What was their modus operandi? Where were they doing? Who was the target? Who was the support system available within the country? We have to do much more homework. But today, the requirement as far as the country is concerned, the agencies have to have more cooperation at national and international level, and within the country between state and also the central government, because terrorism is spreading like a fire, and India is one of the countries which is on their radar and also on the hit list. Geeta Mohan, our Foreign Affairs editor, will join us in moments from now to bring us up to speed with the latest developments and tell us what the modus operandi was and what she can add to what we already know. What we know so far is that the Russian Federal Security Agency has detained this ISIS suicide bomber. The terrorist was to leave Russia to carry out a high-profile attack on India, and the top leaders of the BJP were on the target. Also, the top leaders of Indian Central Authority were on target. The suicide bomber was recruited between April and June this year, and that's what we know so far. He's made a big admission. He told the Russian authorities that he was asked by ISIS to take a revenge for insult to the Prophet. He also said he met a handler in India who would provide him with necessary materials for a terror attack in India. The suicide bomber was recruited via Telegram, and he met the ISIS leadership in Turkey as well. We'll tell you what the modus operandi really was. Geeta will be able to bring us up to speed with more details on this. But this is an ISIS plot for possible revenge against Nupur Sharma's remarks on the Prophet, and now that has been busted in Russia. The Russian Federal Security Agency detained this ISIS suicide bomber, and the terrorist was going to be leaving Russia to carry out a high-profile attack on India. Whether there are more, whether there could be more, that something that we'll know in moments from now when Geeta joins us in terms of what the Russian Federal Security Agency has revealed to India at this point. But what we know so far is that this particular terrorist had top leaders of BJP and the central government on his radar, on his target, and he was going to be leaving Russia to carry out a high-profile attack on India, but he's been detained. He's an ISIS suicide bomber who's currently been detained in Russia. He was recruited between April and June. He's made an admission. He told the Russian authorities he was asked by ISIS to carry out a revenge for insult to the Prophet. He has also said he met with a handler in India who would provide him with necessary materials for a terror attack.
The suicide bomber was recruited via telegram. He met the ISIS leadership in Turkey. Geeta will be joining us in moments from now to get us more details of this ISIS-India plot for the revenge on the back of the comments coming in against the Prophet by Nupur Sharma. You had politics, then you had protests, and now this is a terror threat for the comments made against the Prophet. Thankfully, the Russian Federal Security Agency has foiled this attempt by the suicide bomber of the ISIS. We'll be joined by our reporters for more on this story. This is the possible ISIS plot for the possible revenge against Nupur Sharma. It's been busted. And the comment against the Prophet, I mean, it took several different turns. There was politics around it. There were beheadings around it. And now it has come to this, a suicide attack. But this has been foiled by the Russian Federal Security Agency. They've detained this ISIS suicide bomber. He was going to leave Russia to carry out a rather high-profile attack on India. On his radar were the top leaders of the Bharatiya Janata Party, of the central government. This is a suicide bomber who was recruited between April and June, and he made a rather big admission telling the Russian authorities that he was asked by the ISIS to take revenge for the insult to the Prophet. So that particular remark on a TV show that was made by Nupur Sharma has now come to this. He said that he met a handler in India who would provide him with necessary materials for a terrorist attack. He's a suicide bomber. He was recruited via Telegram app and met ISIS leadership in Turkey. This is what we know so far, but Geeta will be able to add on to this in moments from now. So the ISIS terrorist has been detained. He has revealed his plan as well. He was going to be committing a terror attack in India after politics, after protests. Now this is a terror plot. ISIS for revenge on the comments made by Nupur Sharma. In fact, some defense experts have given their inputs on this. This is what they think about this incident. Listen in. ISIS, Islamic State, is an international terrorism, and they don't know any boundaries, and they can come from one country to another. Now, what is happening is that the Islamic State, possibly from Turkey, from Syria, all these countries, this is hub center of Islamic State. Now, coming to Russia, possibly from Russia, then coming to India, or from Russia coming via Nepal to India. Now, this become an unsuspecting route. So, overall, a good move by the Russian agency. They could nab it, but we should go into more detail. What was their modus operandi? Where were they doing? Who was the target? Who was the support system available within the country? We have to do much more homework. But today, the requirement as far as the country is concerned, the agencies have to have more cooperation at national and international level, and within the country between state and also the central government, because terrorism is spreading like a fire, and India is one of the countries which is on their radar and also on the hit list. We'll get you more reactions from defense experts on this and reporters who are tracking this story rather very closely, because this is huge. It was an ISIS plot for a possible revenge against Nupur Sharma that's been busted in Russia. Geeta is now joining us. Geeta, what does the ISIS modus operandi look like? I mean, the Russian federal agencies have detained one ISIS suicide bomber, but does it really end there? Well, it certainly does not end with one individual. We do know that intelligence agencies across the world have been monitoring chatter, talk, conversations on various platforms with regards to whether if there are going to be any such movement of people within India
to carry out such attacks. Now, India has been on alert, not just because of the Nupur Sharma controversy, even before that, but yes, post the Nupur Sharma controversy with regards to insults to Prophet Muhammad, we've seen heightened threats from various quarters, calls for violence against not just Nupur Sharma, but also those who came out in justification and support. So there is a strong sense that yes, in terms of security, there has to be more intelligence sharing to ensure that these sort of suicide bombing plans are hashed and averted before they can carry them out. And that's what has happened over here. Again, we know that Russia and India are involved when it comes to intelligence sharing, and Russia surely must have shared a lot of details with New Delhi with regards to the plan that was being the terrorist attack that was being planned, as also whether if there are any supporters, because he was going to come here, according to his statement, and collect all the documents and requisite things that were required to carry out the attack. So certainly there were people within India who would have provided him base and support, and that certainly is something that would that in further investigations and interrogation, the individual, the detained individual. Geeta, in the light of all of this, and for the benefit of our viewers, are agencies now on high alert on the back of this particular incident that has come up? Because there, as you rightly mentioned, could perhaps be many more, since the ISIS is clearly planning an attack on India. Well, the Islamic State per se has a lot of fringe elements and fringe groups as well in various countries. They're fast spread, they're widely spread, not just across Central Asia, across some of the African nations as well. And so, yes, Chefi, there is a real threat to India when it comes to individuals trying to enter India and carry out attacks against individuals, high-profile individuals from what Russia and the FSB says, the ruling circle of India. Now, whether it's the party or the administration, we do know that certain individuals, high-profile individuals, are targets for these Islamic State terrorists. And that certainly is a concern. And India has been working with various agencies across the world. Indian agencies now, again, they've always remained on high alert with the kind of threats in the recent past that one saw. And more so after you saw the attack on Salman Rushdie in New York. Nobody's safe unless and until everyone is safe and the security agencies are alert. So yes, this was a huge plot that was hatched and a huge, very big and good news, Cherry, in terms of how they caught the man in time. But this is not the only one. And so yes, security agencies have to be on alert. Thanks, Geeta, for joining us with that perspective and all that information. The showdown over egg attack on Siddaramaiah has triggered a full-blown political fight in Karnataka amidst the face-off over Savarkar and the attack on Siddaramaiah's convoy. The BJP and Congress are now embroiled in a war of words over Siddaramaiah's eating habits. It all started with Karnataka BJP chief Nalan Kumar Katil alleging that Siddaramaiah ate meat and then visited a temple, a claim that Siddaramaiah confirmed and then questioned what's wrong. The former chief minister dismissed the BJP's criticism, declared he's a non-vegetarian and that the BJP had no right to question that. The latest face-off was triggered by the egg attack on Siddaramaiah last week, where BJP claimed a Congress worker hurled the egg over allegations that Siddaramaiah consumed beef. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಪಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾಕೆ ಭಯ ಪಡಲಿ ಯಾಕ್ರಿ ಭಯ ಪಡಲಿ 2013ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ನ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರು ಭಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಕಂಡ್ರು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ
Breaking news coming in. BJP MP Pratap Sinha slams Siddaramaiah for his remark. Has God said one shouldn't enter temple after consuming meat? That was the remark made by Siddaramaiah. He says your wife is a devotee of Chamundeshwari. She sits inside a temple for 30 minutes. Ask her if she consumes meat before going to the temples. Inform the public about what she says. Then you would know if your family's on the same page. 2017ರಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಇತ್ತು. ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯನ ಎದುರುಗಡೆ ನಂದಿ ಪೂಜೆನ ಮಾಡಿ ಆನಂತರ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮುಂದೆಂದೂ ಕೂಡ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಆಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. Mega BJP versus Congress showdown over Savarkar poster escalates in Karnataka. Police remove Savarkar posters put up by few miscreants outside Congress regional office in Karnataka's Vijaypura district. The incident has come amidst senior Congress leader Siddaramaiah's comment on the ongoing Savarkar poster row. Meanwhile, BJP Yuva Morcha President Basavaraj Hugar admitted putting up Savarkar posters outside the office. The Yuva Morcha President even tried to protest in front of Congress office but was detained by the cops. Retaliating to Basavaraj's statement, Congress is vowed to paste Tipu Sultan posters outside BJP office. ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಫೋಟೋ ತಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸೋರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗದೆ ಇವತ್ತು ಅವನು ತತ್ಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅವನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅವನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಅಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು BJP ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. 60 ವರ್ಷ ಆಳದಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಸುಟ್ಟವರು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರುಗಳು. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇದೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರು ಸುಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇನು ಅಂಟಿಸಿದ್ದೇನು ದೊಡ್ಡ ಇದು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಲುವು, ಅವರು ಇವತ್ತು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಚಾರದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾಯ್ತು, ನಾವು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ. ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಓದಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಧ ತಾಸು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಸಾವರ್ಕರರು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು 5 ಪೇಜಿನ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೊಂದು ವಾಡಿಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಲಂಜಲಿ ಹಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಒಯ್ದು ಅಂಟಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾವರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು 4 ಪತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ agree with any of my leader telling that they have to put Tipu Sultan photo. There is no need. As a Congress president, I don't like to allow this. We want peace in the state. But there are our national leaders. To the entire country, 39% of the revenue goes on. And in wherever places issues are going on, either in Shivamogga or in Kur, that is all tourism places. What is the status of Kashmir? What is the status of Sri Lanka? Whether employment has been given, whether tourism is being development, whether in this bad condition of this weather roads have been built. Why they are making unrest among the people of this state?
After Savarkar poster row, the politics of polarization has taken over Karnataka ahead of festive season. Sri Ramasena chief Pramod Muthalik has started a signature campaign for permission to celebrate Ganesh Chaturthi at the contentious Idgah ground in Hubballi district of Karnataka. Muthalik has demanded the nod for the celebration of Hindu festivals at the Idgah ground days after a campaign by several right-wing groups in Hubballi. He has also launched a campaign to place Savarkar's idol along with Lord Ganesha in the upcoming festival. Meanwhile, days after the state government gave permission to celebrate Ganesh Chaturthi in educational institutions, the issue has become a big flashpoint. Slamming the government's decision, Muslim body SDPI has threatened to protest against the move. Demanding permission to offer namaz and Christian prayers, SDPI said the government cannot ignore other faiths. Not just the SDPI, but CFI has expressed dissent against the alleged saffronization of education in Karnataka. इस समय हम हुबली के दुर्गद बैल से सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं कि सरकार को आग्रह कर रहे हैं, हमारा हक है कि हम सार्वजनिक गणेशोत्सव करेंगे, आप अनुमति दे या न दे, हम इस बार सार्वजनिक गणेश प्रतिष्ठापन करके अत्यंत शांत रीति से हम मनाएंगे, ऐसा मैं विनती करता हूँ। See, 100 people, 1,000 people demand, make a letter, all these things. There is a constitution, there is a government, there is a law, and what to avoid peace, to see that peace is being given, to see that communal tensions will not rise. It is up to the government to take appropriate action. Let the government act, then we will react. हाई कोर्ट में क्लियर वर्डिक्ट दिया है, स्कूल में पर्टिकुलरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान का खिलाफ चल रहा है। अगर हिजाब को नहीं है तो क्यों गणेश को देते हैं? अगर आपको गणेश को देते हैं, कोई मुसलमान इसको नहीं बोलेगा, कोई क्रिश्चियन नहीं बोलेगा। आप गणेश को भी दो, आप सरस्वती को भी दो, आप नमाज को भी दो, आप क्रिश्चियन प्रेयर को भी दो। इसके ऊपर हम लोग जद्दोजहद करेंगे, हम लोग फाइट करेंगे, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, ये आरएसएस का मुल्क नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का मुल्क है। ಪ್ರತಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಹಾಕೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೂಮತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಂಟಪದ ಅಲ್ಲೇನೋ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ ಯುವಕ ಮಂಡಳದವರು ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ತಡೆಯುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಈ ಬೆಳಗಾವಿನಾಗಂತೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಎತ್ತರಿಸ. There's breaking news just coming in. Ganesha Utsava committee performs mock presentation of the festivities to be held at Idgah Maidan in Hubballi in front of officials. The right-wing groups, including Sri Ramasena, have sought permission to hold Ganesha Utsava at the ground. The protesting farmers groups have been rounded up from several of Delhi's borders. Farmers are gathering at Delhi's Jantar Mantar seeking various SOPs like MSP guarantee. There's traffic snails that have returned to Delhi as farmers are staging a mega stir. Security has been ramped up at Ghazipur, Tikri, Singhu borders of Delhi. Farmers are arriving at Jantar Mantar in Delhi following a call by some farm unions to protest against unemployment. Farmers' demands include minimum support pricing with a legal guarantee, withdraw the proposed electricity law, sacking of Minister of State for Home Ajay Mishra Trainee. The victims of Lakhimpur Kheri should get justice. ये किसान है जो कि प्रदर्शन के लिए यहाँ पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम किसानों को जो है वो यहाँ पर डिटेन कर लिया है। लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं, फिलहाल पुलिस की तरफ से उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। एकाएक
जितने भी किसान यहाँ पर पहुँच रहे थे अलग अलग बॉर्डर्स पे, उन पे यहाँ पर कड़ी निगरानी जो है वो दिल्ली पुलिस और उनके आला अधिकारी जो रख रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी एक ही गाड़ियों की चेकिंग जो है वो यहाँ पर करते हुए जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और लगातार कोशिश ये है कि किसान नई दिल्ली इलाके की तरफ कूच ना करें, क्योंकि पूरे नई दिल्ली इलाके में धारा 144 जो है वो लगाई गई है और किसानों को महापंचायत की परमिशन जो है वो फिलहाल नहीं दी गई। और ऐसे में तमाम जो किसान यहाँ पर पहुंचे थे उनको फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर डिटेन जो है वो कर लिया गया है। कैमरा पर्सन राजा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। As you can see, the vehicles of the farmers are not being stopped by Delhi police. They are being allowed. These are all farmers in the vehicles. Sir, Jantar Mantar जा रहे हो? Jantar Mantar जा रहे हो. So you can see these are all farmers who are moving towards Jantar Mantar, and some of them holding flags. As you can see, the earlier commotion was about whether Delhi police will stop them, but clearly they are not being stopped by Delhi police as these vehicles are being allowed to Jantar Mantar. With video journalist Nasir, this is Shah Chatterjee for India Today. आप लोगों को आशंका थी कि जंतर मंतर आप लोगों को जाने से रोकेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस गाड़ी नहीं रोक रही है। हाँ, देखिए, वो अगर वो कोऑपरेट करेंगे, हमने प्रशासन को ये कहा है कि अगर ये कोऑपरेट करेंगे तो उनसे 2 गुना हम कोऑपरेट करेंगे। जंतर मंतर पर तो बैरिकेड्स लगाइए कह रहे हैं। नहीं, अभी हमारे किसान साथी वहाँ पहुँच चुके हैं। कि कुल कितने किसान? हजारों की संख्या में किसान पहुँच चुके हैं। Time for a break, but on the other side is a popular segment, What's Trending? You are watching India Today. Get it. Yeah! Get it! Yeah! Bring it back. Look how much we sweat. You are watching India Today. It is Chiranjeevi's 67th birthday, and to celebrate the same, the makers have released teaser of his upcoming film Godfather that also stars Salman Khan, Anupam Kher. On the other hand, we spoke about the current boycott trend as well. He's also taken a jibe at Amir Khan for the 2015 controversial statement. This and much more. Here's our popular segment, What's Trending, leaving you with this story. He's the reason for every goddamn thing! Kill him! The teaser of Godfather has finally been unveiled. The 1 minute 33 seconds clip showcases Chiranjeevi and Salman Khan's perfect partner in crime camaraderie, with megastar Chiranjeevi making a heroic entry and firing guns. लगता है बड़ी लंबी प्लानिंग चल रही है। अपने इस छोटे भाई को भूलना नहीं। कहो तो अभी आ जाता हूँ।
Wait for my command, brother. Followed by Salman Khan's starry entry, riding a bike and shooting bullets. The teaser is a treat for fans of both the actors. That's not all, it also gives a glimpse of Nayanthara's character in the film. Earlier, Chiranjeevi had shared this picture with Salman Khan and revealed that they are shooting for a special number together and they are being choreographed by Prabhudeva. Several other behind-the-scenes pictures from the sets also went viral on social media. Directed by Mohan Raj, Godfather is the remake of Malayalam film titled Lucifer. You are watching India Today. Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices.
Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. World's third biggest demolition. "40-story twin towers to crash down. Countdown to epic demolition begins. Unmissable, unparalleled coverage. India's biggest demolition. And it's literally that, viewer. It's India's biggest ever demolition of a building. It's the third biggest demolition ever in the world so far. 40 stories of concrete, a tale of greed, a tale of injustice, and a tale of a demolition that the world is going to be watching. This is in Noida, just on the outskirts of Delhi. And those twin towers are going to come crashing down 6 days from now. I'm going to take you up close, get inside that tower right here as we begin our special coverage to show you how there is suspense, there is tension in the air over the people living around these twin towers and whether they're going to be safe at all. Special coverage with me here on 5 Live begins. First, the headlines. Russia detains an ISIS suicide bomber who was plotting a high-profile terror attack in India. Bomber makes a sensational admission, says he wanted to avenge the prophet comments made by Nupur Sharma. Manish Sisodia of the Aam Aadmi Party claims plot to topple Delhi government after CBI raids on him in the Delhi excise policy case. Kejriwal says his deputy deserves a Bharat Ratna for his education model. BJP hits the streets, demands Sisodia's resignation. Telangana Chief Minister KCR's daughter hits back after BJP claimed her role in the Delhi liquor scam. Kavitha calls it a conspiracy to malign her family. I have nothing to do with the Delhi liquor investigation that is going on. This is a baseless allegation made on me by Bharatiya Janata Party just to make sure they malign the reputation of our family, and I'm so sorry to tell them it is not going to work. BJP Congress in furious Tipu versus Savarkar war. Congress threatens to paste Tipu Sultan posters at BJP office in a tit-for-tat after BJP workers put up Savarkar posters at Congress office. Former Pakistan Prime Minister Imran Khan leaves home, applies for pre-arrest bail after being booked for acts of terror. Supporters hit the streets of Pakistan. "40 floors, 103 meters tall, 1,000 flats, 3,500 kilograms of explosives are going to be used to bring down the super tech twin towers, 40 stories high on the outskirts of Delhi. Noida authorities are preparing for what is quite simply India's biggest demolition. The 40-story building is scheduled to be demolished at 2:30 in the afternoon this Sunday, that's August the 28th, in compliance with a Supreme Court order. The top court had ordered the demolition as it found the twin structures in Noida's Sector 93A were built in total violation of many norms. The review preparations of this monumental task have been in full swing for many weeks now, involving officials from the Noida Authority, Central Building Research Institute, the Pollution Control Board, Traffic Police, the Electricity Department, as well as private companies that are overseeing the installation of explosives to bring this twin structure down. More than 3,500 kilograms of explosives will be filled in around 9,400 holes drilled in these twin towers, and the shears of the skeletal structures of these two skyscrapers to bring it crashing down in a matter of just a few seconds. The demolition process is likely, we are told, to take around 9 to 10 seconds in total. It will, of course, result in a huge cloud of dust and debris.
And that is where the suspense and the tension is. The result, many of the neighborhood apartment complexes around the Super Twin Towers are going to be evacuated for at least 2 days when it comes down. Let's just decode a little bit more about the actual demolition, what it's going to look like, and what it's actually taking to get things down to the ground. The apex tower is called the Sian Tower. Okay, we've got both towers. There's the apex tower and the Sian Tower. They have already been installed, and they're going to be installed more, with 3,500 kilograms of explosives. 9,000 holes have already been drilled, in the walls and the core of both these buildings right now. They've been filled with explosives. Those are the holes on which the explosives are going to be filled. The towers will implode upon detonation. There will be a massive implosion and they'll just come crashing down to the ground. It'll be a seamless explosion. They will fall almost like a pancake, one floor into the other. Waterfall like an inward collapse will take place and they will come crashing down. But as you can see from these exclusive drone video footage clips that we've got for you here on India Today, it's not an empty area. There are buildings in and around the Supertech Twin Towers that stand threatened by the implosion and the demolition. And that poses a risk. Could there be an impact